ये हम लोग का हाल बन गया था कि बिहार मतलब गुंडा मवालियों का राज्य। 2005 तक तो ये स्थिति बन चुकी थी। क्यों ऐसा होता था? जो क्राइम करते थे डरते नहीं थे। क्यों नहीं डरते थे? कि पहली बात तो थाना से उनका सेटिंग रहता था, कोई पकड़ेगा ही नहीं, तो खुद नेता हैं अपने पार्टी के। संजोग बस कोई बड़ी क्राइम हो गई, पकड़ के भी चले गए तो पटना से फोन चला जाएगा उसके यहाँ, छोड़ो जी उसको। उससे भी कहीं अगर आगे बढ़ा, कहीं अदालत चला भी गया तो बेल मिलने के बाद उसको फिर से वही काम करना है, क्योंकि ट्रायल नाम की कोई चीज बिहार में नहीं थी। यहाँ के वकीलों को ट्रायल शब्द भी पता नहीं था जी। 2005 में सबसे पहले यह किया गया कि कानून का राज स्थापित हुआ। अगर आप अपराध करो, अपराध तो करेंगे लोग, देखिए आदमी देवता तो नहीं बन जाएगा, देवता लोग भी अपराध करते हैं तो इंसान तो करेगा ही करेगा। तो अपराध करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, कहीं से फोन नहीं जाएगा। अगर आप अदालत से बेल भी लेंगे तो ट्रायल के लिए भी तैयार रहिए, और ट्रायल के बाद आप जेल भी जाएंगे। इसका उदाहरण एक पूर्व मुख्यमंत्री और पता नहीं कितने नेता जो अभी भी रगड़ रहे हैं जेलों के अंदर में, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सारा ध्यान उसी पर केंद्रित हुआ। इसके बाद आधारभूत संरचना। किस गांव में बिजली थी जी? खंबा था कहीं पे क्या? आज कौन घर है जहां बिजली नहीं है? अब तो 125 यूनिट फ्री भी मिलने लगा। इस पर काम करना पड़ा। सड़कें नहीं थी। हम लोग यहाँ से पटना से निकलते थे, आज जो हम 1.25 घंटे में अपने गांव पहुंच जाते हैं, पूरा दिन लगता था। और 10 दिन ही नहीं लगता था, वहां जाने के बाद 2 दिन रेस्ट करना पड़ता था, कमर टूट जाती थी। तो ये इन सब चीजों पे काम करना पड़ा। अस्पताल तो थे ही नहीं। अस्पताल बनाने गए तो पता चला कि भाई मेडिकल कॉलेज तो पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर और नर्स कहाँ से लाएंगे? तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। भाई साहब थोड़ा मोड़ा काम नहीं था। अब ऐसा हुआ ना कि आज शादी हुई, कल बच्चा चाहिए, अरे भाई 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो उसके पहले अगर पैदा होगा तो या तो कमजोर होगा या मृत होगा। तो ये जो पूरा विकास की जो यहाँ पर गंगा बही है जी, आप समझिए कि 20 साल में हम एक ऐसे जगह पर आ गए हैं कि यहाँ पर बिहार इज रेडी फॉर टेक ऑफ। पिछले कार्यकाल में इतना बढ़िया इंडस्ट्री पर काम हुआ है। 13 तो इथेनॉल के प्लांट खुले हैं। अब जाके देख लीजिए, मोतीपुर इंडस्ट्रियल पार्क देख लीजिए, बेगूसराय इंडस्ट्रियल पार्क देख लीजिए, आरा देख लीजिए। हमारे बीच में एक बड़े इंडस्ट्री बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी बात करा था, तो ये भी 500 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है। हम भी कहीं कुछ कर रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, लोग कर रहे हैं। ये माहौल पहले नहीं था, पिछले 5 साल में बना। 5 साल में ही क्यों बना? उसके पहले क्यों नहीं बना? उसके पहले संभव नहीं था भाई। सड़कें कहाँ थी? बिजली कहाँ उपलब्ध था हमारे पास में? हम कहाँ से टेक्नीशियंस लेके आते? कैसे बताते लोगों को, भरोसा दिलाते कि दूसरे राज्यों को छोड़कर यहाँ पे आके काम करो? भाई ये वर्क इन प्रोग्रेस है, टेक्स टाइम। इतनी आसानी से नहीं बन जाएगा। मकान बनाने चलते हैं, पहले उसका सॉइल टेस्ट करते हैं, फिर उसका ड्राइंग बनवाते हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाते हैं, काम शुरू करते हैं। जमीन के बहुत नीचे से शुरू करना पड़ता है अगर ऊंची इमारत बनानी होती है तो। हम तो बिल्डर, हमें पता है कि अगर भैया 100 मीटर ऊंचा बनाना है तो 30 मीटर नीचे से चालू करो। तो पहले तो 2 साल दिखेगा ही नहीं कुछ काम हुआ है। आज ऊपर आके निकलना चालू करेगा तब समझ में आने लगेगा। और फिनिशिंग में तो और भी टाइम लगता है। तो अभी देखिए फिनिशिंग का समय चल रहा है। मैं इतना बता दूं, बिहार बहुत सुरक्षित हाथों में है, और यहाँ अभी कप्तान बदलने से गाड़ी डगमगा जाएगी। इसीलिए बिहार की जनता ने तय किया है। वैसे तो मैं 243 के 243 सीटों पर आश्वस्त हूँ कि शायद ही कोई सीट है जो एनडीए हारने के लायक हो, लेकिन चलिए कोई कहीं कहीं का समीकरण बिगड़ भी जाता है, कुछ टिकटों बांटने में, तो भी 225 से कम सीट जीतते हो तो मैं नहीं देख रहा हूँ। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इंडिया न्यूज के मंच पर आए। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया NewsX का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी।
Live from Moscow. Intervision International Music Contest. Top artists and chart-topping hits from different continents, all on one stage. The world-famous music event returns to Russia. Intervision. Music in the heart of your country. I grew up in a household of strong women, so I just do what they tell me. It's very simple. मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा मुझे अगर कोई मौका मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। हमारे देश में दुर्भाग्य है कि महिलाओं का साथ महिलाएं ही नहीं देती हैं। मैंने 5000 वॉलेट से स्टार्ट की थी, आज 5 लाख 6 लाख मेरे हर वक्त वॉलेट में रहते हैं। When a woman is surrounded or is surrounded by a family that motivates you to be your best and to be financially independent, it's just you are beautiful and stunning, and you like it's a pleasure to just see you being on Netflix in 192 countries worldwide. It is, I mean, that kind of exposure is staggering. Saying that if a city is safe for a girl, making our city safe for everybody, that we're all a part of this. Media and cinema contributes to our concept of popular history. Being validated, of course, makes you feel great for that moment. 90% of the girls go for the top 10% of men. It's evolution. Everything men do is to impress women. I feel the woman is Shakti. That's empowerment. From last 10-15 years, we are actually re-educating ourselves. Even the defense sector of our country understands that power is women. Find our own voices, to find our own stories and to tell it ourselves. Women voted in higher number than men, and I think they make better decisions than most men. Women voters think differently, they vote differently, they make their own choices differently. The NewsX Shakti Award for Excellence in Empowering Women, Neha Dhupia. Radhika Bharatramji. Shalini Pasi. Professor Himani Sood. Ritu Berry. Shireen Man. Ms. Ishi Khosla. Congratulations, Deepika ji. Dr. Alkanchri Dahar. Urfi Javed. Dr. Tanya Bakshi Rohadki. Sunny Leone. Kamakshi Khanna. Ms. Pooja Ellingbam. Malvika Mohanan. Nikita Luther. Rima Das. Purnima Devi Burman. I grew up in a household of strong women, so I just do what they tell me. It's very simple. मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा मुझे अगर कोई मौका मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। हमारे देश में दुर्भाग्य है कि
महिलाओं का साथ महिलाएं ही नहीं देती हैं। मैंने 5,000 वॉलेट से स्टार्ट की थी, आज 5 लाख 6 लाख मेरे हर वक्त वॉलेट में रहते हैं। When a woman is surrounded by a family that motivates you to be your best and to be financially independent, It's just you are beautiful and stunning, and you like it's a pleasure to just see you. Being on Netflix in 192 countries worldwide, it is, I mean, that kind of exposure is staggering. Saying that if a city is safe for a girl, making our city safe for everybody, that we're all a part of this. Media and cinema contributes to our concept of popular history. Being validated, of course, makes you feel great for that moment. 90% of the girls go for the top 10% of men. It's evolution. Everything men do is to impress women. I feel the woman is Shakti. That's empowerment. From last 10-15 years, we are actually re-educating ourselves. Even the defense sector of our country understands that power is women. Find our own voices, to find our own stories and to tell it ourselves. Women voted in higher number than men, and I think they make better decisions than most men. Women voters think differently, they vote differently, they make their own choices differently. The NewsX Shakti Award for Excellence in Empowering Women, Neha Dhupia. To Radhika Bharatramji. Shalini Pasi. Professor Himani Sood. To Ritu Berry. Shireen Man. Miss Ishi Khosla, congratulations Deepika ji. Dr. Alkanchri Dahar. Urfi Javed. Dr. Tanya Bakshi Rohadki. Sunny Leone. Kamakshi Khanna. Ms. Pooja Ellingbam. Malvika Mohanan. Nikita Luther. Srima Das. Purnima Devi Burman. नानी, नानी, क्या हुआ बेटा? नानी भूख लगी है, मगर ऐसा कुछ है ही नहीं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। बस 1 मिनट। टेस्टो, the only one with non-frozen, no preservatives, premium soya chap. Hello and welcome. You're watching NewsX with me, Devika Devan. We have some breaking news coming in. There's a fresh update in the Mumbai SpiceJet scare. We've accessed first visuals of the incident. The outer wheel of the aircraft went missing, and then the same was informed by the ATC. SpiceJet official statement says on September 12, an outer wheel of the SpiceJet Q400 aircraft operating from Kandla to Mumbai was found at the runway after taking off. The aircraft continued its journey to Mumbai and landed safely. Following a smooth landing, the aircraft taxied to the terminal under its own power and all passengers disembarked normally. Along with this, an emergency has been declared at the airport and all flights have been suspended till 5 p.m. My colleague Shahid Ansari with us on the broadcast. Shahid, take our viewers through the details. जी देखिए, ये वीडियो जो है इंडिया न्यूज के हाथ लगी है। इस वीडियो में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से स्पाइस जेट का ये विमान जो है चल रहा है और पीछे का जो पहिया है वो भी जो है वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज की ये घटना है और कांडला से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले जो स्पाइस जेट Q400 विमान का जो पिछला पहिया जो है आप देखिए वीडियो में साफ स्पष्ट हम देख सकते हैं, वो जो है उड़ान भरने के बाद जो है रनवे पर पाया गया। तो यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि बड़ा हादसा होते होते बचा है। विमान ने मुंबई की अपनी जो यात्रा है वो जारी रखी और सुरक्षित रूप से जो है उसे उतर गया है, जबकि लैंडिंग भी बेहतर हुई और विमान अपनी जो उसके साथ साथ जो है टर्मिनल पे जो है सुरक्षित जो है पहुंचा और सभी यात्री जो है सामान्य रूप से उतर गए हैं। किसी को कोई नुकसान या कोई जानी नुकसान या कोई हादसा पेश नहीं आया। अब चूंकि ये हादसा इतना सेंसिटिव था, इसको लेकर जो है रनवे बंद कर दिया गया था और बताया जा रहा है कि बस कुछ ही देर में जो है रनवे सारी फ्लाइट्स के लिए खोल दिया जाएगा। जी। All right, thank you so much for that update. In big news, left-wing extremism, or often referred to as Maoism, is now one of India's most, which was one of India's most serious internal security challenges.
is facing its most decisive challenge yet. Rooted in socioeconomic inequalities and fueled by Maoist ideology, LWA has historically affected some of the most remote, underdeveloped and tribal-dominated regions of the country. But in the latest development in India's fight against Maoism, the security forces have eliminated 10 Naxals were killed, including senior CPI Maoist Central Committee member Modern Krishna, known as by several names such as Venkateshwarlu, Ballanna, Ramachandar, Babbanna, Bhaskar and Rajendra. Originally from Madikonda in Telangana's Warangal district, Balakrishnan had deep roots in Hyderabad, where he studied SSC. And later on, he pursued his intermediate studies at Malakpet Junior College between 1981 and 1983. Influenced by the ideology of leaders of the Radical Students Union, or the RSU, the person that we're speaking about right now joined the Maoist movement as a full-time cadre in 1983, moving into the Bhadrachalam forests. According to the CRPF, the operation was carried out by troops of the C/207 Cobra unit along with the Gariaband police in the Bhaludigi forest area. Security agencies consider this operation to be one of the biggest blows to Maoist leadership in the region in recent months. By neutralizing Balakrishna, who had nearly 4 decades of experience in insurgency, the forests have disrupted Maoist operational command in the Orissa-Chhattisgarh border zone. The operation in Gariaband continues, and officials said further details on recoveries and identification of other slain cadres will follow. This is, of course, after several such top leaders of the CPIM as well as the lower unit cadres of the Maoist movement have been eliminated. With me, Dr. B.K. Mishra. Also with us, Ms. D.M. Avasti, former DGP of Chhattisgarh. And like I said, we also have with us Mr. Dr. P.K. Mishra, who's a retired additional DG of PSF. Let me begin with Dr. Mishra. Dr. Mishra, every month, sir, we are now coming up with more and more figures and eliminations as far as the Maoist leadership is concerned. What is it that you can share with our viewers about this particular man, Balakrishna, who has now been eliminated? Yes, Deepika, I can well tell you that in fact it's a big blow to CPIM that senior Mao leader Madam Balakrishna, alias Manoj Bhaskar, alias Kalna Ramchandra, and alias Rajendra, he was eliminated in Orissa-Chhattisgarh border in Gariaband forest. That also by CRPF, Cobra and Gariaband police, Chhattisgarh police. Kudos to our security forces. In fact, I can well tell you what Mr. Amit Shah has stated, that by 31st March 2026, the end of Naxalism and Maoist, that will come. And I'm very sure his statement will hold good and the Maoists will finish by that time. The way the operation is taking place, particularly the coordination between both the states, various states, particularly Odisha, Chhattisgarh, Telangana, West Bengal, Bihar, Jharkhand, and the way this technical development of troops and logistics and counter operations, the way it is continuing, I am very sure the end of Maoist will come. And this particular man, Balakrishnan, he was the CMC member, and just see, from 1983 he joined. He belongs to Telangana, and he was the chief of Maoist in Odisha. And practically he was operating in Balkangiri and Odisha and Chhattisgarh border, and sometimes in Odisha, Andhra border also, Odisha, Telangana border also. But I will tell you, it is not only Balakrishna who was, in fact, it was a pinpoint information, specific information was given to security personnel that Balakrishnan is there along with the 10 more Naxalites in this Gariaband forest, and the coordinated operation it started. And I'll tell you who all commanders in the last few months, we have, the security forces have already killed Prabhat Ganju, then
Pappu Fulera, and then your Bhaskar, Sudhakar, Baswa Raju. So many leaders were killed, and about 40 to 50 Maoists, they have surrendered. And this shows the way the operation is taking place. I am telling you the best part of it, I will tell you, when Karaigula Hill operation took place. It was 31 Naxalites were eliminated at Karaigula. And in fact, there were three bunkers in which they were preparing. They were making arms also in that. And logistics, food for 2 years were also recovered. After that, this Baswa Raju incident happened, and about 26 more Naxalites, they were killed. So this shows the way the operation is taking place, the coordination between the states and the center, and intelligence collection from the field, and development and logistical development of the troops, and the way communication is being taken from the drones and satellites to those who are there in the field, and the evacuation casualty. If we are having the casualty, the way the evacuation is now taking place, we are taking the help of helicopters. You see in Karaigula Hills, it continued for about 21 days operation. Few of them, those who got, in fact, they were found were in serious condition. They were evacuated by helicopter. So our operation, our intelligence network, and the development which is taking place in our tribal area, that is giving the credibility to the security personnel. And particularly, I will tell you the Odisha Chhattisgarh border. Now this Balakrishnan, he has been killed, and the information intelligence, it came from this border area only. I'm very sure it has come from this border area, from our sources. Earlier, the sources were there who were working for militants, for Maoists, and they were recruiting. Now the worst part of it, they don't have any informers, they don't have any area for training, they don't have any bunker to take shelter. They are shifting their places from one place to other place. Another thing is Saranda and Darba Ghati. You find all these forest areas, Dandakaranya, those were there. We are penetrating, and after operation we are retreating. Now we are already inside. We are having company operated bases, platoon operated bases, and we are having battalions also, having beautiful roads. Their communication has been made, and the logistical problem also has been solved in those areas. So those areas which were under the occupation of Maoists, now security forces have taken it over. I am very sure the way Cobras are operating, the way Chhattisgarh police is operating, and the surrender policy of Chhattisgarh government, definitely they will come to the mainstream. Those who will not come to the mainstream, the end will come for them, and that is the only way. As Balakrishna has been killed, all others will be killed if they don't come and don't surrender. Okay, Mr. DM Awasthi, your thoughts on the same as well, because we've set a very ambitious timeline the Home Minister has for the country, where he says that by March 2026, it will be a Naxal Mukt Bharat, Naxal free India. Your thoughts on the same, that is this a deadline that we can actually achieve given the current pace of the operations? See, Devika, what is happening in Chhattisgarh and around areas, what we are seeing that forces have gone deep into the jungles and deep into the bastions of Maoists. There, like leaders like Balakrishna or Baswa Raju or Sudhakar, they were the top leaders, CC members of the Politburo members. So they were hiding in those very safe areas of Maoist, so-called. And the forces are now operating in those areas, getting good intelligence, and the coordination of paramilitary forces vis-a-vis the state police and the various state police like Orissa, Telangana, Andhra Pradesh, and paramilitary as well. So this is giving the results. So what we feel, as the Honorable Home Minister says, this, while it is not simply saying, it is putting it on the on record, he is saying, but monitoring also,
that things go straight in those areas. And I have seen, like I was, last 10 years if we see, we have been fighting with Naxal with a fierce battle in Dandakaranya and all those areas. And this Gariaband area where this Balkrishna was now eliminated, this Orissa State Committee and this area of Gariaband as well as the Nuapada and all those bordering districts of Orissa, it was a link of Maoists from Dandakaranya to Orissa and Bihar and other areas. So this man Balakrishna was very, very important man in their hierarchy, while senior leaders were moving from this side to that side. That I think probably with this operation has been cut off, and now the thing is March 2026 is coming, and if this continues, either the top leaders or the cadre will come back to the mainstream, they will surrender, or otherwise they will be this elimination or encounters which happened in few months has been a tremendous success because of the proper intelligence, very, very concentrated efforts of security forces, the bravery and gallantry of the forces. This is giving us results. So I think I am personally feel, and I said in my previous interview also on NewsX, that the time is limited for the Maoists. They have to surrender, and otherwise they will be eliminated like this. And this deadline of March 2026 will see Naxal-free India almost, I think it is coming true and it's coming closer to that end of the Maoist, which has been spreading in this country since last 40 years. Yes, but at the same time, Mr. D. M. Awasthi, I also want to understand from you, how does the government then ensure that there aren't new places or rather new faces that want to take the place of this current slain leadership? Yes, you are very rightly pointed out that once one leader is eliminated, they again come back and take over, somebody else takes over. Like few days back only we have learned that Devji has been made the secretary of CPM. So this is going on, but the government, what government is taking, you have to understand why the Naxal came into all these areas of our country, because of the poor governance, or say a trust deficit. There were exploitation, there were no reach of governance. So now the government is putting all its level, all the collectors, all the machinery, central government, government of India is giving a tremendous funds to develop those areas. Like roads are coming up, schools are coming up, hospitals are coming up. They are getting light and communication, like mobile things also. So if the development will come, they will not be able to recruit common people, because that was the dream, what they had shown to them, ki, if you come to Maoism and will get back to you with a decent life and development. They have not been able to do it. You can't do it. Against the government of India or government, state governments, you can't fight. So now the government has filled that vacuum and things are going in a proper direction. This development thing is also coming, as well as the security forces are moving. When the security forces are moving, where the camps are opening, we are making roads also, we are making schools also, the people are coming. The trust. There was a time when they were accusing the security forces for harassment. Now there is a time, the time has come when the people are coming to security forces and giving the information. This is a sea change. Everybody wants happiness and peace. And I personally feel that Maoists also, when huge amount of their cadre, huge number of people also think that they should come back to the mainstream. We have seen a lot of surrenderies, and I personally met many surrender top leaders. They also were fed up of this jungle revolution and fighting with all the time. I think that is also working and development is taking place. Government is trying to fill that vacuum which was there previously. I think so. All right. Dr. P.K. Mishra, bringing you back, your thoughts on the same as well, sir. As far as
preventing new leadership and new additions to the Maoist movement is concerned, what do you propose that the government must do along with its deadline for the forces and the police to get rid of all the current leadership and cadre by either operations such as the one that we've seen today, or even through the surrender policy? But they've set a very clear deadline of March 2026 for the forces and the police force. But how does one ensure that more and more people are not added to this movement? Yes, I can tell you, Deepika, the way the coordinated operation is going on, and my previous speaker was telling about the development which has taken place in tribal areas and particularly Sardar, the Karen area. And the way security forces, they have gone inside and they have made their bases in Dandakar area. We are getting the help of tribals. I'll tell you, the way Karaigula Hill operation, KG Hill operation was made, that was the area 20 kilometers by 30 kilometers. Even it was more, 20 kilometers by 40 kilometers area. And look at the massive way the operation took place. That shows the way the training has been done. The training to the troops, to the Cobra and to the DRG and Chhattisgarh police and Odisha police, they are all trained now. And the logistical development of police forces, that has also helped the police forces. Now we are not there, the water supply is not there, the evacuation casualty is very difficult. All these things have already gone. So, and best part of it, specific intelligence collection from the field, that we are getting it from the locals, so as also various surrenderies, those who have surrendered in Chhattisgarh, they have also given various inputs where their leaders are there and who all are taking over the leadership now. And the best part of it, I'll tell you, now, neither in Telangana, nor in Andhra, nor in Odisha or Chhattisgarh, they can have any training ground anywhere. And recruitment, if takes place from any village, the information will definitely come to security forces, because every village has, in tribal areas and those areas, we are having our informers in every village now. It is very difficult for any young boy and girl to join the Maoists. And the best part of it, the surrender policy and the employment to these tribals, that has also gone up. And we have already recruited a lot of tribals, young boys and girls in our paramilitary forces. And this is still continuing. So I am very sure development which is taking place in tribal area, logistical development, technical development, communication development, coordinated effort of all states in between, relation between the center and the state, and the multiple way the operation is taking place. Definitely that will give a result. And I'm very sure, I will tell you only one thing they can do it. They cannot attack any police forces or security forces now, because they don't have any strength. Either they will surrender or they will put improvised explosive devices. That's the only thing they can do. And we have to be very careful. I will tell you, in Karaigula Hills, when our troops were going, more than 3,000 and 4,000 troops, they were there from Odisha side, they were going from Telangana side, they were coming, and from Chhattisgarh side, they were going. A lot of improvised explosive devices were there on those tracks, and they were all removed by our security forces. If they have done it in such a big area, they are capable to do it also in these areas now, whether it is Dandakar or anywhere. And I'm very sure, as we are already sitting inside their area, their end is coming, and Mr. Amit Shah's statement will definitely hold good. And I'm very sure, forget about 31st March, the way operation is taking place, the way their leaders are being killed, the way that you see, the way they are surrendering now, it will be over by 31st of December. I think the new year, when it comes, 2026, nobody knows. It will be a Maoism Mukta Bharat. Maybe there,
and 1st January 2026. I am very sure, but it all depends on the morale of our troops and who all are injured. I am telling you, any boy who is injured in operation, immediate evacuation of him by helicopter to one of the best hospital. It is being done, and the senior most officer of that force, he visits to that hospital to look after him also, to meet him. This shows the morale of the troops. They have gone up and they are ready to face them, and they go all out now. And I'm very sure the battalions which are employed, the way the collectors and SPs are operating in tribal areas, Yes. and the way state is giving the funds, the way central government is giving the funds, the way health hazard is being looked after, the way education facility is giving to them, the way the communication road facility has been given to them, we will definitely end with the result that Bharat will be mukt of Naxalites and Maoists by definitely March 26. I'm very sure. Okay. I'm very sure. I'm very sure. Okay, all right. I'm going to request our guests to stay on with us because we have some breaking news coming in. The Chhattisgarh ADGP Vivekanand Sinha has spoken on the Gandiabad encounter. He says that in Chhattisgarh, a comprehensive action plan against Maoists has led to significant success for security forces with notable achievements in 2024-25. The General Secretary of CPI Maoists and 3 Central Committee members were neutralized. A total of 465 cadets have been neutralized, which is a great achievement for the security forces. The CC member Manoj alias Balakrishna, 2 state committee members and 3 ACM as well as other cadres were neutralized, totaling 10, which had 4 women and 6 men. A lot of weapons were recovered from these Maoists as well. छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ एक व्यापक कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है और जिसके तहत बस 2024-25 में छत्तीसगढ़ में माओवादियों के विरुद्ध अभियानों में सुरक्षा बलों को अभूतपूर्व सफलताएं हासिल हुई हैं और जिसमें अब तक महासचिव जो सीपीआई माओवादी के हैं, जो एक प्रतिबंधित संगठन है, उसके महासचिव के साथ साथ 3 सीसीएम मारे गए। इसके अलावा 465 कैडर टोटल कुल अभी तक मारे गए हैं। ये सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो एक संकल्प है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल समस्या से मुक्त करने का, और इसके लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की पुलिस। Mr. Avasthi, your thoughts on the same, sir. We've just learned that, of course, we've just been given numbers, in fact, that 465 cadets have been neutralized, and in today's operation itself, the forces have achieved significant neutralizations as far as Maoist leadership is concerned. But another big task will be to cut off the weapons supply to the remaining Maoists. How do you think the government is tackling that front? This is always taken care of. Basic supply, actually the weapons and ammunition they were getting, looting the camps, police stations when they were attacking. They were attacking our convoys, they were attacking our police stations. Now the time has come, last 1 year, if you see, or 1.5 years, they are not able to have, or we can say after 2017, they were not able to snatch any weapon from anywhere in Chhattisgarh or in Orissa or in these areas. So supply is already been cut off. They are not getting ammunition. There was a time when I was the DGP, they were not getting in SARS ammunition. So that kind of thing. And the smugglers and people who are the middlemen, they have already been arrested by the security forces. So this point, what you have pointed out, is already taken care of. Whoever is trying to help the Maoists in these areas, in fighting areas, is arrested in Unlawful Activities Act. So that is a deterrent. And the problem is that there was a time they were having high morale. They were killing security forces. That was the time. But in last, say, 6-7 years or last 2 years, this is the major success, as Vivekanand was saying. He was my IG in Bastar when I was the Naxal DG and the DGP. We have come back from the scratch. There was a time when we were not able to go inside.
Now this is the time when there is no place in Dandakaran where we cannot go or we cannot operate. You see, Baswa Raju and this Balakrishna, these people, or Bhaskar and Sudhakar, all those people, they were living in those areas which were 100% foolproof and security safe areas as far as the Maoist was concerned. We had gone there, forces have gone there and eliminated them. So there is no place left in, I don't think there is a place left for them. There is, and the most important thing is ideologically, they were fighting for some cause, as they say, Maoist ideology. So political will which was required has been given by the Honorable Home Minister and the Prime Minister and the state governments. They are all having the political will to eliminate Maoism from the country, from the state, and develop these backward areas of which were Maoist affected. I think the work is going on, and we'll see a developed portion of this country also, which will help developing in the end our country as well. Yes, absolutely. On that note, I thank both of our guests for joining us on the broadcast. And we have some breaking news coming in. Foreign Secretary Vikram Misri has met today with the EU Political and Security Committee delegation led by Chair Ms. Delphine Pronk. This was the delegation's first ever visit to Asia. The Ministry of Foreign Affairs has now stated that the discussions focused on deepening security and defence cooperation under the India-EU strategic partnership and exchange of views on latest regional and international developments. My colleague Ajay Jandal with us on the broadcast. Ajay, take our viewers through the details, please. So, fresh development when Foreign Secretary Vikram Misri met, EU Political and Security Committee delegation today, and it is basically to discuss and focus on deepening security and the defence cooperation between India and EU strategic affairs. And this is basically after the recent development which took place. It is going to be very important as the world is facing the ongoing defense issues, and EU and European Union and India is basically working on the close coordination for security and the defense cooperation in the coming time. So definitely it is going to be a very important meeting, and this is the first meeting which is happening during which paid its first ever visit to Asia. All right, Ajay, thank you so much for joining us on the broadcast with those details. We leave it there. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया NewsX का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश।
grew up in a household of strong women, so I just do what they tell me. It's very simple. कि मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा मुझे अगर कोई मौका मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगी क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। हमारे देश में दुर्भाग्य है कि महिलाओं का साथ महिलाएं ही नहीं देती हैं। मैंने 5,000 वॉलेट से स्टार्ट की थी, आज 5 लाख 6 लाख मेरे हर वक्त वॉलेट में रहते हैं। When a woman is surrounded by a family that motivates you to be your best and to be financially independent. It's just you are beautiful and stunning, and you like it's a pleasure to just see you. Being on Netflix in 192 countries worldwide, it is, I mean, that kind of exposure is staggering. Saying that if a city is safe for a girl, making our city safe for everybody, that we're all a part of this. Media and cinema contributes to our concept of popular history. Being validated, of course, makes you feel great for that moment. 90% of the girls go for the top 10% of men. It's evolution. Everything men do is to impress women. I feel the woman is Shakti. That's empowerment. From last 10-15 years, we are actually re-educating ourselves. Even the defense sector of our country understands that power is women. Find our own voices, to find our own stories and to tell it ourselves. Women voted in higher number than men. Presently, we are at one of the relief camps in the Bishnupur district. We interacted with a lot of people here at this relief camp, which is situated in the Manglongwi College. This relief camp hosts more than 400 people. Most of them are displaced from the hill districts of Churchandpur, and some of them are from the Bishnupur district as well in the border areas. The people here have been living in quite harsh conditions because in the last 2 years they have been displaced. And let me take you a glimpse of the area here. This is the main center where a lot of people stay here in this auditorium, college auditorium. We went inside, we have gone inside and we have shown you how the people have been living. These are some of the small roads where children have been running up and down. They are playing here, and this is the evening. It's a boring evening for them because they sit here, they talk among themselves. But the bigger question here is that there is now a hope in them. They see the arrival of the Prime Minister to be a great opportunity for them to point out their demands to the Prime Minister. One of the biggest demands is rehabilitation. Why rehabilitation? Because most of these people have been displaced from their homes, and they have been living here in this relief camp since the last 2 years, more than 2 years. Where you can see the women here are, sitting ideal. They are just sitting there. They have their hopes and they have want their children to get proper education, and that is the reason that a lot of these people see that the arrival of the Prime Minister is a great opportunity for them to speak to him, to highlight their issues, so that they believe that those issues can be taken up. One of the positives in Manipur in the last 6 months has been the improved security situation, wherein their gunfights have stopped and the border areas have become stable. But the people hope that the ultimate goal for them is that they are going back to their homes. And this is not just limited to the Meitei community, this is both the communities. They want to go back to their homes. Like this child, he also wants to go back. Although he doesn't know it that he has been displaced, but his conditions are difficult as he stays inside this small relief camp where the healthcare issue is also very crucial. So all of these people want to go back and they are appealing for peace, and they are also very optimistic that the arrival of the Prime Minister will definitely solve their issues. With video journalist Nishan, this is Nibir reporting for NewsX. College is used for education, also in educating the upcoming generation. But here in Manipur, some of the colleges have been converted into relief camps where hundreds of people have been staying ever since the violent clashes broke out back in May 2023. This tragedy in Manipur has led to the displacement of people. Both the Meitei and the Kuki community have been displaced from their houses and are now residing in several relief camps across the state. Currently, we are in the Bishnupur district. This is a relief camp located inside a college, and here many people are residing from different parts of Manipur who had to flee from their houses and stay in these camps. First of all, we will speak to them to know
what has been the changes in their life and how difficult it has been for them in the last 2 years. सर नमस्कार हमसे जुड़ने के लिए। आपका नाम? नपा। आप ओरिजिनली कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? हम चुचानपुर से। सुजानपुर हाँ, डिस्ट्रिक्ट से। चुचानपुर खुगा तंपाक मिट्टी लिखा है। ये मेन टाउन के अंदर ही आता है? हाँ, मेन टाउन के अंदर पुलिस स्टेशन से 0 किलोमीटर है। ठीक है। तो मई 3, 2023 से जब वायलेंस शुरू हुआ, जो एकदम बहुत ज़्यादा वायलेंस था, पूरा मणिपुर में हंगामा हुआ, आप लोग उस दिन कहाँ पे थे? हम घर पे थे। अपने सुजानपुर के घर पे? हाँ, अपने ही घर पे। तो किस दिन आप लोग वहाँ से भाग के इधर आए? 9 तारीख से। मई 9। हाँ, मई 9 से हम लोग इधर से तो मई 9 से आज की तारीख तक, सितंबर 10, 2025 तक आप लोग अपने घर के बाहर हैं? हाँ। और कहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ इधर ही रह रहे हैं? हाँ, इधर ही रह रहे। तो आपका कैसा लाइफ है अभी करेंटली, ये बताइए, कैसा गुजारा हो रहा है, दिन भर क्या चल रहा है? लाइफ तो पूरा ख़राब है, क्योंकि बोल नहीं सकता, क्योंकि इतना ख़राब है कि मुंह से नहीं निकल रहा है, क्योंकि हम लोग का फ्यूचर भी नहीं है, बच्चा को भी नहीं है। पूरा सब जो 20-30 साल का कमाया हुआ भी सब एक दिन में चला गया। तो अभी पूरा लाइफ पूरा ख़राब है। कैसे गुजारते हैं दिन यहाँ पे? रात को जब हो जाता है क्या करते हैं आप लोग? क्या करूँ, रात में खाना खाता है तो करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कमाने के लिए पैसा कमाने के लिए भी पैसा नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है। मणिपुर में देखा जाए तो फर्स्ट 2 इयर्स में बहुत वायलेंस हुआ था और बहुत गोली भी चला, लेकिन फ़िलहाल लास्ट 6-7 मंथ से सिचुएशन में सुधार हुआ है, इन द सेंस कि गोली बारूद ये सब नहीं चल रहा है। पीस हुआ है थोड़ा, लोग अपने अपने चीज़ें में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों का डिस्प्लेस हुआ है, जैसे कि आईडीपी जो कहा जाता है, उनका स्थिति कैसा है? क्योंकि वो तो जा नहीं पा रहे हैं, वो तो अभी भी अपने रिलीफ कैंप में ही है। तो एज आईडीपी कैसा सिचुएशन है? क्या सुधार हुआ है कुछ या फिर वैसा ही है? मेरे हिसाब से गोली वोली तो नहीं चला है, झगड़ा ख़त्म हो गया, गोली ख़त्म हो गया। फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि कब शांति आएगा, कब हमारा घर में कब जा सकेगा, क्योंकि अपना अपना घर सब जाना चाहता है। ये स्टेट गवर्नमेंट भी, मणिपुर गवर्नमेंट भी अभी शांति नहीं लगा सकता है। तो हम लोग की ड्रीम कर रहा है कि हम लोग कब जा रहे हैं घर, अपना घर कब जा रहे हैं। तो अभी तो हम लोग कोई It's very difficult for you guys. हाँ, it's very difficult to go back and we can't do nothing here. Yes. And you must have known, must have seen the news that the Prime Minister is visiting. But before we talk about that, I will also show my camera person that how people are sitting here. You can see because of our team coming here, all of them have come out. But usually life in this kind of relief camps is very mundane. There is nothing much to do, like we talked about. All of them are having great hopes from the Prime Minister, because in the recent times the security situation has improved, and that's why they are expecting, since the security situation has improved, to go back to their houses. Yes, so pehle to let's talk about one positive thing, that do you agree that the security situation as compared to 2023 has improved? I don't think so. The security एक ही है, वो जो ज़्यादा लड़ाई चल रहा है उसी समय से अभी तो सिक्योरिटी एक ही है, क्योंकि सिक्योरिटी टाइट होने से हम लोग घर वापस जा सकता है। तो सिक्योरिटी टाइट नहीं। सो क्योंकि अगर लास्ट 6 महीने में जो सरकार कह रही है कि सिक्योरिटी इम्प्रूव हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि आप लोग घर जा सकते हैं। तो इसी सिचुएशन में अभी प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, व्हाट वुड बी योर अपील टू द प्राइम मिनिस्टर, इफ़ यू कैन शेयर इट अस विद आवर व्यूअर्स? कि हमारा प्रधानमंत्री जी, हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपना घर जाने के लिए इंतज़ाम करें। और क्या क्या आप लोगों का डिमांड होगा, क्योंकि आप लोग ने एक मेमोरेंडम भी तैयार किया है, यू हैव प्रिपेयर्ड अ मेमोरेंडम, सो व्हाट आर योर की डिमांड्स? कैन यू टॉक इन अ ब्रीफ मैनर? ओके, द फर्स्ट डिमांड इज कि हम लोग पहला है रीसेटलमेंट, तो उसके बाद
educational package, medical package, and livelihood program. And are you hopeful that the Prime Minister will solve your issues? I think so. So we are also speaking with different people here. Thank you for speaking with us, sir. You are also here in this relief camp, and what has been your life in the last 2 years? First, tell us that. पूरा ख़त्म हो गया था, क्या करेगा, करने के लिए कुछ कोई काम वाम भी नहीं है। पहले तो बहुत अच्छा में रहता है, हम घर पे जो उसके कहाँ पे रहते थे? मैं चुरचानपुर ट्यूबंग पे रहता हूँ, ट्यूबंग डीसी के सामने पे, डीसी ऑफिस के सामने पे। बहुत अच्छा काम किया था चुरचानपुर में, घर के रहने के टाइम पे तो अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, काम वाम अच्छा है, पर इसकी जंग करने से बहुत ख़राब हो गया था, ज़िंदगी पूरा बर्बाद कर दिया था ये लड़ाई पे, पूरा के पूरा मेंटल हरासमेंट कर दिया था। जल्द से जल्द ये जंग ख़त्म करने से तो अच्छा होगा हमारे लिए। आप लोग जाना चाहते हैं वापस? क्यों नहीं जाऊंगा, हमारा घर ही है, हमारा माँ बाप उधर में पैदा किया है, हम पैदा किया है उधर में, अपना ज़मीन ही है, क्यों नहीं जाऊंगा, हमारा घर ही है वो। उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द जाना पड़ता है। आपका क्या अपील रहेगा प्रधानमंत्री मोदी जी से? प्रधानमंत्री से हमारा दिल से कह रहा हूँ, जल्द से जल्द घर वापस जाए और ये जंग ख़त्म कर दीजिए। बहुत हो गया था, जो होना है हो गया था, लड़ाई वड़ाई हो गया था, मरना है मर गया था, अब शांति लीजिए। जल्द से जल्द उम्मीद करता हूँ शांति ले लीजिए मणिपुर में। मणिपुर का जो यूथ है वो क्या चाहता है? वो पीस चाहता है, शांति चाहता है? सब पीस चाहता है, सब कम्युनिटी पीस चाहता है, पर किसी अंदर का तो प्रोसेस तो हम मालूम नहीं है, पर किसी ने क्या बोल रहा हूँ साइड से थोड़ा कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है तो हम लोग तो पता नहीं है, पर सबके सब यूथ शांति चाहता है, क्योंकि मेंटल हरासमेंट हो गया था, एजुकेशन डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है और लाइवलीहुड प्रोग्राम डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है इधर में, ये मणिपुर के स्टेट के अंदर में, जो पहाड़ भी हो और वैली एरिया भी हो, सबके सब डिस्टर्ब हो गया था। लाइवलीहुड प्रोग्राम हो या हेल्थ प्रोग्राम हो, एजुकेशन हो, पूरा ख़त्म हो गया था। 100 साल पूरा वापस चल गया था, बैक हो गया था हमारा ज़िंदगी। So as you can see here, we just spoke to the people who are residing in the relief camps. All they want is that they want to go back to their houses in the form of resettlement. Secondly, they have a lot of their requests and demands, compensation and also other things. But the major issue here is what they are wanting is that they want to go back to their homes primarily, and they want peace, and they are also of the view that irrespective of any community, majorly people want to go back to their homes and they want peace because they want to go back to their normal lives, because this conflict has affected them a lot economically, financially, mentally, and the main issue here is that this is a very crucial time for Manipur, as Prime Minister is set to visit at a time when Manipur is going through a transition from violence to peace, and in this transition if these requests are being looked into, it can lead to better outcome. एक चीज़ आखिरी आपसे जानेंगे, मेंटली कितना जोर पड़ता है दिमाग में ऐसे जगह पे रहने के लिए? कभी कभी सुसाइड करने के लिए मन आता है, इससे ज़्यादा क्या होगा। मरने के लिए दिमाग सोच रहा था, हम खुद मरने के लिए सोच रहा है तो कितना प्रेशर होगा हमारे दिमाग में, या बीवी बच्चा माँ बाप एक कमरा पे रहता है, बहुत डिप्रेस हो रहा है, कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ काम करने के लिए पैसा नहीं है, कुछ मेरा बच्चा लोग मांग रहा था खाने पीने के लिए, कुछ नहीं है, हम पॉकेट में पूरा खाली हाथ है, इसलिए बहुत प्रेशर है, मरने के लिए कभी कभी मन आता है। There you have it, the gravity of the situation, which is a very difficult time for all the people. You can see here a lot of people are standing behind me. These are just one part of the people there. There are more than 400 people here living, more than 400 people living here, and we will look around the different places of the relief center, relief camp, and the major issue here is that the people feel that their demands be met and they can go back to their houses so that they can go outside of these relief camps. Presently, we are at the Akampat relief camp in Imphal. This is where lot of the displaced people, especially from More, which is a border town in Manipur, has come from. They had to leave their homes during the conflict time,
And before we begin, I would like to show you this very important poster which is pasted in one of the trees at the relief camp. It says, "We want peace," and that has been the agenda for Manipur. The innocent people who have been displaced among both the communities, they have called for peace. Lot of measures have been done which has led to a situation in Manipur where the security situation has improved, the overall situation has improved, but one bigger issue remains, that is the resettlement of those people who have been displaced. And those people who have been displaced are very hopeful that the Prime Minister who is visiting their state will take care of that very demand that they have been raising. This is a particular relief camp. Before we speak to some of the locals, I would like to show you how life in the relief camp is. This is a college which has been converted into a relief camp. The people stay here, more than 300 people are here, and the women are now cleaning the utensils. There is always a community kitchen wherein they cook their meals, and this is one of those relief camps which is situated in the heart of Imphal, in the main city. And we are going to speak to some of the people who are at the relief camp to find out how their lives have changed and what they are doing in the last 2-3 years, where after which they had to leave their homes. नमस्कार, आपका नाम बोलिए पहले। मेरा नाम एन समानंद सिंह है, मोरे का रहने वाला हूँ। मोरे का रहने वाला है आप कन्वेनर है एक ये रिलीफ कैंप कन्वेनर है। और आप इसके पहले आप क्या करते थे? पहले मैं फौज में था। फौज में थे? 2022 का 31 जन को रिटायर हुआ था। कौन से डिपार्टमेंट में थे आप? डिपार्टमेंट नहीं, रेजिमेंट इंडियन नेवी में था। इंडियन नेवी में थे। तो आप फौज के बंदे हैं, आपको पूरा पता है कैसे फौज चलता है, कैसे सिक्योरिटी ऑपरेशंस होता है। मणिपुर में लगातार पहले जो हमने देखा कि 2023 में जब वायलेंस हुआ था, बहुत कुछ हिंसात्मक घटनाएं हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे अभी जो हमारे सेना बल है उन्होंने आके बहुत सारे ऑपरेशंस किया है। अभी आज के तारीख में जो गोली चल रहा था बॉर्डर एरियाज़ में, वो कम हो गया है, बंद हो गया है, और बहुत कुछ चीज़ें सुधार हुआ है। क्या आप मानते हैं कि सिक्योरिटी वाइज चीज़ें सुधार हुआ है? थोड़ा पहले वैसा तो नहीं है, अभी थोड़ा नॉर्मल आ गया। फिर भी हम लोग अपने स्थान में जगह पे वो जा नहीं पाया। ये सिक्योरिटी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने घर नहीं जा पा रहे। तो उसी के वजह से मैं आ रहा था उसके ऊपर। तो अभी जो है प्रधानमंत्री का भी दौरा मणिपुर में आने को है, तो आप लोगों का जो भी करंट स्थिति है, तो उससे आप लोग क्या अपील करेंगे? कि सबसे पहले मैं ये कल भी ये मेमोरेंडम देने के लिए रेडी कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना करके रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द अपने स्थान में सुरक्षित के साथ वापस जाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी सर को रिक्वेस्ट करूँगा। ये पहले सबसे पहला हमारा डिमांड, हमारा ख्वाहिश है। उसके बाद सेकेंड है, जो 2 कम्युनिटीज़ तो उधर पीसफुल रहना चाहता, अपने जगह में पीसफुल रहना चाहता है, जो दोनों कम्युनिटी के बीच में पीसफुल डायलॉग होना चाहिए। जो कुकी का भी है, मैते के भी, दोनों कम्युनिटी से जो बैठ के जो प्रॉब्लम है सुधारने के लिए बात करेगा, तब पीसफुल आएगा। इसके लिए पहले ये मांगूंगा, दोनों कम्युनिटी को साथ में बैठा के बात कराने के लिए मैं ये मांगूंगा। और तीसरा है रिहेबिलिटेशन, जो तुरंत जाके हम लोग रह नहीं सकता। उधर हमारा घर वर सब जल गया, कुछ बचा नहीं है। उसको घर वर बनाने के लिए रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है उसके लिए मैं मांगूंगा। क्या आप मानते हैं कि अगर ये चीज़ें आप करेंगे, जो आपने डिमांड है, तो ये मणिपुर का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकता है? जो आप बोल रहे हैं कि पीसफुल सॉल्यूशन के लिए डायलॉग होना चाहिए और वगैरह वगैरह जो आपने कहा है, क्या इससे मणिपुर का प्रॉब्लम कम हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा? अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया NewsX का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे
किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। Hello and welcome. You're watching NewsX with me, Devika Devan. We have some breaking news coming in. US President Donald Trump has now said that the suspected assassin of Charlie Kirk is in custody. Trump said, and I quote, "I think with a high degree of certainty we have him in custody." Trump has also said that someone very close to the suspect has turned him in, adding that an announcement will be made soon by the security agencies. Ajay Jandal, my colleague with us on the broadcast. Ajay, take our viewers through the details. Big developments taking place. Ajay, can you hear me? All right, big news coming in. We're now learning from the President of the United States of America himself that the assassin of Charlie Kirk is likely in custody. My colleague Adarsh with us on the broadcast. Adarsh, take our viewers through the details. Right, Devika. Now, President Trump has claimed on the Fox and Friends show on Fox News that the suspect of the shooting of Charlie Kirk, obviously, has been put in custody. He said, and I quote, that with a high certainty, I can tell you that we have with a high degree of certainty, in fact, I can tell you that we have him in custody. This is the latest update that we have at the moment. We've also accessed the further updates on this. Trump has basically urged his supporters to respond peacefully, and he's told that Kirk has been an advocate of non-violence. Okay, all right. Ajay Jandal with us on the broadcast as well. Ajay, take our viewers through further details. We're now learning that Charlie Kirk's assassin is likely in custody, but Donald Trump is yet to give a full clarification of the same. All right, we leave it there and we move on. Violent protests in Nepal this week have left Indian pilgrims and tourists caught in the middle of the crossfire. At least 51 people were killed during violent anti-corruption protests in Nepal. An Indian tourist from Ghaziabad, 57-year-old Rajesh Devi Gola, lost her life when protesters set fire to the Hyatt Regency Hotel in Kathmandu, where she was staying with her husband. She and her husband were forced to jump from the 4th floor to escape the blaze. While her husband survived with minor injuries, she suffered fatal wounds and died in the hospital. Her son Vishal said that she might have survived if she hadn't been separated from her husband while trying to escape. This is not it for the Indians stuck in Nepal, though. On Thursday, a bus carrying a group of devotees, 49 to be precise, returning from Kathmandu's Pashupatinath temple, came under attack when miscreants pelted stones at the bus. The bus was registered in Uttar Pradesh and the driver hailed from Andhra Pradesh. The mob smashed windows and allegedly looted cash, mobile phones and luggage, leaving several travellers injured before the bus limped across the Sanoli border into Uttar Pradesh. The driver Raj said the attackers broke all glass panes and looted all the belongings. Bus staffer Shamu Nishad has claimed that 7 to 8 passengers were hurt, but Nepalese army personnel came to their aid. Later, the Indian government arranged for the stranded passengers to be airlifted from Kathmandu to Delhi. But this is just a few of the incidents
that have come to light as far as the violence in Nepal is concerned. But what does this truly mean for the future of Nepal? We take that conversation forward. I have with me Ambassador Mahesh Sachdev, former diplomat, Major General Sudhakarji with us as well, and we have with us Sangeeta Sharma, wife of Umesh Saraswat. Her husband has just returned from Nepal. We also have Mr. Manish Kuddu, who has returned from Nepal, joining us on the broadcast. I must begin with Ms. Sangeeta Sharma. Sangeeta ji, your wife has, your husband has returned from Nepal. Is he the one with you right now? जी हमें वहाँ से हम होटल में थे, हमें वहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। हमने एम्बेसी से हमारा कांटेक्ट बना रहा, उन लोगों ने जी संगीता जी माफ करिएगा, आपसे बस समझना चाहते हैं कि आपके साथ में जो बैठे हैं वो उमेश सरस्वत हैं? जी ओके, तो आप दोनों नेपाल में थे? जी जी हम दोनों थे और हमारे फ्रेंड थे, एक कपल और था हमारे साथ। जी, तो आप नेपाल बस टूरिज्म के लिए गए थे? क्या कुछ स्पेशल ओकेजन था? टूरिज्म के लिए गए थे हम। 5 तारीख को यहाँ से पहले पोखरा गए थे, पोखरा होते हुए हम 8 तारीख को काठमांडू आ गए थे, और जिस दिन हम आए थे उसी दिन वहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया था। जी, तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ उमेश जी, संगीता जी, कुछ इनिशियल बताइए, इनिशियल खबर क्या आई? आप होटल में होंगे, वहाँ पे किसी होटल में रह रहे थे काठमांडू में, तो इनिशियली जब पता चला कि सडनली वहाँ दंगे शुरू हो गए हैं और बसों को जलाया जा रहा है, पार्लियामेंट को जला दिया गया है, मिनिस्टर्स के घरों को जलाया जा रहा है, लोग सड़कों पे उतर आए, इनिशियली आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई थी? हमें जब इन्फॉर्मेशन मिली तो हम सब बहुत सहम गए, डरे हुए। हमने कांटेक्ट किया, वहाँ एम्बेसी में भी कांटेक्ट किया, तो उन सभी ने कहा कि अब बाहर मत निकलिए, और हम 3 दिन वहाँ रुके, लेकिन हम होटल से बाहर नहीं निकले, होटल में ही रहे। तो सभी ने जब आप होटल में थे तो क्या कोई लोग आए होटल के अंदर प्रोटेस्ट करने या तोड़-फोड़ करने? होटल के नीचे प्रोटेस्ट हो रहा था मैम, सामने आग लगाई जा रही थी बिल्डिंगों में, सामने ही वो हिल्टन होटल था हमारे सामने, उसमें आग लगा दी गई थी, और भी काफी जगह काफी हजारों की संख्या में रोड पे पब्लिक थी, वहाँ पे बाइकों पे लोग इधर से उधर घूम रहे थे। डर लग रहा था हम लोगों को कि हमारे होटल में भी ना आ जाएं लोग, बहुत डरे हुए सहमे हुए से थे। हम लोग ऊपर बालकनी में से देख रहे थे, चारों तरफ आग लगा रहे थे, इतना सभी लोग और भी टूरिस्ट वहाँ बहुत सारे थे, सभी लोग इतना डर गए थे बहुत। तो आई एम श्योर वहाँ पे सिर्फ इंडियन टूरिस्ट नहीं होंगे, और भी देश से लोग हो सकते हैं जो आपके साथ होटल में थे। तो जो 3-4 दिन आप अंदर बंद रहे, इंडियन गवर्नमेंट से आप कांटेक्ट में थे? जी हम कांटेक्ट में थे, हमें वहाँ एम्बेसी से पूरा उन्होंने हमें सपोर्ट करते रहे कि बताते रहे जैसे भी कुछ तो इंतजाम होगा, उड़ान शुरू होंगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और लखनऊ हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर से भी हमें फ़ोन आते रहे, वो भी हमारी सकुशलता पूछते रहे, सरकार हमें पूरा सपोर्ट कर रही थी। तो जब आप वहाँ थे 3-4 दिन, घर जो आपके घर वाले होंगे वापस भारत में, जो आपका जो टीवी पर देख रहे थे कि नेपाल में क्या हो रहा है, उनसे क्या बातचीत रहती थी आपकी? रोज आई एम श्योर सुबह शाम फोन कॉल्स आते होंगे, लोग पूछ रहे होंगे कि आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है? बहुत, सब जो सुनता था वही फोन कर रहा था, रिलेटिव्स, घर वाले सब बहुत डरे हुए थे, बार बार हमें कांटेक्ट कर रहे थे, हम भी वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे कि हम ठीक से हैं, सब वहां पर है। उस 9 तारीख को तो हम सभी बहुत डर गए थे जब बाहर चारों तरफ आग लगाई जा रही थी। पर उसके बाद थोड़ा 10 तारीख को हमारी फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई, लेकिन वहां थोड़ा शांति रही थी आसपास। तो आपका प्लान हमेशा से 10 तारीख को लौटने का था, या आपने जल्दी आपने कोई टिकट्स लिए? एयर इंडिया से हमारी 10 तारीख की वापसी की फ्लाइट थी जो कैंसिल हो गई। जी। फिर हम बीच में हमें खबर मिली कि एयरपोर्ट अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जा रहा है, तब हम बहुत घबरा गए। पर बाद में हमें 11 तारीख को इंडिगो की फ्लाइट से हमने करा के आ गए। बस तो सरकार से एक निवेदन है कि ऐसी हाल में वो फ्लाइट है इतनी महंगी कर देते हैं कि लोगों को बहुत परेशानी हुई, 3-3, 4-4 गुना रेट से उन्होंने लेकर आए हैं। आपका क्या रेट बढ़ गया था फ्लाइट का? बहुत
तो 6,000 रुपये में इधर से एयर इंडिया की फ्लाइट थी पहले से हमारी, वो फ्लाइट 25,000 रुपये में हुई इंडिगो की वापसी की। 25,000 फ्लाइट कर दी आपको वहां से वापस लाने के लिए, जबकि आपकी फ्लाइट ऑलरेडी कैंसिल हुई थी 10 तारीख की। वो एयर इंडिया से थी मैम, वो वापसी में फिर इंडिगो से कराई हमने एक दिन पहले। वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी सैड। पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब आप 3-4 दिन अंदर होटल में बंद हो गए तो जो होटल का स्टाफ था उन्होंने कुछ, वो आपकी कुछ मदद कर पा रहे थे? जो खाना पीना था वो नॉर्मल था? जी बहुत सपोर्ट किया किसी। तो संगीता जी, उमेश जी, अब आप थैंकफुली सही सलामत लौट गए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में दर्शकों को बताया कि कुछ लोग हैं जो वहीं जलकर होटल्स में बंद होकर, ट्रैप होकर उन्होंने अपनी जान गंवा दी है नेपाल के प्रोटेस्ट में। तो क्योंकि आप वापस आ गए हैं, आप क्या हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपकी सबसे बड़ी सीख इन 4-5 दिनों में क्या रही है, और आपका क्या मैसेज है टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम क्या मदद और वहाँ कर सकते हैं लोगों को जो शायद अभी भी फंसे होंगे? सरकार से को तो हम बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हर तरह से हमें हमारे से कांटेक्ट बनाए रखा, फोन भी किया हमें, उन्हें कोई वो नहीं होने परेशानी कि जब अभी हम घबराहट होती थी फोन करते थे, हम इमरजेंसी नंबर दिए हुए थे तो हमसे वो सांत्वना देते रहते थे। पुलिस मुख्यालय से, लखनऊ से भी, यहाँ से भी फोन जाते रहे हमारे पास। कल यहाँ आने के बाद भी उन्होंने पूछा आप लोग सही ठीक से आ गए नहीं आ गए हैं। सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे हम, ठीक से हमारा बहुत सहयोग मिला हमें वहाँ पे। एम्बेसी में कॉल कर 2-3 बार कॉल किया हमने, उन्होंने यही कहा आप होटल से ना निकलें, सेफ रहें अंदर ही। बिल्कुल भी सरकार को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। सकुशल वापस अपने घर बच्चों के पास वापस स्वदेश वापस आ गए हम। अपने देश आने के बाद बहुत राहत की सांस ली हमने। जी संगीता जी, उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ एक्स के साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, हमें बताने के लिए कि आप पे उस वक्त क्या बीती थी। ऑन दैट नोट, वी ऑल्सो हैव विद अस मिस्टर मनीष गुड्डू ऑन द ब्रॉडकास्ट। मनीष जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप कब लौटे हैं नेपाल से? मनीष जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हेलो जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Okay, we seem to be having some network issue there. I'll move on to our guests at this point in time. Ambassador Mahesh Sachdev, Major and Sudhakar ji with us on the broadcast. Ambassador Mahesh Sachdev, how do we see, there's no government right now in Nepal. So obviously there's no question of raising this issue of general public safety because we don't know who to really reach out to at this point in time. But how do we at least raise a very clear objection to what has happened? There is absolutely no reason why anyone should tolerate citizens of their country dying in the sort of absolutely mindless way in which the protests in Nepal have transpired. How do we take this conversation forward? Because there could be people who are still stranded or people who will now be dissuaded from even visiting Nepal in the future. Thank you, Devika, for having me. It's indeed a tricky situation. I must add that there is always a government in place, although the leadership may not be in place, may be diffused, but various ministries, various security agencies, organs, army, etc. are in place. And in such a tricky anarchical situation, it is embassy's job to keep in touch with every stakeholder that is affected, and more importantly, to keep in touch with the authorities who are empowered or able to help the situation. There is also need to understand that protests, etc., were not per se anti-Indian.
the anarchical elements, the rogue elements, etc., have taken advantage of the anarchy, and they are doing what they are expected to do: loot foreigners. Tourists are supposed to be loaded, and they are easy prey. So that's how it seemed to be happening. And I should add that India, being a large neighbor, sends a lot of tourists to Nepal. And this was the peak season of tourism. Rains had just ended, and Nepal welcomes tourism around this time. So it was to some extent collateral damage that our nationals have suffered. Of course, we need to take it seriously and remonstrate with the authorities. More importantly, coordinate with them so that such incidents are avoided in future. Thank you. All right, Ambassador Sajdev, I'll come back to you in just a moment. Major and Sudhakarji, your thoughts on the same, sir, because at the end of the day, the sort of scenes that have come out of Nepal really do make one wonder what went wrong over a few days. I understand that this was a protest that was probably, or the resentment was brewing over a very long period of time, but within 2 to 3 days, people have set public property on fire. There are visuals coming in of these so-called Gen Z protesters who are dancing in front of burning buildings. A former Prime Minister of Nepal has lost his wife because she was trapped in the house when they set it ablaze. How do we now really take this forward with Nepal, given the absence of a government at this point in time? Yeah, Devika, good evening. Thank you for getting me to your show. It's no doubt it's a very unprecedented turn of event. And being a military man, if I have to apply all my wisdom on the whole issue, I would say that there is a pattern. Never study a security situation in isolation. You got to join the dots. So when you join the dots, 2022, Sri Lanka, then Maldives, then Bangladesh, then here, there is a common trend line which is actually emerging. And the pattern of activities are also becoming very pronounced. So there was a basic cause. Out here, the basic cause, the facade which was being presented was the banning of the apps. But this was the trigger. Taking advantage of the trigger, when the protest started off, many of the participants in the protests have come in multiple media platforms to say that the protest would assume such unimaginable violent contours that they never imagined. Same thing happened in Sri Lanka as well. Same thing happened in Bangladesh. So that means there is a criticality, there is a trigger which is being monitored by some external agency, or maybe with the help of coordinator inside, and at particular point the button is being pressed, now let go. So when that let go thing is given, that order or direction through means of signal or through means of some coordinated activity, then, but by all standards, Devika, I totally agree with you. The Nepal arson or the carnage has taken some undue, unprecedented proportion. All the public institutions and the Prime Minister's wife being trapped and killed. Then one thing has got viral, some finance minister or somebody, he's been lynched, he has been stripped and thrown onto the banks of a river. I mean, this is never done. Your parliament, your Supreme Court, all the institutions have been attacked. Will people of any country, why only Nepal, will the indigenous population of any country be so virtuously motivated against their own institution and country? I don't think so. So there are some external elements
who were waiting to pounce on the opportunity when the trigger, when the momentum picked up, and they actually merged themselves with the crowd, and thereafter they have unleashed these kind of violent activities. So that actually justifies that, whether you call it as Arab Spring or South Asian Spring, there is a bigger plan behind what is visible to you and me and others. The bigger plan is there is some force, and that force is, I would say, it could be the Westerners, the deep state in America, it could be anybody else, forces inimical. The ring of fire is complete now. You see, what after? Question should come to our mind, what after Nepal? Now coming to the second part of your question, what is it that we can do? Our own people are trapped in the hotels, and they're transiting, they're traveling at place A, B, C. I personally feel taking the new normal of agitation and such kind of unprecedented violent activities, arson and all, I think we need to factor in the visa-less or visa-free travel to countries like Nepal and all, because what is worrying me is that during COVID time, our number of checkposts between Nepal and India, incidentally for our viewers, it will do them good to understand that Nepal and India, there are 5 states which have got sharing borders with Nepal. Bihar and UP, they have got the longest distance of the border. I think Bihar is largest, close to 700 kilometers. UP is around 600. Rest all are small. Uttarakhand is just about 179 kilometers. Sikkim is around that much. So total comes to 1751. At places you will find 1770 kilometers. What I am coming to is that as on today, to the best of my understanding, since I have dealt with the subject myself, there will be roughly around 7 to 8 immigration posts from Bihar to Nepal and vice versa, from UP to Nepal and vice versa. But there are far and few, except for the trucks, except for the goods going into Nepal and coming out of Nepal. The tourists generally do not take these kind of routes. They go by air, majority of the tourists. So when the tourists are going by air, does our embassy have a system to have some kind of a record that so many are the tourists coming from India? I have been a tourist myself. I've gone with my family. I don't think I got a call from embassy. If it is happening, it's a very good thing. But if it is not happening, then we need to factor in these kind of things. Who stuck where? We didn't know. Even in Ukraine, I was handling that situation myself. 20,000 students coming from Ukraine was a massive task. So the government of India would do well. Firstly, we take stock. How many people of India's origin have gone for tourism purpose or otherwise? Maybe the business class people have gone. Where are they staying? We need to actually activate the mechanism and the system, ecosystem, to find out their location, have a contact number, give them the contact number of embassy, tell them stay calm and safe wherever you are. Establish some kind of a contact point with the government. I agree when the ambassador said, well, presently there is nobody, but within nobody there is somebody. There is an army, Nepalese army and Indian army. We have best of relationship. We need to establish some viable and workable kind of a contact. We have our security, our police people, they carry a joint patrolling. So such kind of agency security apparatus have to be actually reconnected, and some mechanism has to be worked out. Last but not the least, Devika, if you allow me, I would like to say that the hallmark of everything lies in anticipation. We need to be prepared. In today's in 21st century, there is a new normal which is emerging. Whoever is going wherever, he has to be mentally prepared for a contingency like this if he wants to have a holiday trip. And if he is prepared, then what are the contingencies? That has to be as a futuristic course of action. We must have a checklist available in the country that these are the contingencies. It could be a disaster prone. In any case, Nepal is a seismic 5, 6 kind of a zone. It could be a disaster kind of a thing. It could be a cloudburst. It could be a terrorist activity. And within this subpart, I would like to submit one thing, that there is a strategic rivalry between USA and China going on in Nepal. USA is going all out to contain, counter and contest, need be push out China as much as possible, because China has made very deep inroads into the way of life for Nepalese. There are more than 36 Confucius Institute where they teach Mandarin, they teach way of life of Han Chinese, and likewise 5,000 to 6,000 Nepalese have been trained in Mandarin language. There is a huge amount of money which has come into Nepal in form of BRI projects, and the transgression, or call it as
incursion across the border. The border which was accepted between Nepal and China also has been disregarded by China. They have come in. There is a huge amount of deposit of rare earth element which China is actually eyeing for. There is also a blueprint plan of China selecting 8 national highways cutting across the entire length of Nepal is around 700 odd kilometers east-west, and north-south is 150 to 250 kilometers. There are 8 alignments which have been surveyed, and Nepal is waiting for the government to get an opportunity to cut. Yes. So therefore, under these circumstances, there are also Islamic forces who have come in a big way. Talk about the Al-Qaeda, talk about the ISIS, under the coordination of ISI of Pakistan in the garb of NGO. Turkey NGO responsible for tree plantation along the river lines and border between India and Nepal. These are the people who are harboring these Islamic jihadis, and number of masjids have come up. They have multiplied, mushroomed in past 5 years. So these are the aspects which are actually making things very complex. We should be prepared for what next after Nepal. Is it the UP? Are they targeting India? Will they come into India, places like Delhi, metropolitan? Are we supposed to be prepared? The citizenry has to come into a very active role. Each one has to be responsible for our own safety and the safety of the nation and security of the country. Yes, I'm going to come back to both of our guests. I believe Mr. Manish Guddu, who's just returned from Nepal, is also back with us on the broadcast. Manish ji, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैडम जी। मनीष जी, आपकी वीडियो ऑफ हो गई है, पर आपसे ये समझना चाहेंगे, एक तो आप प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए वापस अपनी, और आपसे समझना चाहेंगे मनीष जी कि आप कब लौटे हैं नेपाल से और आपको क्या याद है, वहां क्या क्या देखा आपने? हेलो। Okay, we seem to be losing that line again and again. But Ambassador Sachdev, bringing you back, sir, I have to understand from you. Major Sudhakarji just pointed out several different aspects of what could be the possibility. But in your assessment, do you feel that there is a larger plan at play here, that this was not simply a protest over social media ban or for that matter corruption, but there could be a larger plot here, because we've seen now a pattern, especially in our neighborhood? Ambassador Mahesh Sachdev. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Go ahead. Can you hear me? Thank you for the question. I tend to take a slightly nuanced view. I think there is a governance deficit in many of India's neighbors: Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Myanmar. There is a popular alienation with the ruling elite, and the problem that man in the street faces are not being tackled, such as unemployment, the arrogance of those in power, nepotism, education and healthcare deficit, insecurity, etc., etc. Now, these conditions give rise to social and economic entropy, and when a critical mass gets assembled, it explodes. Now, that is part of the natural progression. But when it explodes, of course, there are going to be foreign elements, foreign powers, vested interests within the country, existing power, the power in opposition, the power that have been, they think, have been denied a role, etc., etc. Those powers come into play, and they try to utilize the opportunity presented by the anarchy to meet their ends. And this is what is happening. Of course, General is not off the mark. There might be
a wider conspiracy to surround India with such fragile states and in difficult conditions, so as to preoccupy India in South Asia itself and prevent it from playing a more global role. But then that's not my call. I don't believe that such a wider conspiracy does exist. But when opportunities present themselves, people vested interest within and without come into play. I should add here that organized major powers do have contingency plans, do have people in place in their own country, locally, ready. They've taken out of freezer, put in microwave, and served to the people to take care of the situation. This is what seemed to have happened in Bangladesh. This is what they tried to do in Egypt after Hosni Mubarak, and so on and so forth. So there are the contingencies exist. People do support at one level. You know, if a country would support official Indian government to government contacts would be there, but at the same time they would keep giving political asylum to Kashmiri rebels or Khalistanis, etc., just in case opportunity presents itself. And this is, if this can happen to a major stable power such as India, you can imagine the fate of Bangladesh, Nepal, and Sri Lanka and Maldives. So I think we need to be prepared, and we need to keep our guard. I think the point about anticipating possibilities of sudden developments adversarial to India that General raised is something extremely important. India was, one should say, was caught a bit napping, unawares of what happened in Maldives, what happened in Sri Lanka, what happened in Bangladesh. And now these events in Nepal also seem to have not been anticipated. So all that put together, I think there need to be cautious, need to be more proactive and anticipatory. Thank you. All right. On that note, I thank both of our guests for joining us on the broadcast. With that perspective, we leave it there and move on to some breaking news. European Union Commissioner for Trade and Security, Maros Sefcovic, is on a visit to India. He says that India and EU are putting in maximum efforts to finalize negotiations by end of the year. Listen in. We are now maximizing our efforts to finalize negotiations by the end of the year, as it was agreed by the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and Prime Minister Modi when we've been here, as I mentioned earlier this year. And we are striving to put in place an economically meaningful win-win package that brings real added value to businesses and consumers both in Europe and here in India. Because this would enable us to work together in the areas where cooperation will bring additional value and where it definitely makes sense. This would also provide you, the car manufacturing industry, with the ability to create a future where innovation and sustainability drive the progress. As you see, the both of us are still having a good time. Both of us are a little bit tired because we are talking to each other with a huge intensity. And I can tell you that our teams are even more worn down than two of us because they are working even harder. And with that, we step into a very short break. For centuries, the sea has been a pathway to progress. And at the heart of India's maritime ambition
lies a state with the longest coastline in the country, Gujarat. With a 2,340-kilometer coastline, Gujarat serves as a critical entry point for cargo coming from the Eastern Hemisphere. But it's not just a coastal hub. Gujarat is a gateway to the entire north and central part of India, connecting landlocked states like Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab and Uttar Pradesh to global trade routes. This strategic position has allowed Gujarat to become India's undisputed maritime leader. The Gujarat Maritime Board, or GMB, has been instrumental in this success since 1982. Today, Gujarat's ports handle an incredible 488 million metric tons of cargo, more than double that of any other state. Gujarat accounts for nearly 31% of India's total cargo traffic and a staggering 66% of the cargo handled by non-major ports. Gujarat's leadership isn't just about volume, it's built on a foundation of innovation. વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશના પોટેન્શિયલને સુગ્રોથિત બનાવવા પર ભાર મૂક્યો છે અને એના પરિણામ સ્વરૂપે અનેક ક્ષેત્રોને અકલ્પનીય વિકાસ થયો છે. પોર્ટ્સ તેમાંનું એક મહત્વનું ક્ષેત્ર છે. ગુજરાત તો દેશના સૌથી લાંબો 1600 કિલોમીટર દરિયા કિનારો ધરાવતું રાજ્ય છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતની આ સ્ટ્રેટેજિક કોસ્ટ લાઇનને દેશની સમૃદ્ધિનું પ્રવેશ દ્વાર બનાવવાની નેમ સાકાર કરી છે. તેમણે મુખ્યમંત્રી તરીકે 2003માં શરૂ કરેલી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટને પરિણામે 2 દાયકામાં ગુજરાત પોર્ટલેન્ડ ડેવલપમેન્ટનું પાયોનિયર બન્યું છે અને રોડ મોડેલ રાજ્ય તરીકે પ્રસ્થાપિત થયું છે. Gujarat was the first in India to introduce a dedicated port policy, which opened the doors for private investment and public-private partnerships. Gujarat was also the first to invite private players into port bidding and to establish a private port at Pipavav. The state's pioneering spirit led to the development of specialized terminals like the LNG terminal and the chemical terminals at Dahej. With a massive handling capacity of over 338 million metric tons per annum, Mundra is the largest commercial port in India. Deen Dayal Port recently handled a record-breaking 150.16 million metric tons of cargo in a single financial year, making it a top cargo handler in the country. And let's not forget Alang, which has gained global recognition as the world's second largest ship recycling yard. It handles around 98% of India's and 30% of the world's ship recycling tonnage. GMB is working to expand Alang's capacity to 9 million LDT with a focus on worker safety and environmental protection. Gujarat's journey is far from over. Under the ambitious Vision 2047, GMB plans to expand its cargo handling capacity to 2,000 million metric tons. हमारा पोर्ट लेड डेवलपमेंट का विजन इसी महान विरासत से प्रेरित है. भारत पोर्ट्स के इर्द गिर्द बसे शहरों को विकसित कर रहा है. सी फूड से लेकर टूरिज्म और ट्रेड तक कोस्टल रीजन में देश एक नए इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है. देश पोर्ट्स के विस्तार और आधुनिकीकरण उस पर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है. Key initiatives include a new port-led city being developed at Muroli to create a modern urban center around port activities, an integrated ecosystem to seamlessly combine advanced port infrastructure with commercial areas, foster the growth of industries directly linked to the port, creating dedicated industrial clusters, and a modern logistics network to ensure the efficient and seamless movement of goods. The plan is also to develop 10 new greenfield ports and redevelop 6 existing ones, adding an estimated 200 million metric tons of capacity. To support this growth, Gujarat is enhancing its strong rail and road networks, connecting its ports to the western dedicated freight corridor to reduce logistics costs and congestion. With its strategic location, forward-thinking policies and bold new projects, Gujarat is not just consolidating its role as India's maritime leader, it is shaping the nation's future
as a global maritime powerhouse, driving economic growth and solidifying India's place on the world stage. Hello and welcome. You're watching NewsX with me, Devika Devan. Sergio Gore's confirmation hearing on Capitol Hill has put the spotlight firmly on the future of US-India ties. Testifying before the Senate Foreign Relations Committee, the ambassador-designate struck an optimistic note, saying Washington and New Delhi are not that far apart on a deal on tariffs and predicting a resolution in the next few weeks. Gore underscored that America's relationship with India is a strategic partnership that remains much warmer than their ties with China. That optimism comes against the backdrop of mixed signals from US President Donald Trump in the days after the SCO summit in Tianjin, where Prime Minister Modi was seen alongside Vladimir Putin and Xi Jinping. Trump blasted the trade relationship as a totally one-sided disaster and complained that India's tariffs had been the highest of any country. He even warned that they now have offered to cut off their tariffs to nothing, but it's getting late. They should have done so years ago. On social media, he went further, declaring, and I'm quoting here, "Looks like we've lost India and Russia to the deepest, darkest China." Yet Trump also moved quickly to reassure New Delhi, calling India-US ties very special, stressing that he would always be friends with Prime Minister Narendra Modi. But where exactly does the trade deal stand today, and what do we make of President Trump's latest comments? I have with me Senator, President Trump has been crystal clear on this. They must stop buying Russian oil. Possibilities are endless, Senator, as you pointed out. We fully intend in these trade talks that are ongoing right now to open the markets to crude oil, petroleum products, liquefied natural gas. You're talking about a population of 1.4 billion individuals there. Their middle class, by our definition, is larger than the entire United States of America. And so we have countless possibilities to expand into those markets, and we fully intend to do that. Our relationship with the Indian government, with the people of India, extends many more decades, and it's a much warmer relationship than they have with the Chinese. Frankly, they are concerned by Chinese expansionism. And Chinese expansionism is not just on the border of India, it's all over the area. And so we share a lot in common, and we share a lot of the same concerns that other nations in the region do. All right, joining us on the broadcast is Ambassador Suresh Kumar Goyal, Dr. Shahid Kohli, Rabindra Sachdev and Professor Madhav Nalapal. Let me begin with Ambassador Goyal. Ambassador Goyal, your first thoughts on this latest signal coming in from the United States of America? How long do I have? The first thoughts are not really the first thoughts, but they have been brewing for a long time. Devika, thank you very much. I have one or two thoughts here really. First of all, Mr. Gore, while deposing in front of the Senate, he did talk about that, yes, the trade deal is being talked about and they hope to conclude it soon, etc., and that how important the India-USA relationship is. At the same time, there is again a kind of a stark ultimatum to India that there will be no trade deal unless we stop buying oil from Russia. That stands. And that is where it was even before the trade deal discussions had stopped. So I do not know what to make of it, number one. Number two, again, there is an issue of really China. That because China is on the path of expansionism, and therefore India is important for the USA to counter China. And also that India is being looked at in terms of the huge middle class market, which according to the American standards is more than what the American size of population is. If we have to look at the purchasing power, maybe the market will be smaller than the USA, but nonetheless, in terms of population, it is more than USA. My concern really is that the factors which had led to the downward trend in the India-US relations, they still remain very, very important in the minds of those who are close to President Trump, including Peter Navarro, including the
the Commerce Secretary, including Robert Gould. And even if President Trump keeps on saying how keen he is to have conversations with Prime Minister Modi, at the same time, his team continues to be really issuing these kind of, including the ambassador designate, so to say. They continue to issue these kind of warnings to India. I do not know what to make of it. Also, please remember that President Trump is urging Europe to put 100% tariff on India, because India is importing oil from Russia. This again is a media report, maybe wrong, maybe right, but this is what we say. My concern really is maybe for whatever reason, President Trump wants to have a better relationship with India. But the team of President Trump, including his ambassador designate, does not seem to be indicating giving any indications in that direction. I will have to wait for those indications to know that yes, we are going to have a sound relationship. Last point really here is, I think we had become so totally US-centric in our relationship that President Trump could use that US centricity to threaten India and say that yes, in case you do it, then you have all this tariff. If we are going to become US-centric again, are we going to suffer the same kind of situation again, being threatened? I think it's better for us really to have a multilateral engagement. Sorry, not multilateral, but engagement in a multipolar world with different countries, along with an autonomy to be able to take our decisions. And we know where our interests are. We want to have good relations with the USA. We have said it very often. But that relationship with the USA cannot be that of a supplicant and a provider. It has to be an equal relationship. Devika. All right, Professor Madhav Nalapat, your thoughts on the same, because it has been slightly confusing so far. What exactly does the US want? But a lot has changed since the SCO summit, and we do hear some change in tone ever since then. But what do you make of the latest commentary that's coming out of the US? Look, the fact of the matter is that, I don't know about any separation between Donald Trump and his team, for a simple reason that if his team had any separation from Donald Trump, they would not be in the team for very much longer. They would be immediately dismissed. Otherwise, I agree with Ambassador Goel's comments. I would only like to point out that Sergio Gore has got to be confirmed. He's got to have a majority in the in the Senate voting him in. And I think he's saying the right things to ensure that he is confirmed. But the reality situation is, within 24 hours of his landing in Delhi and settling in Roosevelt House, he's going to understand that it's absolutely no go for India to stop buying Russian oil. We're not going to snap a relationship going back from the 1950s on the whim of anybody in 2025. And I can tell you that Prime Minister Modi is absolutely firm on that. There's not going to be any question of any concession on that, for a simple reason that they talk about the 1.4 billion people of India. Well, they depend on cheap energy. If the US can have a long-term or even a medium-term, say 5-year or 4-year contract for supply of oil at a price lower than that of Russian crude, and if their quality is equivalent to the same crude, then I think our refineries would not mind shifting. But those are to be done by economic ways and not by coercion. Coercion never works, I can tell you. And on the one hand, Donald Trump is talking about deepest, darkest China. On the other hand, he's strengthening the hand of China by basically infuriating Indian public opinion against him. If he were to make a visit in India, frankly, I think there'd be
there would be expressions of protest, although of course they would be peaceful and they would be well disciplined. But the reality is that Donald Trump has confused those in India who were his supporters for a long time. He has confused friends in America who have been supporters for a long time. And I think, as far as ambassadors Gore is concerned, let him be confirmed first, then he becomes ambassador. Let him take up residence in Roosevelt House. I think he will understand the realities very, very clearly. And yes, I fully agree that in Trump's description of China, as far as the US is concerned, as far as India is concerned, as you can see, the Indo-Pacific, the Chinese expansionism is a fact of life, and India and the US must work together. But they must work together as co-equal partners. In the First World War, the First Cold War, China was with the US, but it was sui generis. It stood by itself. It did not stand like a European ally or Japan or doing the US bidding to a considerable extent, but did its own bidding, and at the same time, where it mattered to China, supported the US. For example, China was very much against the Soviet Union. Mao Zedong, totally disliked the Soviet Union, and he said they are revisionists, they have revised communist doctrine, they are paper tigers, all kinds of very abusive things about the Soviet Union. So he had an interest in joining hands. As far as we are concerned, we are not being abusive towards China, but the reality is that the Chinese have multiplied their presence throughout South Asia, and they have been propping up regimes that are not at all friendly to India. Oli just had to quit. Oli was very hostile to India, very close to China. So were the Rajapaksa brothers. So the reality of the situation is, of course, as far as Pakistan is concerned, it is inexplicable why President Trump is so friendly with Pakistan, unless you can explain the Qatar connection. And frankly, Israel has punctured the value of that connection for a simple reason. Netanyahu knows that Qatar is close to Donald Trump. Qatar has given him a new Air Force One, but still they went ahead and bombed in Doha, the headquarters of what they believe. The floors that were headquarters of what they believe were the leadership of elements of Hamas. So the fact of the matter is, if Donald Trump has India on his side, then he is secure. His country is secure in the Indo-Pacific. If India is pushed away by this kind of absolutely unreal policy that we have not seen in US presidents, and policy that we would not tolerate 1 second, especially Prime Minister Modi. So the reality of the situation is, yes, they do need us, we need them, but we have got to be sui generis. We are too big to be counted among the allies of the US. We are sui generis, a partner of the US in securing the Indo-Pacific, the way China was in defeating the Soviet Union during Cold War 1.0. All right. Sharad Kohli, bringing you into the conversation here. Sharad, I want to then understand from you. Now, Sergio Gore has come and stated that it's a much warmer relationship with India than with the Chinese, and that this relationship is going to go on for decades. But just today, reports have come in of President Donald Trump likely to be asking the G7 members to impose higher tariffs on both India and China in light of both the nations buying Russian oil. So this is what I want to understand from you. How do you think we need to now navigate this situation with the US? Because it seems like they've, as far as a one-on-one is concerned, taken a much softer tone after the SEO. So some message has gone to the White House, to the president and the people. But it seems as though there is still an attempt to create pressure on India and China, this time through the G7. Good evening, Devika, to you, my fellow panelists and NewsX viewers. I think confused is one word which can be aptly used for President Trump at this point of time. He's not very sure
he calls India a friend, and then he goes on to say that, Europe must impose 100% tariffs on India and China. Then he calls Prime Minister Modi as his friends, and he says India levies highest amount of tariffs. For his information, the average tariffs we were levying on American goods into India were barely 16-17%. Apart from things like Harley Davidson and so, most of the products were coming at 16-17%. So I think he's misinformed as well, as for all probably the statements are coming in a manner to probably blow over the whole thing. So I think confusion is there. As far as India's navigation is concerned, I think India is very clear on its stance. We have left the doors open. We have left the windows open for negotiations. We heard the Commerce Minister Piyush Goyal saying that by November, the deal might happen. So are the Americans saying that negotiations are on. We are talking to, but then people like Peter Navarro have to stop, issuing statements like India being a laundromat and India being Modi's war and stuff like that. I think all these things have to stop. I really don't think, Devika, at this point, the entire White House is in sync. And Sergio Gore, if you see, I see some missing synchronization between the different officials of White House, between the ambassador. So it all seems very confused. They have to be very sure what they want to do. India has gone to the China. First of all, India has been non-aligned for times immemorial now. India doesn't believe in taking sides. India stands with truth. India believes in one-on-one relationship. We don't believe in groupism. We may be member of various groups like Quad and BRICS, but we don't believe in groupism as is being projected. And India has gone to China's side and this and that. Prime Minister went there to attend an SCO summit, of which India is a member. So are simply attending the summit that, India has fallen into the lap of China, the darkest China. I think these statements do not carry any relevance as far as India is concerned. We don't give any importance or significance overly to the way they have been expressed. So White House needs to be clear on where it wants to go. India is very clear on its tariffs. There is a red line drawn. We cannot allow agri and dairy. We are clear about it. We are not going to stop buying oil from Russia. Sometime I heard a statement yesterday which said, India is late. You should have negotiated earlier. You only launched that 2nd of April. We've done 5 rounds of talk. 6th round is already on. How many times do we need to say the same thing? We've been discussing, item by item, list by list. We've been discussing each item. What else? This is the best way to negotiate. I think when two countries are talking, that the representatives are talking, that is the best way to go. What else is needed? And I'm glad if our talking to China, or some kind of normalization, that Hindi Chini bhai bhai, the slogan given decades before, if little bit of shades of that is coming to the fore, if that is making US a little more insecure in whatever way and making it talk to us, well, I think it's welcome. But however, from inside, we give as much respect to US. We value the relationship. We are natural allies. One is the largest democracy. One is the oldest democracy. And we are too entwined to each other, Devika. We are so much entwined to each other. There's people-to-people relationship. There is space relationship. ISRO, NASA work together. There are defense ties. There are cultural relationships. I think it is so closely knit that it cannot be seen from the prism of trade at all times, cannot be just measured from the prism of a trade deal. So I think that is where the White House needs to tweak its approach. Not everything can be seen through the trade deal. I mean, we've never seen India-US relations coming to this low. I'm talking of the last few weeks. Now, of course, there is some softening of stancing, and US is increasingly realizing, and we should not forget, Devika, that President Trump's approval rating in America has come down from 53% to 42%. So his approval rating is falling, especially on the economic front. On immigration, he still might be scoring, fair enough. But then as far as economy is concerned, inflation numbers came yesterday, 2.9%. Jobless claims. Look at the jobless claim numbers. So I think he will increasingly start realizing what I mean, as an economist, I've been saying this from day one when we started discussing this topic, that America is heading for that situation. And now the numbers which are emerging from the American economy, they are clearly indicating to the forecast, which I personally had made, that inflation will rise, the jobs are going to be less, and jobless, job creation of 22,000 is very alarming. Jobless claims are increasing. In fact, that is a good sign for the Fed to cut down the rates.
But overall, I think President Trump, at the back of his mind, I'm sure his advisors are also telling him that, look, your economy is not doing well. You're doing this to your friends. You're doing this to the rest of the world. This might be, self-destructive. So I'm sure he's realizing that. And I think as we progress with the flux of time, he will realize this even more. And I think what India needs to do is to just hang on, be there, leave the doors and windows open for discussions, and be very clear on its stand. We are very firm on our stand. I think for India, that is enough. It's all up to US to navigate. We really don't have to navigate as much, Devika. Right, absolutely. I'm going to leave the last word with Rabindra Sachdev. Rabindra Sachdev, you've just heard what everyone else has also had to say, but I want to understand from your perspective too. What do we make of, like I said, this report now coming in where we're learning that Donald Trump may be asking the G7 leaders to also increase some pressure in India and China, while he himself and his administration have softened their tone towards India? Well, thank you, Devika, and a pleasure to be with such eminent minds. I think we've explored from various angles, so maybe I'll try another. A couple of things, I think, in a big picture. We need to unbox the deal that America is negotiating with us, or the tariffs that we are facing. The tariffs that we are facing are one on account of trade, which is the 25%, and the other tariffs that we're facing, 25%, is due to Russian oil. Now, the latest statement to some extent does indicate, so far America was saying, I think that was the point, that they will not discuss even the trade discussions unless India stops buying the oil. But now when there are news coming that they're talking about discussions on trade, etc., to me it seems that maybe they are decoupling the discussions and tariff on trade and the discussions and tariff on Russian oil. One. Secondly, yes, on Russian oil, 25% yet. Trump has been asking European Union 50% to 100% more on China and India. And now you're telling us that he's also telling the G7. So on Russian oil, if the war continues in Ukraine, we might expect realistically, that the tariffs would go up. That's on the oil part. Now coming to the trade part. On the trade part, they're saying we'll discuss. Yeah, sure, we've identified our red lines and all. The big picture, it seems to me, the confusion part of it, it could be deliberate also. As I've been saying, America is or could be seen as playing a good cop, bad cop routine with India. And sure, Trump initially was also being very harsh on India, but then after a bunch of things, maybe he's had a little bit of a rethink, sure. So now what they're fine-tuning is a good cop, bad cop. Trump is the good cop, telling, yes, I want good relations with India, Modi is my best friend, etc., right? But on the other hand, his consiglieraries, his cabinet ministers, they are being the bad cops, saying that you do this, you did not do that, you're not that, etc. So I see that routine playing out in a sense, one. Secondly, yes, unboxing of the deal which is out there. So it could mean that discussions could be happening or could start happening on trade. That is on the 25% of the tariffs there. So maybe they could come down to 20. Some red lines of ours will be sacrosanct. Some we will adjust. Some America will adjust. We don't know. But probably it won't be anywhere lower than 15% because EU and several other countries have not. I think only UK has a 10% tariff and others are 15. Whereas before Trump, when he came, the average tariffs were about 2.5%, 3%. So whatever it be, even if it's 15 or 20, it's much higher than the pre-Trump era. Now, the other thing which is being said is that that it's Trump's reaction to India posing up with China and all. And I find it surprising, Sergio Gore's statement, that we have a much warmer relationship with India than India has with China. Of course, yes. There is no comparison between the relationship that India and the US had pre-Trump and what India and China had, or even India and China now even contemplating. We are merely probing each other inch by inch between China and India since Kazan, by the way. Not triggered by Trump, but since a year ago when Modi, Xi Jinping met, and inch by inch, discussion on the boundary issues, trade issues, other issues, etc. But yes, the Trump tariffs have come at a time that even a 1 millimeter of our, walk towards a discussion with China may seem amplified to the Americans. But I think this seems to me a very, shallow understanding to say that, America's relations with India are stronger and much warmer than with China. China was nowhere in the radar. Now that said,
even if the trade matter kind of, we come to some understanding, mutual, whatever it be, 20%, 21%, and oil tariffs, we don't know what will happen to them. They could grow and all. But the point is that, and yes, everybody is saying that, our relations will go back to normal. Yes, they will go back, but that will be a new normal. I don't think that India will forget this experience of this topsy-turvy ride, which President Trump has opened the gates, opened the floodgates of. Yes. But yes, US and India have to, in the long term, be very good, very strong allies. Natural democracy, oldest democracy, woven together, as Sharad is saying. I mean, we have family, diasporas, we have so much interweaving in this mosaic. But unfortunately, I think either we could even say that maybe we've woken up from a slumber also, right? Or we were assuming a certain thing. So this has been, I think, a wake-up call to India, which is fine. And yes, our relationship with America will and must endure and will and must be maximized. But then, as should all our other relationships should be. I think that's another lesson coming out of this. We are looking to now, in any case, we work with as many partners as we can. But I think now we've got a certain sense of urgency and once again a wake-up call that our relations with whichever in this matrix should be further strengthened and deepened. All right. On that note, I've run out of time, but I thank all of our guests for joining us to take this conversation forward. We have some breaking news coming in. We've accessed a video shot by one of the passengers of the SpiceJet aircraft whose wheel came off. In the video, you can actually see the wheel coming off at Kandla Airport. My colleague Shahid Ansari with us on broadcast. Shahid, take our viewers to the details, please. जी देखिए, पहला वीडियो मुंबई एयरपोर्ट से जो है रिलीज हुआ, जो वीडियो उसमें देखा गया, लेकिन एक और वीडियो जो ये वायरल हुआ है, जब ये कांडला से जो है मुंबई आ रहा था, तो उस दौरान जो है किसी ने इसकी वीडियो बनाई और उसने कहा भी कि ये एक पहिया निकल गया, ये उसने कहा भी। और ये साफ जो है स्पष्ट रूप से जो है हम देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से जो है जब प्लेन जो है टेक ऑफ हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जो स्पीड थी उसी स्पीड से जो है पीछे का जो पहिया है वो निकला है और निकलने के बाद से जो है काफी दूर चला गया है। और इस दौरान किसी ने इसकी वीडियो बनाई, किसी यात्री ने, और फिर उसके बाद जो है उसने ये कहा भी कि ये जो है ये तो निकल गया है। अब उसके बाद जो है चूंकि प्लेन जो है टेक ऑफ हो चुका था, अब उसे मुंबई आना था और इस दौरान जो है कि 75 यात्री उस पर सवार थे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, तो इस वजह से एटीसी ने जो है उनको इन्फॉर्म भी किया। एटीसी ने जब मुंबई एयरपोर्ट को इन्फॉर्म किया, तो इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट ने इस पूरे मामले में पूरी तरीके से जो है सावधानी बरतते हुए एयरपोर्ट को अलर्ट जारी किया। 5 बजे तक जो है इमरजेंसी अलर्ट जारी किया और वहां पे सारे बंदोबस्त के साथ जो है एयरपोर्ट पर सारी सुविधाओं के साथ खड़े थे कि अगर इस दौरान कोई हादसा होता है, प्लेन क्रैश होता है, प्लेन में किसी तरह की आग लगती है, तो कंट्रोल करने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर सारे लोग जो है खड़े थे। लेकिन शुक्र इस बात का है कि यहाँ जो है पायलट की हाजिर दिमागी से ये एक सेफ लैंडिंग हो गई और इससे जो है सारे 75 जो मुसाफिर रहे, यात्री रहे, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जी। Okay, Shahid, thank you so much for joining us on the broadcast with those details. In other news, Charlie Kirk was assassinated in Utah on Wednesday, the 10th of September. Ironically, he was speaking to 3,000 students about mass shootings when he was shot in the neck. Kirk was one of the most influential podcasters in the MAGA world and the co-founder of Turning Point USA. Since then, many, including President Donald Trump, former President Obama and Biden, have expressed their condolences. Till now, the investigative agencies have released a photograph of the person of interest and released a video showing the suspect climbing off the roof of a building, crossing a street and moving into a wooded area near the campus. But we have some news coming in. US investigators have said on Thursday that they found a bolt-action rifle believed to have been used in the shooting of Charlie Kirk. It is a high-powered bolt-action rifle found in a wooded area near the shooting site in Utah. Apparent engravings on the ammunition found so far and their meaning were still being analyzed by authorities. The investigators say that the weapon was discarded along his escape path.
The weapon recovered by investigators was described by the FBI official Robert Bowles as a high-powered bolt-action rifle. So that's the information that's come in. We have with us Ms. Purnima Nath. She's a Republican leader. Mr. Raymond Vikri, former U.S. Assistant Secretary of Commerce. And we also have Mr. Surinder Singh Lali with us on the broadcast, and Mr. Ravi Karkara, founder of Invest NYC Forum. Let me begin this conversation with Mr. Raymond Vikri. Mr. Vikri, what do you understand from the assassination of Charlie Kirk? Because one thing is clear, that this was a targeted shooting and not really an attempt at a mass shooting at this university function. Yes, well, thanks for having me. This, of course, is a very solemn and serious time in the life of the United States. We understand that there is a suspect in custody. And now the question going forward is how will American rule of law be upheld in going forward? We've lived through difficult times in the past of violence. I personally, in the 60s and 70s, when we had a presidential candidate, Martin Luther King, we had Kent State, and we did manage to uphold the rule of law and not seek retribution and creating of enemies that had to be rooted out. That having been said, one hopes that this will be the path forward for the United States now, because for all democracies, whether they be India, in Western Europe, Japan, the essence of being able to move forward is to uphold values of the democracy, free speech, due process, moving forward to tamp down violence. So this is a serious time. We'll learn more as it goes along. It is not helpful for people to call for retribution, rooting out of enemies, and it remains to be seen whether or not we'll be able to continue the path that we've been on for 250 years, with one major exception, namely civil war. Some really important news coming in. I'll come to our guests in just a moment. We've now been informed that the killer of Charlie Kirk, the assassin, has been identified as 22-year-old Tyler Robinson of Utah. A new image of him has been released, even though the FBI is probing the motive behind the killing of Trump's close aide at this point in time. Important information coming in. We've now been told that the assassin has been identified as 22-year-old Tyler Robinson, who belonged to Utah. That's important. The fact that within a few days the FBI has managed to now identify the assassin. US President Donald Trump, meanwhile, has shared more details into the arrest of the suspect in Charlie Kirk's assassination. Trump has now revealed that the person who turned the suspected assassin in was a person of faith and very close to the suspect. The person who brought in the suspect to a US Marshal is a minister. Trump also said, and I quote, "They drove into the police headquarters and he's there now." Trump refused to disclose the identity of the two, the suspect and the one who brought him in, but he is confirmed of major updates later in the day. Important news coming in from the United States of America. We've been told that the assassin has been identified as a 22-year-old Tyler Robinson, and Donald Trump has now also given information of how the assassin was actually brought in. Meanwhile, in more news coming in, another detail into the assassination tells us that the suspected killer arrived in the college campus just moments before the start of the event where Charlie Kirk was assassinated. The suspect arrived at the campus on US local time 11:52 a.m. and moved to the stairwell to reach the vantage point on the roof. The shooter then fled from the scene, jumping from the building.
The video of this fleeing has been released by US authorities, and of course it's been all around social media. Interesting developments taking place as we speak. I want to bring in Ms. Purnima Nath into the conversation as well. Ms. Nath, your first thoughts on the identity of the killer now being revealed as a 22-year-old young man from Utah. Any political violence is unacceptable, whether it comes from the left or the right. It is unacceptable. First of all, yesterday there were some communication going around that the weapon they found, they saw some trends indication. I have no idea exactly yet who this young man is and what his motives are, where, and etc. I'm sure they are going to communicate as well. We know that before that FBI Kash Patel has placed a bunch of information in his Twitter platform, and a lot of people were questioned and released. But hopefully we'll know a little bit more in terms of his motive as well. But when gun shooting in America is rampant, and if you pull the data, it is heartbreaking. But when we talk about Charlie Kirk, certainly he is very close to a MAGA movement, and he also is close to President Trump. And President Trump has taken this very seriously and communicating to the people directly, not from FBI as well. But here, in a sense that this has shaken us from the core, and we have seen what the good thing that we have seen, that many prominent Democrats as well have communicated about this senseless violence that has happened. But I want to remind you, just 3 months ago, a Democrat official, elected official, the Minnesota Speaker of the House, her name is Melissa Hortman. You didn't know, I'm pretty sure about it, because it didn't become a national news in America. Unfortunately, she and her husband and her dog, golden retriever, were mercilessly killed as well. But not many Republicans at that point of time supported and showed a little bit of empathy. And that's a very concerning thing, because even in President Trump's direct address to the public, he said it was left who did this. And Elon Musk said left is murderer. Laura Loomer said left is terrorist. At that point of time, nobody knew who the murderer was, who caused it. At least we have a picture now. We have somebody who's turned in. But a leader of a country should heal the country, no matter where the violence come from, whether somebody voted for them or they're from opposition or not. And that's where I think our country is going through a massive polarization, whether the violence come from the left or the right, the far right. We are seeing this. I don't know if you have even caught this recent news that actually happened on the same day that Charlie Kirk was shot and killed. Earlier that morning, on Wednesday morning, a Indian American, his name is Chandra Nagamalaya, was beheaded, completely severed head, was kicked on the parking lot. It didn't become a national news. It didn't even catch on. And if you talk about it, they call me, specifically me, as a racist because I speak about it. And I'm highlighting a issue that is a non-issue. They're saying good. This is what we are going through in this country. At the end of the day, we as an Indian American, a brown-skinned non-Christian, whites are also getting targeted. And if you look at the Kirk had said also in his last days,
closer to his last days, and this has caused a massive disagreement as well. I agreed with him in a lot of things. Unfortunately, nobody needs to go through this kind of tragic situation, but we also have to highlight as a country where we are heading. Okay, all right. I want our guests to stay on with us, because as we're speaking, more and more news is now pouring in. Well, we've learned there are some reports. Surinder Lali, let me bring you in on this. We've learned that this is a 22-year-old Utah resident, Tyler Robinson. There are reports coming in online that he was turned in by his father, that he confessed to his father, who is a 27-year veteran of the Washington County Sheriff's Department, as per the Daily Mail. Right? This is not our information at this point in time, but it's been reported. And his father then contacted authorities and secured his son before he could be taken into custody. That's point number one. Secondly, there are people who've now started, of course, their own investigation into who this 22-year-old young man is. And what we're learning is that he was an exceptionally bright student. There are people who've managed to pull out his report cards from his college and school days, and he's a really, really bright student. I'm looking at all straight 100%, or at least in the 90 to 100% percentile as far as most subjects are concerned. So here's a bright young man in Utah who's managed to get his hands on a gun and decided to shoot Charlie Kirk at the very minute when he was talking about mass shootings in America. What does this tell us about the state of America today, Surinder Lali? I'm going to use some strong terminology, so I wish to apologize to Mr. Vikri, Purnima, and Ravi in advance. Is America imploding? I mean, despite the hegemonic, depreciation outside, is America really out to implode? Because very unfortunate that I don't think this is the last of it either. With the number of guns that are in the United States, with the number of geniuses, knowledge is like it's a knife which works both ways, and unfortunately, in the collapse of the family system, a lot of children are looking for some sort of validation. I mean, thank God that he was caught alive. Otherwise, a lot of these people want to create place in history and some sort of validation. So they probably take on to the law. So I guess, a minister from the church and his father was involved in maybe in a dignified or a proper manner, bringing him to the cops. Otherwise, he had every reason to further, create more damage to the society. But Devika, is very unfortunate. Look at what's happening in America. I mean, a president who's out for retribution and validation, and the tariffs are in court. The Ukraine war, which he said he's going to finish up in 24 hours, the genocide in Israel, the National Guard, and especially in the democratic states, the Epstein files, the inflation, then, the rise of Mamdani, that's something also we need to look at too, because there is pathological hatred for the radical left, and, South Korea, who's their ally, and we invested, and they had, I think, a jet load, deported back. So I feel there is a lot of worry that the Americans need to do. And, the worst thing is that they're still not heading in the right direction, because I was just listening to Nancy Mace on CNN, who's a Republican and is running for office. And instead of, addressing the problem, she's talking about bulletproof doors and windows in her office and in the schools. I mean, this is not the end of the solution. They're probably looking at the wrong end to look for a solution to this. So it's very unfortunate that the affluent America, in which I think every politician ought to be worried, because all it takes is one kid who probably, and especially Utah as a state, where guns are very relevant and people go out hunting. So all it took was one 22-year-old to make world news. So that ought to give you an idea of how fraught, polarized, and explosive the United States of America is. And yes,
the Indian who was beheaded at his motel. And there are an N number of incidents. So my worry is even more personal because I don't vote in the US anymore. Is the racist attacks that is going to come on us Indians, I mean, us being affluent, us being a visible target, is something that I'm even worried about more. I mean, in the 80s when I was growing up, there was a gang called the Dot Busters who used to go out and hit Indian women because they were a bindi or a dot on the head. And me wearing a turban now, on the way a Sikh gentleman in California, was virtually beaten to death by a golf club, and not to mention the trucker issue. I absolutely don't stand in any form of support to that illegal Sikh who took a wrong U-turn. But now painting the entire community and the kind of hate that is coming on social media, Houston doesn't have a problem, but America has a serious problem now. Okay, I want to bring in Mr. Ravi Karkara into the conversation as well. Mr. Karkara, we're looking at a lot of information that's pouring in right now. There are people who've started, of course, looking into Tyler's family background, Tyler Robinson's family background. And upon first glance, Mr. Ravi Karkara, this is a very smart young boy. He's likely a university student. And basis the information that we have on his family, it's a pretty regular family life that he was leading. There are photographs of them trick-or-treating. There are photographs of them just enjoying time together as a family. So it doesn't seem like this was a kid who was either a loner or depressive. I mean, that's something that only further investigation will reveal. But on the face of it, as far as social media is concerned, it seems like a pretty regular family life. Amidst that, what is your reading? The fact that this young man has decided to pick up a firearm and shoot Charlie Kirk in the middle of his address. So Devika, just to say a few words, I think first I extremely condemn any form of violence, whether it's any form of American life or any other life lost. And it's extremely unfortunate. And, I just tell you, before I answer that, I want to tell you, as a parent who's raising children here, right? One of the biggest worries that you have when you send your child to school is whether there'll be a gun violence, a shooting. And that's what we've been seeing. As Raymond correctly pointed out, it's not from today. It's a decade-old story. And, we know there are multiple issues, and we will come back to that. But I think the heart of this entire issue is the gun lobby. And I must say that I've never supported NRA. And the way NRA has infiltrated the political system, the financial system, and the media, which continues, as you were saying, that you want more protection from bulletproof, more houses, more buildings. Your regular schools where you have armed police outside schools, where do you see that? Many countries have gone away from this, but I think in America, we have a president who survived 2 assassinations. Yet the media totally ignored that, right? You saw that. So in this particular case, I think it's very unfortunate, and we will probably, I think what we're seeing is a face of what's happening, but we don't know the mental health. And of course, there will be some, triangulation where it'll come when we look at his own health situation. But it is absolutely unfortunate, a 31-year-old, no matter what his focus was, he was killed while speaking about, and of course, unlike him, I have a very different opinion, because I strongly believe that the Amendment 2 needs to be relooked at, because, the way NRA has played the American lives from a very young infant to an old, a president being assassinated in less than 14 months. So I think this is a much deeper issue. And of course, completely from a toxic masculinity perspective, you have many studies have shown, if you look at gun violence by young people, they attribute to the video games. There are many psychological studies which have been done, that why is it only young men, in most cases, would use gun violence on guns and attack, either as Lali was saying, either you take your own life, or you take multiple lives and then decide to give up your own life just to create some kind of a heroic falsehood. So this is a much deeper issue, and I really feel very, very strongly that no matter what the political affiliations are, whether you're Democrat or Republican, you need to relook at the Amendment 2. You need to look at the NRA infiltration. And we have so much of evidence with the NRA for decades creating this culture. So I very strongly believe
that, while all the investigations, everything will come down into his psychological issues and everything, you can look happy. You can take multiple pictures. Remember, on social media, we always put the best pictures out, right? So I think deeper things will be really important to know. But I think the root cause must be addressed. And I'm not joking. I mean, I'm sure everybody here knows that when we send kids, everybody is wondering, will there be a no matter where you live, you can be living in New York or you can be living in Utah or San Francisco. Every parent goes through that, whether the children are going to school or to universities or to a nightclub or just to a festival. This is the reality, unfortunately, of the American society, or walking into Walmart where a gunman will pick up the gun and start shooting aimlessly. So there is a much deeper introspection that must happen. Okay, I want to bring in and leave the last word with Mr. Raymond Vikri. Mr. Vikri, there are now photographs circulating online of Tara Robinson's family with guns, right? And several social media users have started pulling out some of their photographs from fishing trips and other family trips where clearly he was exposed to guns at a young age. Some of his other family members were also exposed to guns at a young age. Well, that is one aspect. Do you think Charlie Kirk's assassination could reopen the debate about gun laws, or is that going to be completely brushed aside like it always is, and it's eventually going to boil down to the mental health of this person, of the assassin? Well, unfortunately, the history is very plain that the gun problem will be swept under the rug, particularly by those who are supporters of the president. It is absolutely true that we are awash in firearms, that we have the worst record of any industrialized society in regard to killings and of all kinds. So this will of course ignite that debate again, but I do not see this shifting any movement politically. We're going to have to fall back on basic values, and all democratic societies must, and that is that issues have to be settled without resort to violence. And we see a movement worldwide, whether it be Russian invasion of Ukraine, whether it be extrajudicial killings in India. We see these resorts to violence. Unfortunately, the United States has exacerbated the problem perhaps more than any other nation other than the invasion that we have talked about by sanctifying firearms and the Second Amendment. So we're going to have to come to grips with it, but I do have some optimism that there will be, over a period of time, a movement in the United States to rectify what has been building at this time. But it's going to take a very strong effort on behalf of those who support the rule of law, who support the limitation on gun violence, and we do not have that political will at this time in regard to firearms. Right, absolutely. On that note, I'm going to have to thank all of our guests for joining us to take this forward, and we slip into a very short break, but we're expecting the FBI briefing to come in shortly. Stay tuned. Co-powered by PolicyBazaar.com. हर फैमिली होगी इंश्योर्ड। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नानी, नानी।
क्या हुआ बेटा? नानी भूख लगी है, मगर ऐसा कुछ है ही नहीं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। बस 1 मिनट। टेस्टो, the only one with non-frozen, no preservatives, premium soya chap। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। Welcome back. You're watching NewsX. Big breaking news coming in. Nepal's parliament has officially been dissolved, and Sushila Karki will be taking oath as Nepal's prime minister any time today. We've been told that Sushila Karki's oath is scheduled for 8:30 p.m. today, and she becomes the next prime minister of Nepal. My colleague Ashish with me on the broadcast. Ashish, take our viewers through the details, please. All right, we seem to have lost that line, but we're now learning that Sushila Karki is becoming the next Prime Minister of Nepal. And of course, important news because there was no government in Nepal since the past 2 days. Sushila Karki is a former Chief Justice of Nepal. She was the first woman to hold this post, and she does have an in with the Gen Z as well as with the political class. Important developments taking place in Nepal, where the government has been dissolved officially, but the Prime Minister will now be taking oath at 8:30 p.m. Ashish, back with me on the broadcast. Ashish, take our viewers through the details. जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से देखिए सुशीला कार्की का नाम आ रहा था, फिर किसी और का नाम आ रहा था, लेकिन फाइनल मोहर लग चुका है। सुशीला कार्की आज 8:30 बजे शपथ लेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जेएनजी के जो नेतागण है, जो उनके मुख्य नेतागण, उन्होंने नाम आगे किया था जिसपे फाइनल मोहर लग चुकी है। और 8:30 बजे सुशीला कार्की जी शपथ ग्रहण लगी, अंतरिम प्रधानमंत्री नेपाल की बनाई जाएंगी। All right, thank you so much for joining us with those details. We leave it there. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया NewsX का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।
welcome. I grew up in a household of strong women, so I just do what they tell me. It's very simple. मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा मुझे अगर कोई मौका मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मौके बार-बार नहीं आते. हमारा देश में Bill Mason, Lieutenant Governor Deidre Henderson, FBI Special Agent in Charge Robert Bowles, and local and federal law enforcement partners. Following the remarks today, Governor Cox, Director Patel, and Commissioner Mason will take questions. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. We got him. On the evening of September 11th, a family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. This information was relayed to the Utah County Sheriff's Office and scene investigators at Utah Valley University. This information was also conveyed to the FBI. Investigators reviewed additional video footage from UVU surveillance and identified Robinson arriving on UVU campus in a gray Dodge Challenger at approximately 8:29 a.m. on September 10th, in which he is observed on video in a plain maroon t-shirt, light-colored shorts, a black hat with a white logo, and light-colored shoes. When encountered in person by investigators in Washington County on September 12th in the early morning hours, Robinson was observed in consistent clothing with those surveillance images. Investigators interviewed a family member of Robinson who stated that Robinson had become more political in recent years. The family member referenced a recent incident in which Robinson came to dinner prior to September 10th, and in the conversation with another family member, Robinson mentioned Charlie Kirk was coming to UVU. They talked about why they didn't like him and the viewpoints that he had. The family member also stated Kirk was full of hate and spreading hate. The family member also confirmed Robinson had a gray Dodge Challenger. Investigators identified an individual as the roommate of Robinson. Investigators interviewed that roommate, who stated that his roommate, referring to Robinson, made a joke on Discord. Investigators asked if he would show them the messages on Discord. He opened it and showed several messages to investigators and allowed investigators to take photos of the screen as each message was shown by Robinson's roommate. These photos consisted of various messages, including content of messages between the phone contact named Tyler with an emoji icon and Robinson's roommate's device. The content of these messages included messages affiliated with the contact Tyler, stating a need to retrieve a rifle from a drop point, leaving the rifle in a bush, messages related to visually watching the area where a rifle was left, and a message referring to having left the rifle wrapped in a towel. The messages also refer to engraving bullets and a mention of a scope and the rifle being unique. Messages from the contact Tyler also mentioned that he had changed outfits. I know there has been speculation as well as to the writing on those casings, those bullet casings, and I believe we have that as well, and I will share that with you now. So the area north of Campus Drive Road where the suspect crossed over, you saw some of that in the video that we released last night, consists of a grassy area with trees on the edge of the UVU campus. Investigators discovered a bolt-action rifle wrapped in a dark-colored towel. The rifle was determined to be a Mauser Model 98 30-06 caliber bolt-action rifle. The rifle had a scope mounted on top of it. Investigators noted inscriptions that had been engraved on casings found with the rifle. Inscriptions on a fired casing read, "Notices bulges, capital OWO, what's this?" ? Inscriptions on the 3 unfired casings read, "Hey fascist!" ! Catch!
up arrow symbol, right arrow, and symbol, and 3 down arrow symbols. A second unfired casing read, "Oh Bella Chow, Bella Chow, Bella Chow, Chow Chow," and a third unfired casing read, "If you read this, you are gay, LMAO." We are indebted to law enforcement across the state who's worked seamlessly together, local law enforcement, state law enforcement, and our federal partners with the Federal Bureau of Investigation. We're grateful for everyone who worked together in such a short amount of time to find this person and to bring justice. I want to thank the public who has been so engaged, reviewing videos, helping us with sending in tips, and helping us get to this point. I want to thank the family members of Tyler Robinson who did the right thing in this case and were able to bring him into to law enforcement as well. I especially want to thank the family of Charlie Kirk, Erica, Charlie's parents, his children. I want us to be thinking of them as we bring justice in this case. They will be involved in that justice. We will be working very closely with them as we move through this process as well. This is a very sad day for our country, a terrible day for the state of Utah. But I'm grateful that at this moment we have an opportunity to bring closure to this very dark chapter in our nation's history. With that, I will now turn the microphone over to the Director of the FBI, Kash Patel. Thank you, Governor. This is what happens when you let good cops be cops. The FBI and our partners are proud to stand here today together to bring justice to the family of Charlie Kirk and honor his memory. I want to express my deep gratitude to President Trump, the Vice President, and the entire White House who have been so incredibly supportive with both resources and just personally to the FBI as a team. They had our backs the entire way, and I just want to express my gratitude for giving us the resources we need to operate in this space to bring this sort of justice at this sort of speed. In 33 hours, we have made historic progress for Charlie. Governor Cox, our partnership has been absolutely incredible these last few days. Our partnership will endure. Your state and local partners, your sheriffs, your DPS community has been unbelievably impressive in the hardest of times. And a case like this cannot be solved, cannot be brought without partnering with your state and local authorities. The FBI has a certain role to play, and we will play that role, and we will lead out for the federal government. But Governor Cox, we are so grateful for your state partnership that led out on this investigation. A little bit of the timeline. Charlie was shot at 12:23 p.m. on Wednesday. The first FBI agents arrived on scene in 16 minutes with chiefs of police at 12:39 and secured the scene. The FBI immediately launched fixed-wing assets. We utilized these assets to transport personnel, specialty technicians, hostage rescue teams. We also utilize these assets to go back and forth from the East Coast and here in Utah to transport forensic evidence and other evidence that will be analyzed and is being analyzed at our FBI laboratories in Quantico and other laboratories, including the ATF. At my direction, the FBI released the first set of FBI photos of the suspect at 10 a.m. local time on 9/11. Then, shortly thereafter, the FBI reward of $100,000 was released at 10:45 a.m. local. Myself and Deputy Director Bongino arrived on the scene at approximately 5:30 p.m. on 9/11. The governor led a press conference last night at approximately 8 p.m., where at my direction, the FBI released a never-before-seen video of the suspect. We also released new images to the public of the suspect. And just last night, the suspect was taken into custody at 10 p.m. local time. In less than 36 hours, 33 to be precise, thanks to the full weight of the federal government and leading out with the partners here in the state of Utah and Governor Cox, the suspect was apprehended in a historic time period. And I want to highlight what Governor Cox said. This would not have been possible without you, the media, and you, the public.
That's why we went so public, so fast, and we're so transparent, and we're committed to that transparency. The crime scene, just a little bit there. It is a large crime scene. State and local authorities, along with federal authorities, processed that crime scene quickly. And I even had the ability to walk through that crime scene and walk through the steps the suspect took to learn more about what was needed and what resources we needed to bear to create a full picture for the FBI and leadership back in Washington. Furthermore, thankfully to state and local partners, forensic evidence has been seized and continues to be garnered. Forensic evidence has already been evaluated at FBI laboratories in Quantico and state and local authorities here. We will continue to process evidence as we see it, as we collect it, and we will continue to deliver to Governor Cox and his team. Last night, we had a total of approximately 7,000 leads. As of this morning, thanks to your great work, we have over 11,000 leads that were called in to the FBI. And we are running out every single lead that we can. Every one of those leads will be run out. The arrest is a testament to the dedication of good law enforcement being great, and partnerships in law enforcement, which I've tried to highlight as my tenure as the director of the FBI. There is no better relationship for law enforcement than the FBI to partner with state and local authorities, and you've seen it here in these last few days. The FBI Salt Lake Field Office, along with our offices in LA, Phoenix, Denver, San Antonio, Las Vegas, Pittsburgh, Buffalo, our headquarters component in Quantico, all participate in the FBI. I want to express my deep gratitude to the employees of the FBI, the men and women, the evidence response team tacticians, the special operators, the agents, the support staff. You have done monumental work in historic time when the public, who had a right to demand such an expeditious solving of an investigation, the FBI answered that call diligently, critically important to our nation, and we delivered. And I'm proud to be their leader, and I'm proud to be the director of the FBI. This is a very much an ongoing investigation, as the governor said, and we will continue to work with state and local authorities to develop the investigation, to provide them the evidence they need for their ongoing prosecutions, and we will be here to answer every call they absolutely have, as long as it takes, for as long as we need to find and apprehend whatever suspects were involved in this crime. Lastly, to my friend Charlie Kirk, rest now, brother. We have the watch, and I'll see you in Valhalla. Thank you, and good morning. I would just like to take a few minutes as the sheriff to express my gratitude for everybody. I grew up in a household of strong women, so I just do what they tell me. It's very simple. कि मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा मुझे अगर कोई मौका मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मौके बार-बार नहीं आते। हमारे देश में दुर्भाग्य है कि महिलाओं का साथ महिलाएं ही नहीं देती हैं। मैंने 5,000 वॉलेट से स्टार्ट की थी, आज 5 लाख 6 लाख मेरे हर वक्त वॉलेट में रहते हैं। When a woman is surrounded or is surrounded by a family that motivates you to be your best and to be financially independent. It's just, you are beautiful and stunning, and you like it's a pleasure to just see you. Being on Netflix in 192 countries worldwide, it is, I mean, that kind of exposure is staggering. Saying that if a city is safe for a girl, making our city safe for everybody, that we're all a part of this. Media and cinema contributes to our concept of popular history. Being validated, of course. सुनते ही बिहार की सियासत में हलचल मच जाती है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सम्राट चौधरी जी का।
और अब इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे उदय और राकेश। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मंच के हमारे इस अगले सेशन में। हमारे बेहद खास मेहमान अब हमारे बीच आ चुके हैं, जिनका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी जी हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इंडिया न्यूज मंच पर। हाँ जी, नमस्कार, धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया और आपके बीच में आकर बिहार की बात रख सकूं। अच्छा, आजकल क्योंकि चुनाव बेहद निकट हैं, ऐलान सूत्र बता रहे हैं शायद कुछ ही हफ्तों में हो सकता है, तो फिर जायज सी बात है कि विश्लेषक जो हैं वो अपना काम अभी से कर रहे हैं। कई विश्लेषक बोल रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत से दोबारा एनडीए की सरकार आएगी। कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि नहीं, ये यात्रा जो अभी चली थी, काफी भीड़ दिखी तो शायद रुख जो है वो विपक्ष की तरफ है। कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर इस बार होने वाली है और कुछ कह नहीं सकते, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। आपका विश्लेषण क्या है? आपका क्या रुख है? क्योंकि आप लगातार घूम रहे हैं, आपके प्रचार जारी हैं अभी से ही, तो इस बार सत्ता का रुख किसकी तरफ होगा? देखिए, बिहार का मोड बदल चुका है और इसलिए मैंने कहा कि बिहार की जनता ने अराजकता देखा है, बिहार ने भ्रष्टाचार देखा है। उस बिहार को एनडीए की पूरी सरकार ने एक ऑर्गेनाइज बिहार बनाया है। आज डिलीवर, विकास, इसकी चर्चा होती है। कल तक ये चर्चा होती थी कि कौन कितना लूट रहा है। आज बिहार में रोड देखेंगे, बिजली देखेंगे, घर घर बिजली पहुंच गई, गांव गांव तक सड़क पहुंच गए। बिहार के विकास की चर्चा अब दुनिया में हो रही है कि आज बिहार में एक समृद्ध राज्य में से एक है। आज जीडीपी भी इस देश में जिस ग्रोथ से बढ़ रहा है, उस हिंदुस्तान में दूसरे स्थान पर, परसों तक हम तीसरे स्थान पर थे और कल रात से हम दूसरे स्थान पर आ गए। इसलिए लगातार बिहार विकास की ओर जाने वाला राज्य हो गया, जहां चर्चा विकास की हो रही है। और अब कोई भी व्यक्ति, क्योंकि लड़ाई बिहार के विकास बनाम विनाश, दो ही तरह की लड़ाई है, लालूवाद और नीतीशवाद की लड़ाई है, मोदी जी की लड़ाई है। तो जनता को तय करना है कि लालू जी का फिर से राज चाहिए या नीतीश जी ने जो बिहार के विकास दिए उसकी बात होगी। क्योंकि अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी ने 40 वर्षों तक बिहार में राज किया। श्री बाबू के बाद बिहार में कोई मुख्यमंत्री एक तो स्टेबल नहीं था, काम भी नहीं करते थे, बिहार को लूटने में ही लगे थे और किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री 5 साल नहीं टिक पाया। लालू जी और नीतीश जी, इसलिए तुलना करता है हम लोग करते हैं कि नीतीश जी को 4 बार मौका दिया बिहार की जनता ने, तो बिहार के विकास के आयाम की चर्चा हो रही है। दूसरे तरफ लालू जी की चर्चा भी नहीं करता, उनका परिवार भी नहीं करता। उनके परिवार के लोग कभी नहीं कहते हैं कि 90 से 2005 में ये काम हमने किया, लेकिन सब ये जरूर कहते हैं कि नीतीश जी के साथ मिलकर हमने ये काम किया। सम्राट जी, बिहार की फाइट में सम्राट चौधरी इसलिए महत्वपूर्ण सेनापति हैं कि एक तरफ जो है लालू और तेजस्वी की रणनीति को भी समझते हैं, दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार की रणनीति को भी समझते हैं, और जिस तरह से लालू और तेजस्वी की ओर से रणनीति अपनाई जाती है, आप उसकी कार्ड तैयार कर लेते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नो डाउट, मेरी तो राजनीतिक उत्पत्ति ही लालू जी के विरोध में हुई और लालू जी ने मेरे घर को तोड़ दिया, मेरे परिवार के 22 लोग जेल में रहे, मैं स्वयं जेल में रहा। यहाँ आदरणीय सरवन बाबू बैठे हैं, उस समय विधायक हुए, समता पार्टी के मात्र 7 विधायक जीत कर आए थे। उस दौर से हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को तो जेल में यातना दिया तत्कालीन सरकार ने।
ह्यूमन राइट्स कमीशन ने फाइन किया तत्कालीन सरकार, और लालू प्रसाद जी को माफी मांगना पड़ा मिलर स्कूल के मैदान में। वो दिन भी देखा है हमने। लेकिन बिहार, क्योंकि आज एनडीए पे जनता का भरोसा है, जनता ने देखा है कि विकास कैसे होता है और विकास की किरण गांव-गांव तक पहुंची है। अच्छा सम्राट जी, वो कौन सा मोड़ या लम्हा था जब आपने ये तय कर लिया कि अपना करियर अब बनाना है तो राजनीति ही बनाना है और इसी में अपना सब कुछ दांव पर लगा देना है? देखिए, कहीं कभी सोचा भी नहीं था। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे पिताजी बड़े पॉलिटिशियन रहे, लेकिन इसके बावजूद वो स्वयं कहते थे कि ये अनसर्टन रास्ते, इस रास्ते पर कोई गारंटी नहीं। कौन जनता तय करती है, क्योंकि इस देश में जनता ही मालिक है, कोई व्यक्ति मालिक नहीं हो सकता। हमारी कोई पार्टी नहीं है, मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन वो कहते थे कि ये अनसर्टन रास्ते हैं। जब मैं जेल गया और 3 साल तक मैं केस लड़ता रहा, केस लड़ते लड़ते बिहार की राजनीति 96 का लोकसभा आया, 98 का लोकसभा आया, इस दौरान मैं पॉलिटिकल वर्कर बन गया और धीरे धीरे बिहार की राजनीति में काम करने लगा। और समय आया, बिहार की राजनीति में विधायक मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला, जनता ने भी आशीर्वाद दिया। इसलिए ये स्पष्ट तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि मेरा कोई ये नहीं था कि ये मेरा कैरियर होगा, लेकिन जिस दिन से राजनीति में आया हूं दूसरा कोई काम नहीं करता हूं, सिर्फ शुद्ध राजनीति करता हूं। यही मेरे लिए बिहार की सेवा करना। लेकिन तेजस्वी यादव अभी कहकर गए कि जिस तरह से जो दोनों डिप्टी सीएम, आपका भी उन्होंने नाम लिया सम्राट, जिस तरह से ऐसे तत्वों को आप संरक्षण देते हैं, उन्होंने ये कहा कि अपराधी जो हैं वो विजय और सम्राट हो गए हैं। ये बोलने के लिए अब बेचारा उसकी पार्टी को लोग अपराधी मानता है, वो दूसरे को थोपना चाहते हैं, चिपकाना होता है। अपराध में कहीं संलिप्तता दिखनी चाहिए ना। मैं गारंटी देता हूं, लालू यादव जी सीएम हाउस में बैठकर बिहार में कहते थे, अरे बच्चा लोग किडनैपिंग कर लिया, इसको कुछ पैसा दे दीजिए। साबुद्दीन को संरक्षण किसने दिया? तो बिहार में जितने अपराधी हैं सबका संरक्षक लालू प्रसाद हुए। जितने को टिकट आप देख लीजिए, वो संरक्षण देकर अपराधी को एमएलए बनाना, सांसद बनाना, बूथ कैप्चरिंग, उनका जीतने का मशीन क्या था? बूथ कैप्चरिंग। नीतीश जी ने उनको विरोधी दल का नेता बनाया, नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनवाया। जब वो नीतीश जी के नहीं हुए तो हम लोग के काहे होंगे लालू जी? देखिए, लालू जी बिहार में भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, अपराधी के प्रतीक है। और एक एग्जाम्पल तो दे, मुहावरा सिर्फ बोलने से थोड़े चले। लेकिन सम्राट जी, कोई ऐसा वाकया जो कि अब तक ये मीडिया में नहीं आया हो, आप क्योंकि लालू प्रसाद यादव परिवार के भी काफी करीब रहे थे, आप कोई जानकारी शेयर करना चाहेंगे ITV नेटवर्क के दर्शकों के साथ? ऐसा वाकया जो कि आप गंभीर आरोप लगा। मैं तो कह ही रहा हूं कि कोई सिस्टम ही नहीं था। साबुद्दीन के खिलाफ पूरी तरह बिहार पुलिस काम कर रही थी। किसने रोका? पुलिस को किसने रोका? तस्लीमुद्दीन साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, किसने रोका? पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, किसने रोका? राजवल्लभ को किसने संरक्षण दिया? बिहार में अराजकता की स्थिति 2005 में थी, तो किसका राज था? बूथ कैप्चरिंग से। ये पूरा उदाहरण बिहार जानता है। आज बिहार में जितने अपराध हुए सबके संरक्षण मुख्यमंत्री स्वयं देते। नीतीश जी के राज में क्यों नहीं संरक्षण मिल रहा? नीतीश जी के राज में लेकिन घटनाएं तो हो रही हैं, आज अब कह के गए मंच से यहाँ से। नहीं, देखिए, अब देखिए, व्यक्तिगत झगड़ा और संगठन अपराध दोनों फर्क चीज है। ये व्यक्तिगत झगड़ा है, जमीन का लेन देन हो, या तो ये तो राघोपुर से चुनाव लड़ने वाला था, तो किसको चिंता होनी चाहिए? चिंता किसको होनी चाहिए? राघोपुर का विधायक कौन है? और उसको ना चिंता होनी चाहिए। तो राघोपुर में कैंडिडेट जो बनना चाहता है उसकी हत्या हुई,
तो वही तो पुलिस ने कहा कि कार्रवाई होगी, जांच होगा, वो एंगल भी जांच होगा। देखिए, अपराधी अपराध करते हैं। बिहार की सरकार के उप मुख्यमंत्री की हैसियत से जरूर कहूंगा, एक भी अपराध चिंता का विषय। नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया, यहां कोई बच नहीं सकता, बड़ा आदमी तो गारंटेड नहीं बचेगा। ये नीतीश कुमार का शासन है। नीतीश कुमार जी के शासन में 100 घंटे में कोई भी अपराध हुआ, आप इतिहास देख लीजिए। गोपाल खेमका की हत्या हुई यही होटल के बगल में, 100 घंटे में कलकत्ता जाकर बिहार की पुलिस ने पकड़कर उसको लाने का काम किया। उसी तरह पारस में हत्या किया, पुरलिया से पूरा कांड हुआ और बंगाल जाकर पुलिस ने पूरी तरह गिरफ्तारी करके उसको जेल में डाल। देखिए, ये कार्रवाई वाली सरकार है। ये लोग क्या है, परसेप्शन, ट्विटर मास्टर है। एविडेंस लाओ ना। लालू जी के खिलाफ एविडेंस दिया था शिवानंद तिवारी जी ने, ललन सिंह जी ने, कार्रवाई हुई ना, एविडेंस लाओ। सम्राट चौधरी यदि किसी अपराध में है तो नीतीश जी या पुलिस, कोई भी पुलिस कहेगा 1 घंटे में इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा, जेल जाने के लिए तैयार है। ऐसा बयान नहीं दे सकता हूं। अपराधी का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड सोच भी नहीं सकती। तो संरक्षण बिल्कुल नहीं हो रहा जैसे आप कह रहे हैं, और अपराध अगर हो भी रहे हैं तो कार्रवाई हो रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं युवाओं के बारे में, क्योंकि दावा किया जाता है महागठबंधन के नेताओं द्वारा कि क्योंकि तेजस्वी खुद युवा है और ये आजकल डांसिंग के भी रील्स आ रहे हैं सामने और अनेक जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे युवा जो हैं उनके तरफ आ गए हैं। तो युवा, बिहार का युवा के मन में इस वक्त क्या चल रहा है सम्राट जी, वो किसके तरफ जाने वाले हैं? अभी यात्रा भी एक हुई थी, भीड़ भी दिखी थी वहां, वो क्या भीड़ वोटों में तब्दील होगी या नहीं? देखिए, 2 चीज समझिए। लालू जी नेता है, मैं इससे डिफर नहीं करता हूं। लालू जी के प्रतिनिधि बदलते रहे। श्रीमती राबड़ी देवी जी आई, वो प्रतिनिधि रही। बाद में तेजस्वी यादव जी आए, वो प्रतिनिधि हैं। मीसा भारती आई, तेज प्रताप यादव आए, रोहिणी आचार्य आई, और 1-2 बहन भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लालू जी का अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पीवीटी। उसमें कोई रोल, कोई नेता नहीं हो सकता, एमएलए एमपी बन सकता है, इससे ज्यादा रोल नहीं है। आप समझिए, बिहार के युवा क्या देख रहे हैं? एक परिवार, एक राजनीति। एक तरफ लोकतंत्र की पार्टी है, बीजेपी में किसी को पता नहीं है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। पिछले 15 साल को देखिएगा तो 4 से 5 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। लालू जी 28 साल से एक गद्दी पर बैठे हुए हैं, जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए था, पंजीकृत अपराधी हैं, वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो वो परिवार की पार्टी। तो बिहार के बच्चे जानते हैं ये अच्छा डांस करेंगे, क्रिकेट ऐसा खेला कि पूरे जीवन में क्रिकेट में 37 रन बनाया, पूरे जीवन के क्रिकेट में। और लालू जी कहते थे हमसे बेटा से पानी ढुलवाता है। अरे भैया, तो क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। खेलने का मौका मिला तो कितना रन बनाया? 140 करोड़ की आबादी है, इसमें तो मौका एक ही बार मिलेगा ना, बार बार तो मिलेगा नहीं। तो देखिए, बिहार के बच्चे जानते हैं, बिहार के नौजवान जानते हैं, जिस सड़क पर नाच रहे हो वो नीतीश जी ने बनाया। जिस सड़क पर 55 साल का बच्चा घूम रहा था, राष्ट्रीय नेता मोटरसाइकिल चला रहा था, उस रोड को मोदी जी और नीतीश जी ने बनाया। लालू जी के राज में इतना जल्दी घूम लेते बिहार? घूम ही नहीं पाते। यही है बदला हुआ बिहार। सम्राट जी, 2025 के बिहार चुनाव में बीजेपी का नारा क्या होगा? डबल इंजन की सरकार या मोदी की गारंटी कार्ड? डबल इंजन की सरकार। मैं गठबंधन में हूं भाई, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, इसमें कहा दो मत, एकदम स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले भी ये 1996 से समता पार्टी और जदयू का, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, और लगातार नीतीश जी के साथ बिहार के विकास के लिए, नीतीश जी अलग पार्टी के नेता है,
भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, हम सहयोगी दल है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार डबल इंजन की सरकार बनाए, ये जनता से आग्रह करने जाएंगे। अगले 5 साल में आप कह रहे हैं एनडीए की सरकार दोबारा होगी, पुनः होगी, आप अपने आप को अगले 5 साल में कहां देखते हैं? मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैं तो बहुत चीजें पार्टी ने दिया है, पार्टी ने दायित्व लगातार बदला है। मैं भाजपा का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, इतना ही मेरे को पता है, इससे ज्यादा नहीं पता है। क्या मुख्यमंत्री बनने का भी सपना है सम्राट चौधरी को? देखिए, उतना बड़ा सपना सोचता भी नहीं हूं, लेकिन जिस पद पर हूं दायित्व निभाता हूं। अध्यक्ष था, अध्यक्ष का काम किया, संगठन को मजबूत किया, नेता विरोधी दल था, सरकार के बातों को उजागर करता था। आज उप मुख्यमंत्री हूं, नीतीश जी और मोदी जी ने विश्वास किया, देश में जीएसटी का इतना बड़ा काम दिया, जीएसटी के स्लैब को चेंज करने का मौका मिला, राष्ट्रीय स्तर पर हमको इतना बड़ा काम दिया कि आप सोच नहीं सकते हैं कि देश का स्लैब बदलना और बिहार या देश में रोटी, कपड़ा, मकान और किसान, इसकी चिंता करने का काम उस आयोग का चेयरमैन होकर रिपोर्ट दिया और मोदी जी की सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया। इसलिए यही मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता सफिशिएंट हूं। सम्राट जी, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या एंटी इनकम्बेंसी का डर है या फिर यकीन है फिर चलेगी मोदी की लहर? मोदी और नीतीश की लहर, फिर मैं शब्द को ठीक कर रहा हूं, यहां मोदी और नीतीश की लहर है। यहां मोदी जी का मार्गदर्शन, नीतीश कुमार का नेतृत्व, फिर से 2010 में जो 206 सीटें जीता था उससे अधिक सीटें जीतने का संकल्प के साथ जाओ। सम्राट जी कितना मानते हैं, कितने सीट जीतेगी? मैंने कहा कि 206 सीटें हमने जीता था 2010 के चुनाव में। जो जनता का भरोसा है, जनता का सारा विंडो खुला है, आप देख लीजिए। पटना से बक्सर हम जाते थे 3 घंटा में, आज जाते हैं 1.25 घंटा में। पटना से जाते थे गया जी 4 घंटा में, हम पहुंचते हैं 1.25 घंटा में। पटना से बेगूसराय हम जाते थे 4 घंटा में, हम जाते हैं 1.5 घंटा में। तो ये बदला हुआ बिहार है। बदले हुए बिहार में बिहारी बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा, इसलिए नीतीश कुमार और मोदी को ही चुनेगा। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, उठाते जाएगा मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के बारे में भी। अनेक वीडियोस वो वायरल करते हैं ऑनलाइन। तेजस्वी यादव भी जिक्र कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी जनगण मन का अपमान कर रहे हैं। खैर, स्वास्थ्य की वजह से मैं ज्यादा उस पर जाऊंगा नहीं, उन्होंने ये कह के छोड़ दिया। आप करीबी से मुख्यमंत्री के संग काम करते हैं, उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, क्या सीएम नीतीश जी फुल एंड फिट हैं? नीतीश जी सारे फैसले ले रहे हैं। हम और यहाँ सरवन जी बैठे हैं, दोनों हम लोग सरकार में मंत्री हैं। सारे फैसले 100% नीतीश कुमार लेते हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा। और बिहार के लोगों ने देखा है, अब विरोधी तो कहेगा ही ना कि ना खराब है, उनको तो बेचारे को कहने दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सेफ है और बिहार समृद्ध हो रहा है। और चुनाव परिणाम के बाद भी नीतीश कुमार ही बने रहेंगे? क्योंकि हमने महाराष्ट्र में देखा कि एकनाथ शिंदे के संग आप गए थे, मगर उसके पश्चात कोई और बन गया। आज भी नीतीश है, कल भी नीतीश होंगे, परसों भी नीतीश होंगे। अच्छा, एक सम्राट जी, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी कह रहे थे कि जो एनडीए है वो नकलची है, जो उनकी योजनाएं हैं उसको आप चुरा लेते हैं, उनकी घोषणा कर देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी उनके तर्कस में कई ऐसे तीर हैं जो कि एनडीए चारों खाने चीत हो जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि उनके सामने क्या। देखिए, बच्चे के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो बच्चा 2 चीज समझाता है, 3 चुनाव से हार रहा है। दूसरी बात, आप समझिए, तेजस्वी यादव ने जब हमारी सरकार बनी एनडीए की तो कहा कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमारे 17 एमएलए को तोड़ने का प्रयास किया, क्या हुआ? सरकार बचा ली, उनकी बची क्या? हमने बनाया। कहा कि एनडीए का जमानत जब्त होगा, हमने 78% बिहार की सीटें जीती। तेजस्वी यादव 2020 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, उसके पहले तो राबड़ी जी नेता थी,
तो ये बेचारे थे नहीं। अब दूसरा पक्ष में आता हूं, ये कहते हैं कि हमारी बातों को चुरा लिया। तो नया आइडिया बताइए। बिजली 200 यूनिट कौन सरकार दे रही थी? दूसरी सरकार। ई नकलची करके आए थे। घोषणा नहीं है, घोषणा नहीं है भाई साहब। एक घोषणा पत्र राजद वाले दिखा दे, कांग्रेस वाला दिखा दे, घोषणा नहीं है। किसी मंच से उन्होंने कहा कि राजद के कार्यालय में आइए, 2,500 रुपया महीना देंगे। यही है ना? सरकार नहीं ना थे। सरकार का दायित्व है कि पैसा देना, कानून बनाना। ये फॉर्म भरवा रहे कांग्रेस वाले, राजद वाले, और एक नया पार्टी आया है, कुकुर मुत्ते की तरह पार्टियां आती है, वो भी आया, वो भी फॉर्म भरवा रहा। आप सोचिए, फॉर्म भरवाने का अधिकार नहीं है, ये लोकतंत्र है। 30 तारीख तक इस प्रदेश में SIR का कार्यक्रम चल रहा है। उस दिन वोटर लिस्ट आएगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि चुनाव कब होगा। लेकिन 30 तारीख तक हमारी सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार। नीतीश कुमार की सरकार कानून बनाती है, फॉर्म भरवाती है और पैसा देती है। आपको किसने अधिकार दिया? आप फॉर्जरी कर रहे हो। मैं तो बिहार की बहनों से आग्रह करूंगा आपके मन से कि जनवरी में यदि किसी ने घोषणा किया है तो राजद कार्यालय में आप जाइए, पिछला 9 महीने का 2,500 रुपया लेकर आइए, तब उसको वोट दीजिएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। या 10 नंबर जो लालू जी का घर है, राबड़ी जी का, उस घर पे जाइए, 2,500 रुपया घोषणा किया है, फॉर्म भरवाया है, तो पैसा देगा ना भाई। सरकार तो है नहीं, सरकार तो चुनाव के बाद आती है। चुनाव के, इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो। इसलिए लोगों की घोषणा नहीं है, पहला बात तो मैं जान, किसी मंच से भाषण में कहा है, लेकिन घोषणा होता है घोषणा पत्र। अभी तो मैनिफेस्टो कमेटी का बैठ के चल रहा है, घोषणा पत्र दिखाए। घोषणा पत्र यदि राजद ने दिखाया तब मैं मान सकता हूं, घोषणा पत्र में है ही नहीं, तो ऐसे मंच से कुछ बोल सकते हैं। लालू जी का पार्टी है, थोड़े तेजस्वी का पार्टी, वो लालू जी का ना पार्टी है। लालू जी घोषणा करेंगे मान लेंगे, वो लालू जी मालिक है। ये सब तो आएगा जाएगा, पहले राबड़ी जी थी, तेजस्वी आए, फिर मिसा आ जाएगी। कल कह देंगे कि भाई तेजस्वी चलो हटो, एगो को निकाला है ना, कहा कि इसको निकाल दिया, किसको दूसरा बेटा आ जाएगा। किसको निकाल दिया? तेज प्रताप। अरे एक बेटा को निकाल दिया, कहा कि निकलो, तो इसको भी कह देंगे कि निकलो, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? बिहार की जनता लालू जी को नेता मानती है, इससे कहीं दो मत। उनके पास कुछ वोट है, लेकिन उतना ही वोट है जितना वो अच्छा से हारते हैं। आपने अभी एक नई पार्टी का जिक्र किया, ये नई पार्टी का इम्पैक्ट क्या रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं नई पार्टियां जो हैं कभी कभार सीटें ना ले जाती हैं, मगर वोट जरूर काट देती हैं। किनका वोट काटेंगे और किसके कहने पर? पिछले 30 वर्षों से मैं बिहार की राजनीति को देख रहा हूं। कुकुर मुत्ते की तरह पार्टियां आती है और जाती है। अगला 20 साल कौन रहेगा ये जानना होगा ना। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही भाजपा या कांग्रेस से गए हों, उस पार्टी में ये तक नहीं मिला, वो कहता है नया विचारधारा देंगे। अरे नया विचारधारा तो भाजपा से गए हुए लोग दे रहे हैं ना, तो भाजपा की ही क्वालिटी वहां है, या कांग्रेस से गए हुए लोग हैं। तो मेरा यह मानना है कि इस तरह की पार्टियां आती है जाती है, उससे कुछ नहीं होना है। बिहार एक तरह से पूरी तरह खड़ा है फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए। अच्छा, एक आपके साथ मैं रैपिड फायर एक सेशन करता हूं। आपकी राजनीति में सबसे बड़ी प्रेरणा किससे मिलती है? मोदी जी से, अमित शाह से, या कोई और? देखिए, पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखा, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं, कई बैठकें उनके साथ हमको करनी पड़ी। जितने चीजों को एक्सरसाइज करते हैं और एक एक चीजों को वर्क कराना चाहते हैं, प्रधानमंत्री होकर इतना समय देना, उसका रिव्यू करना, और प्रत्येक अंतिम बुधवार को सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को जोड़कर एक एक इशू को देखते हैं
और हम लोगों को जो लगता है कि भारत को श्रेष्ठ बनाने वाला व्यक्ति आ गया। आज यदि भारत श्रेष्ठ बन रहा है तो मोदी जी की कृपा है, मोदी जी का विजन है, मोदी जी आगे ले जाना चाहते हैं। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा विकास, विकास, विकास। नेताओं के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है अपनी बात रखने का जरिया या आक्रोश झेलने का खतरा क्या? देखिए, ये दोनों तरह की चीजें हैं। जनता से जुड़ने का भी है, आक्रोश उसके लिए चिंता है जिसने कोई काम नहीं किया हो। जनता के बीच में काम करेंगे और जनता को यह भी विजन रहना चाहिए कि यही काम करेगा, तब तो सोशल मीडिया पे आप ठीक हो, और नहीं तो लिमिटेड 25% वोट ठीक करने में लगना है तो करते रहिए। पिछले 20 साल से लोग वही ठीक करके खुश हैं। क्या सम्राट आज जी की एक सबसे बड़ी लोजपा की युवा सांसद आई थी यहाँ और उन्होंने कहा था कि उनके पिताजी ने एक एडवाइस उनको दिया था कि अहंकारी मत बनो राजनीति में। आपके नजरिए में बिहार में सबसे बड़े अहंकारी नेता कौन? देखिए, अहंकारी नेता तो मैंने कहा लालू जी हैं जो बीमार चल रहे हैं, क्योंकि वो भी जेल से छूटने के लिए बीमार हैं। अब जो भी रहे हम उस पर नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि नेता तो यहाँ 2-3 बड़े नेता हमारे यहाँ हैं। 2 नेता हमारे बीच से चले गए, सुशील जी और रामविलास पासवान जी। 2 बड़े नेता नीतीश जी और लालू जी हैं। दोनों की तुलना आप स्वयं समझ सकते हैं। नीतीश जी ने विकास किया, विजन दिया, बिहार को बढ़ाया, दूसरे ने अराजकता दिया। अच्छा, सम्राट जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आक्रामक बयानबाजी या जो संगठन का कौशल? नहीं, साफ साफ बोलना। मेरे को कोई इधर इफ बट नहीं आता है, सीधा सीधा बोलता हूँ, साफ साफ बोलता हूँ। 9-5 आता नहीं है। राजनीति में हूँ, कूटनीति थोड़ा कम आता है, लेकिन नीतीश जी, लालू जी दोनों से ट्रेनिंग लिया हूँ तो साफ साफ बोलता हूँ। अच्छा, सम्राट जी के अगर सीएम का प्रस्ताव आए तो क्या करेंगे, स्वीकार या इनकार? देखिए, मैंने कहा सपना ही नहीं देखता हूँ। पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जो दायित्व दिया यही काफी है। फुर्सत के पल आजकल तो मिल नहीं पा रहे होंगे आपको और ना मिलेंगे नवंबर तक, मगर जब फुर्सत के पल मिलते हैं सम्राट चौधरी को क्या पसंद है करना? नहीं, पहले के दिनों में तो हम लोग थोड़ा कुछ खेलने वेलने की चर्चा करते थे, लेकिन अब तो स्वाभाविक है, पिछले 30 वर्षों से मैं राजनीति में ही काम कर रहा हूं, तो जनता की सेवा, जनता के साथ जुड़े रहने और जनता के मुद्दे उठाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। किताब पढ़ना या गीत सुनना या फिल्में देखना पसंद है? नहीं, बहुत इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहा हूँ। फिल्म तो बहुत नहीं है कि बराबर देखता हूँ। थोड़ा जब फाइनेंस डिपार्टमेंट जब से देख रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है, ये थोड़ा चिंता करनी चाहिए। और हम आए हैं दिल्ली से, तो क्या फेवरेट फूड है आपका यहाँ का जो हम जरूर चख के जाएं? देखिए, बिहारी फूड तो लिट्टी चोखा जरूर देख के जाइए, मिथिला थाली जरूर देख के जाइए, अब मैरिन ड्राइव जरूर देख के जाइए। मैरिन ड्राइव देखिएगा तो बदला हुआ बिहार दिखेगा। यहाँ से गया जी एक बार ड्राइव पे चले जाइए और रात के 12 बजे जाइएगा, कोई आपको टच नहीं करेगा। यहाँ से 1 घंटा 5 मिनट में आप गया जी पहुँचिएगा और फिर लॉन्ग ड्राइव से 1 घंटा 5 मिनट में पटना लौट जाइएगा। यही बदला हुआ बिहार दिखेगा। अच्छा सम्राट जी, अगर एनडीए सरकार में आती है तो पहला बड़ा फैसला क्या होगा जो युवाओं को प्रभावित करेगा? देखिए, स्पष्ट है, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर नीतीश जी ने बनाया, बिजली के सेक्टर में काम किया, रोजगार के सिस्टम्स को भी लगातार नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया। वो दौर भी, क्योंकि तुलना करना पड़ता है तब हमको ज्यादा आपको क्लियरिटी होगी। लालू जी के 15 साल में 94,000 लोगों को नौकरी मिली। नीतीश जी के 15 साल जो 2005 से 20 रहा, 7,40,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। 2020 से लेकर 2025 तक 11.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली और 39 लाख लोगों को रोजगार मिला। लेकिन अब उस बिहार को बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जिस बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले। और यह तब संभव होगा जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को हम ठीक कर पाए। इसलिए कल जब पीयूष जी आए थे
तो हम लोगों ने विशेष तौर पर आग्रह किया कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमको गया जी में मिला है। बिहार लैंडलॉक स्टेट था, डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य था, और एक चीज बोलता है ना लोग कि हमको सरकार दीजिए तो हम उद्योग ला देंगे। अरे सब कुछ बिहार में था, कौन बोलता है कि नहीं था? 1990 से लेकर 2000 तक जब बिहार एक था, हम और सरवन जी तो बैठ के वोट दिए और बिहार अलग हुआ, पीड़ा में दिए। लेकिन सरदेव अटल जी का सपना था कि आदिवासी के कल्याण के लिए झारखंड बटे। 3 विधायकों ने सिर्फ विरोध किया, 525 एमएलए में 3 विधायकों ने विरोध किया और 322 ने समर्थन में वोट किया कि हमारा लोग आगे बढ़ जाए। और उस बिहार में जहां 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था और 13% रेवेन्यू यहां है, उस बिहार को समृद्ध बनाया है। लोग कहते हैं ना उद्योग, उनके पापा मम्मी के राज में सब था, टाटा यहीं था, बोकारो यहीं था, माइंस यहीं था, सब इसी बिहार में था, तब भी नहीं बढ़ रहा। उसका कारण था कि बिहार में नेता नहीं था। बिहार में कांग्रेस ने श्री बाबू के बाद, आप देख लीजिए किताबें खोलकर, इतिहास के पन्ने में एक मुख्यमंत्री 5 साल नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी बदल देती थी, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 3 दिन, ऐसे चलता था बिहार। लालू जी आए, लोगों को उम्मीद था कि गरीब का बेटा आए, उन्होंने पहले ही दिन पूरा फॉर्मूला बदल दिया। बूथ कैप्चरिंग, लूट, हलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, सारा उनके राज में हुआ। अराजकता फैला, कौन सा नरसंहार नहीं है जो उनके राज में नहीं हुआ। नीतीश जी भी शासन चला रहे हैं, नरसंहार का नाम बताइए। देखिए अराजकता। इसलिए मैं जो कहता हूं, साफ तौर पर कहता हूं कि उस दौर को याद कीजिए कि 90 से 2000 तक जब बिहार एक था तो उद्योग भी यहीं थे, तब कहां बिहार बढ़ रहा था? तब भी नहीं बढ़ रहा था। लेकिन नीतीश जी के राज को देखिए, 20 साल राज हुए, 14 साल ऐसे हैं जिस 14 साल में डबल फिगर में बिहार का जीडीपी रहा, ग्रोथ रेट रहा। यह है बढ़ता हुआ बिहार। और लालू जी के 15 साल को निकाल लीजिए, एक को बार डबल डिजिट छुआ हो तो हम बता दीजिए। यही है विकास मॉडल। यू हैव टू डिलीवर, आपको काम करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी काम के लिए जाने जाते हैं, नाम के लिए नहीं जाने जाते। अच्छा, सम्राट जी को गुस्सा क्यों आता है? आप पर आरोप लगता है कि आप गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं। नहीं, कुछ नहीं, एकदम साफ साफ बोलता हूं। अच्छा, मैंने ऐसे कहा, भाषा का प्रयोग कर देते हैं जी, एकदम साफ साफ बोलता हूं। मैं फिर बोलता हूं, बोलिए। नहीं, विरोधी आपके कह कर गए। मैं वही बोलता हूं जो सच्चाई होती है। मैंने कहा पंजीकृत अपराधी, मैंने मेरा कहा चोर शब्द, यही मैं कहता हूं और साफ साफ बोलता हूं, सीना तान के बोलता हूं। जिसको लड़ना है लड़ ले, बिहार की जनता देख रही है। वो तो बोल के गए कि विधायक तो उन्होंने बनाया, आप तो कभी चुनाव उसके बाद जीत नहीं पाए। देखिए उनको कौन, अरे बउआ तो अभी हाईवे किया है, मैंने कहा बउआ भी आया। और आपको जानना चाहिए, मैं उस परिवार से हूं जहां निर्दलीय लोग एमएलए जीत के आते रहे। लालू जी की उत्पत्ति कैसे हुई है पता है? जनता पार्टी जनसंघ के सहयोग से, भाजपा के सहयोग से एमपी बने, भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। कैसे बने? वो अपने बन गए क्या? नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनवाया और भाजपा ने सहयोग किया, इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री हुए। लेकिन बिहार की जनता नहीं जानती थी कि ये गरीब का बेटा इस तरह का लुटेरा निकलेगा। चलिए, बिहार की जनता अब तय करेगी कि अगले सरकार में कौन मुख्यमंत्री होंगे, कौन उप मुख्यमंत्री होंगे और किसकी सरकार बनेगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं सम्राट चौधरी जी। एक बार जोरदार तालियां सम्राट जी के लिए। सम्राट जी, मैं आग्रह करना चाहूंगी आप मंच पर बने रहिए। एक छोटा सा मोमेंटो हमारी ओर से। हिमांशु जी, मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। आपके
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना। यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH बहुत स्वागत है तेजस्वी जी आपका। और अब इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे राकेश जी और उदय। ओवर। नमस्कार, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इंडिया न्यूज मंच का हमारा कार्यक्रम जारी है और अब जो अगले मेहमान हमारे बीच आ चुके हैं, लोगों का बेसब्री से वो लोग इंतजार कर रहे थे इनका कि कब वो आएंगे और कब इनके बेबाक अंदाज में उनको वो संबोधित करेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तेजस्वी यादव जी का, नेता प्रतिपक्ष और उभरते हुए नेता प्रदेश के ही नहीं मगर देश के। बहुत बहुत स्वागत है तेजस्वी आपका। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन इंडिया न्यूज मंच। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इस वक्त बिहार में क्या हवा है। लगातार आपका जनसंपर्क जारी है, पटना में ही नहीं मगर प्रदेश के हर जिले में आप अनेकों बार जा चुके हैं, आगे जाएंगे भी। अब आपकी यात्रा शुरू हो रही है, आपकी सहयोगी की यात्रा भी, उसका समापन हुआ था। तो इस वक्त बिहार में किसकी हवा है और बिहार के मतदाताओं के मन में तेजस्वी क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, 20 साल से यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए की सरकार है। 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हम अपना आंकड़ा नहीं, जो नीति आयोग का जो आंकड़ा है, सबसे गरीब बिहार राज्य है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में, शिक्षा चिकित्सा में सबसे फीसदी बिहार में। बिहार में ना कोई कारखाना है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना आईटी की व्यवस्था है, ना कोई SEZ है, ना कोई डेटा सेंटर है, ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। जूट मिल, चीनी मिल बंद हैं। लोग यहाँ के परेशान हैं। 20 साल और 11 साल केंद्र में एनडीए के रहने के बावजूद भी बिहार बदलाव नहीं कर पाया। इस बार हम लोग कई बार बिहार हम लोग घूमे, मतलब पिछले बार ही अगर आप देखें तो देयर वाज अ डिफरेंस। एनडीए एंड इंडिया अलायंस का जो था वो केवल 12,000 का था, बहुत ही कम। लाइक
6-7 सीटों से सरकार बनते बनते चूक गई। इस बार लोगों में गुस्सा बहुत है, आक्रोशित है, खास तौर पे बिहार के नौजवान, और उनकी आबादी बिहार में लगभग near about 60%. I mean, you can say the youngest state of the country is Bihar. वो लोग परेशान हैं, डंडे खा रहे, पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं मिल रही, पलायन करना पड़ रहा है, डिग्री है, कोई काम नहीं है, मजदूरी करना पड़ रहा है। तो इस बार लोग जो है बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और मेरे ख्याल से 20 साल का जो कार्यकाल जो था बहुत लंबा हुआ, और 11 साल भी, और इन 11 साल में भी 2 टर्म अगर आप देखें तो एक बार एनडीए के 40 सीटों में लोकसभा के 39 सीट्स एनडीए को, इस बार 30 सीट्स, यानी हुमच करके लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास किया। लेकिन अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं, बिहार के लोग, चुनाव आता है, प्रधानमंत्री जी आते, चुनाव खत्म होता है, प्रधानमंत्री जी 5 साल नहीं आते। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतना वोट दिए, 20 साल से तुम्हारा राज्य, 11 साल से तुम्हारा केंद्र में राज, पूरा समर्थन बिहार के लोगों ने दिया, और आप फिर चुनाव में आके वोट मांग रहे हैं। आखिर आपने बिहार के लिए क्या किया, हिसाब मांग रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप लगवाइएगा फैक्ट्री गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये चलने वाला नहीं। अब लोग चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, तरक्की करे, और हम जैसे नौजवान जो है सब लोगों को गोलबंद करने में लगे हैं कि मिल करके एक नया बिहार बनाया जाए। क्योंकि जिसके पास विजन है, जिसके पास रोड मैप है, जो मुद्दे की बात करता हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने की बात करता हो, जो रियल इश्यूज, करप्शन की बात कर रहा हूँ। अपराध इतना बढ़ गया है, आज हम आने में देरी होगी, सिवान गए हुए थे, वहाँ गोली मार के हत्या कर दी गई थी। पता चला उस जिले में आज 5-6 हत्याएं और हुई। ऐसा कोई दिन बिहार में नहीं जहाँ 100 से कम हत्याएं होती हों, बलात्कार होता हो, रेप होता हो। मतलब कारोबारियों को दुकान में घुस करके गोली मारी जा रही है। तो ये स्थिति बनी हुई है। मतलब अब तो कहिए कि यहाँ जहाँ आप बैठे हैं, ये मॉडल की बगल में उन खेमका जी का घर है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको गोली मार दी गई। 4 साल पहले उनके बेटे को मार दी गई, कुछ नहीं हुआ। बगल में 500 मीटर डीएम साहब का घर है, 200 मीटर एसपी साहब का घर है, थाना भी है 100 मीटर के अंदर। हर रोड पे सीसीटीवी है, लेकिन कुछ नहीं होगा। तो अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार। जो सीएजी का लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया, 80,000 करोड़ का हिसाब किताब बिहार सरकार ने नहीं दिया, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। वो कहाँ है? एक इंजीनियर के यहाँ रेट पड़ता है, आश्चर्य की बात है, एक ही विभाग के इंजीनियर साहब के यहाँ रेट पड़ता है और 100 करोड़ रुपया मिलता है, 10 करोड़ रुपया तो जला देता है, लेकिन अब तक वारंट इशू नहीं होता। तो ये इश्यू जो है हम लोग जनता के सामने रख रहे हैं, और लोग भी परेशान हैं। तो हमको लगता है कि इस बार बिहार के लोगों ने मूड बनाया है। प्रधानमंत्री जी कहते रह गए कि चीनी का मिल चालू करेंगे, 2014 से 25 हो गया, 11 साल हो गया, अब तक वो चीनी मिल चालू नहीं हुआ। उन्होंने कहा था चालू कराएंगे, और उसी चीनी मिल की चीनी का चाय पीऊंगा मैं अगले बार। नहीं, लेकिन तेजस्वी जब था 17 महीने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो रीगा का चीनी मिल चालू हम लोगों ने कराया। 5 लाख नौकरी हमने दिलवाया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हमने करवाया, आरक्षण की सीमा हमने बढ़ाई, पहली बार जाति आधारित गणना हुआ, आईटी पॉलिसी, इंडस्ट्री आईटी पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, हम लोगों ने बनवाया। उस 17 साल में 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। और बिहार में जो कारखाने आपको दिख रहे हैं, वो रेलवे के कारखाने, लालू जी ने 3-4 रेलवे के कारखाने दिए। पिछले बार प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था एक बात, कि बिहार में रेलवे का इंजन बन रहा है, विदेश जा रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि लालू जी का लगवाया हुआ था। आज देश भर में जितनी रेलें दौड़ रही हैं, उसका पहिया बिहार में बन रहा है, ये लालू जी की देन है। 7 यूनिवर्सिटीज लालू जी ने बनवाया। आज देखिएगा
भले ही ये लोगों ने बिल्डिंग ढांचा तैयार कर दिया हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का हो या कुछ नई यूनिवर्सिटी का हो, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग पढ़ाई वही पुराने यूनिवर्सिटीज़ में करा रहे हैं और सबसे ज़्यादा इलाज भी पुराने मेडिकल कॉलेज में करा रहे हैं। ये सच्चाई है। तो लोग अब जान रहे हैं कि क्या स्थिति है और इस वजह से परिवर्तन चाह रहे हैं जैसा तेजस्वी नहीं, यहाँ चूहा काट देता तो पुल गिर जाता है। चूहा काट देता है तो बांध टूट में छेद आ जाता है। चूहा अस्पताल से मरीज का आंख लेके चला जाता है और चूहा करोड़ों लीटर शराब पी जाता है। तो यहाँ असल में राज चूहों का है। जितने चूहे हैं वही राज कर रहे हैं। तेजस्वी, आरजेडी कैंपेन चला रही है कि बदलाव का चेहरा तेजस्वी। आप क्या नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस देने जा रहे हैं जो नीतीश नहीं दे पाए अभी तक? देखिए, हमने तो अभी कई 8-9 महीने से लगातार हम बिहार की जनता को बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पेंशन बढ़ाएंगे, हम माई बहन मान योजना लाएंगे, हम 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, डोमिसाइल लागू करेंगे, हम युवा आयोग का गठन करेंगे। ये बातें हमने कही और ये सरकार वही कर रही है। जो नीतीश जी कहता था कहाँ से पैसा ला के नौकरी देगा, अपने बाप के पास से लाएगा, आज वो भी कह रहे 1 करोड़ नौकरी हम देंगे। 20 साल से क्या कर रहे थे आप? जब तेजस्वी आया तब आपको देना पड़ा 5 लाख नौकरी, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन। और बताइए, इतना कॉपी कर रहा है ये सरकार। हमने बोला 200 यूनिट तो ये 125 यूनिट बिजली फ्री करती है। पेंशन हमने बोला 1500 तो ये 1100। युवा आयोग का भी, डोमिसाइल का भी और माई बहन मान योजना का भी इन लोगों ने अब 10,000 फैसला किया कि अब लोगों को देंगे। तो 20 साल से ये कहाँ था विजन? अब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं ना कि भाई ये सरकार तो नकलची सरकार, जो तेजस्वी कह रहा है वही सरकार को करना पड़ रहा है योजनाओं का। तो हमारे पास तो हमने कहा है भाई अब रुक जाते हैं, थोड़ा नोटिफिकेशन हो जाने दो, तब जो है और हमारा क्या विजन है हर एक सेक्टर के लिए, हर एक वर्ग के लिए, कि हम क्या लोगों के लिए करेंगे। तो उसमें अभी तो हम लोगों ने बस ऐसे ही छेड़ा था, वो तो जान रहे थे लोग कॉपी करेगा। तो असली अभी वेपन में तीर और है। अभी इनको नचाने का सामान है हमारे पास। अच्छा तेजस्वी, एक महत्वपूर्ण जो नारा दिया जा रहा है एनडीए की ओर से, जंगल राज की वापसी का नारा फिर गूंज रहा है। आपके पास कोई ठोस रणनीति है जो कि इसको काट सके? जंगल राज किसको कहते हैं? हत्या हो रही है, लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रहा, कारखाने नहीं लग रहे, ये तो है जंगल राज। रिटर्न की बात क्या कर रहे हैं? जो जंगल राज देने वाले हैं वही बोल रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा। चलो ठीक है, इफ यू सेइंग कि भाई क्राइम बढ़ गया, तो हाउ यू गोना सी द डिफरेंस? यू शुड हैव अ डेटा। एनसीआरबी की डेटा क्या कहते हैं कि 2005 से लगातार अपराध जो है बढ़ा है। अब आप बताइए, मेरे घर के बाहर 4 राउंड गोलियां दागी गई, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर गोलियां चलती हैं, कुछ नहीं होता। पुलिस का एनकाउंटर हो जाता है, कुछ नहीं होता। और यहाँ के पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं ये सीजन है, अभी किसान लोग खाली बैठा है तो अपराध बढ़ता है। बताओ, मतलब ये कौन सा बेतुका बयान, तर्क? जब हमने यही सवाल पूछा बीजेपी के नेताओं से आज, तो उनका जवाब ये था कि हाँ, हम मानते हैं कि अपराध हो रहा है जो गलत है, मगर कार्रवाई भी हो रही है। पहले कार्रवाई नहीं होती थी, ये कहना था। जितने नेताओं से आपने पूछा होगा गृह राज्य मंत्री थे उसमें, अरे कोई हो, इस पटना के चौराहा पे दिन रात तो बैठे रहता था। कुछ हुआ? बता दो कुछ हुआ हो तो। कुछ नहीं हुआ आज तक। क्या इनके बच्चे पढ़ते नहीं थे? क्या उस समय वुमेन्स कॉलेज नहीं चलता था? जेडी वुमेन्स कॉलेज नहीं पढ़ाई होती थी? ये सब एक प्रोपेगेंडा है, आएंगे तो जंगल राज आ जाएंगे। आप उनसे पूछिए, जब तेजस्वी 2 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना, 17 महीने के लिए एक बार 18 महीने के लिए, तो सब लोग पटना में निकलना बंद कर दिया था क्या?
ये सब बेकार की बात है। मतलब अपना हिसाब नहीं ना। वहाँ बताओ जंगल राज 2005 में भी, 10 में भी, 15 में भी, 20 में भी, 25 में भी। अरे तुमने क्या किया ये ना बताओ। अगर तुमको लगता है पहले जंगल राज था तो ऐसी 20 साल में व्यवस्था कर देते किसी माई के लाल में दम नहीं जो जंगल राज वापस ले आए। क्यों नहीं किया? ये बेकार की बातें। और आप बताओ, मुख्यमंत्री के आवास में बैठे रहते क्रिमिनल। मुख्यमंत्री जो है क्रिमिनलों को जेल से बाहर निकालने का कानून बनवाते हैं, वो बढ़िया है। आप देखिए ना क्या स्थिति बनी हुई है। जहां AK-47 धाए 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 चलता है, ये लोग पॉलिटिकल डील करा करके आओ भैया बाहर तुमको निकलवाएंगे, तुम मेरा चुनाव में मदद करो। अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है, ऐसा आरोप है आपका। अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। हाँ देखिए, आप दोनों तेजस्वी जी आप दोनों डिप्टी CM का नाम ले रहे हैं। आप क्या वहां से अपराधी विजय नहीं है, दिन भर कोई पकड़ ही नहीं रहा उनको, विजय है, सम्राट हो गए। तो और इतिहास जो लोग, ये दोनों डिप्टी CM आपस में लड़ते थे। एक जब स्पीकर थे, एक मंत्री थे, तो मंत्री जी स्पीकर को उंगली दिखा के बोले व्याकुल मत होना। बताओ क्या संस्कार है, क्या आचरण है। एक वो बोलते आपस लो आपस लो, आपस वापस नहीं आपस। अब फिर वो मंत्री थे, जो स्पीकर थे पहले मंत्री थे, वो जो टेबल रखा रहता था विधानसभा में उसमें उछलते थे। फुटेज है, दिखा देंगे। अब देखिए, इन लोगों के बारे में कोई बात करके कोई फायदा नहीं है। इन लोगों की अपनी कोई उपलब्धि नहीं। तेजस्वी से पूछिएगा एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपने क्या काम किया, हम 20 काम गिनाएंगे। लेकिन इनके इतने साल से दो डिप्टी CM है, एक काम भी बता दे कि इन्होंने किया हो तो हम मान जाएंगे। लेकिन आज NDA के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ऐसा क्या खूबी तेजस्वी में था, उनके पास कई विभाग के मंत्री और 6 घंटा भी समय नहीं दे पाते थे अपने मंत्रालय के लिए। रात में आपने किसी को देखा मेडिकल कॉलेज में जाके छापा मारते हुए? आप तो रात रात भर काम करते थे भाई। जो डॉक्टर 700 ऐसे डॉक्टर जो 10-12 साल से ड्यूटी पे नहीं आ रहे थे, सैलरी उठा रहे थे, सरकार का खर्चा, ड्यूटी पे नहीं जाते थे, फाइलें एक एक का आता था। मतलब 10 साल पहले गायब है तो अभी आ रहा है फाइल। समझ रहे कितना देरी है। हाँ बोले भाई एक एक करके क्यों ला रहे हो, सबका समीक्षा करो। एक साथ 700 डॉक्टरों को हमने बर्खास्त किया। जो दवाएं 200 मिलती थी उसको 600 हम लोगों ने लिमिट किया। किडनी का पोस्ट ट्रांसप्लांट का पोस्ट सर्जरी जो दवा मिलना चाहिए वो हम लोगों ने फ्री कराया। हम लोगों ने साफ सफाई रंगत पोतर जो है कराया। आप अस्पताल में घुस नहीं सकते थे, जो स्थिति थी। मिशन 60 डेज हम लोगों ने चालू कराया। और ये जो लोग कह रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जब चमकी बुखार आया था तो क्रिकेट का कितना स्कोर है जरा बता दो। लोग पूछते थे क्या कोई मुकाबला है, थोड़ी ना, समय नहीं दे पाते थे। ये लोग थे कहाँ? हम लोग टूरिज्म के लिए, हम लोग तो जापान सब लोग गए कि भाई टूरिज्म बढ़े, उसके लिए हम लोगों ने टूरिज्म के लिए भी पॉलिसीज बनाई, काम किया। लेकिन हैव यू सीन आवर चीफ मिनिस्टर गोइंग एनीवेयर इन अब्रॉड एंड गेटिंग इन्वेस्टमेंट? ये तो हमारे CM इन्वेस्टर मीट में भी नहीं जाते हैं, नीति आयोग की बैठक में भी नहीं जाते हैं। सवाल तब तो नहीं बोलता कोई। और एक बार नहीं, चलो 2 बार उन्होंने अब तो राष्ट्रगान का अपमान कर दिया है। आई कैन अंडरस्टैंड कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, इस पे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग कौन है? अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री का एक बेतुका बयान आया। मतलब जो सम्राट चौधरी, उनको तो हम ही लोगों ने टिकट दे करके जिताया। आखिरी बार भी जीते तो हमारी पार्टी से, उसके बाद से जीते नहीं कभी, हारते गए। फिर बाद में भाजपा के लोगों ने MLC बनाया। ये लालू जी के ही लोग प्रोडक्ट हैं। इनके पापा को भी, उनकी माता को भी, इनको भी।
अब गाली देना चाहे तो दे सकते हैं। हाँ, तो आपके बारे में जो शब्दों का लेकिन इस्तेमाल जो करते हैं, बयान आप सोचो ना, इनके लिए देश में भी कुछ होता है तो विपक्ष जिम्मेदार होती है, नेपाल में भी कुछ हो रहा है तो हम ही लोग जिम्मेदार हैं। क्या मतलब है भाई? ये अभी जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी की स्तर जो क्या है, आपके ऊपर क्या बयान आए हैं, आपके पत्नी पर भी क्या बयान आए हैं, मगर उस तरफ से भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी के माँ को भी गालियां दी गई हैं आपके मंच से और कोई ठोस किसी ने व्यक्त नहीं किया। तो क्या आपको लगता है ये गलत स्तर अब जा रहा है? हमने पहले भी कहा, कई बार कहा, कोई भी अगर ऐसा कहा हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। माँ माँ होती है और माँ शब्द सुनते ही बहुत सुकून मिलता है। सबकी माँ होती है, जो जानवर होते हैं उनकी भी माँ होती है। तो आप समझिए, अगर कोई माँ पे टिप्पणी करे तो हम लोग इसको एंटरटेन नहीं करते, इसका कठोर विरोध हम लोग करते हैं। लेकिन ना तो तेजस्वी ने गाली दी, ना राहुल जी ने गाली दिया, ना हम लोग उस मंच पे गए, पहली बात। बाद में जो भी बोला होगा वो जेल में है, उस पर कार्रवाई हुई और पता चला कि वो बीजेपी में भी रहा है और जेडीयू में भी रहा है, जो सच्चाई है, जो बात बाहर से निकल के आई। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी भी, देश के प्रधानमंत्री, एक गरिमा का पद है, जब नीतीश कुमार जी को डीएनए की बातें में बोल रहे थे तो कैसा लगा होगा नीतीश जी को या बिहार के लोगों को? जर्सी का हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, या मेरे को विधानसभा में बीजेपी का एक एमएलए जनक सिंह माँ बहन की गाली दे रहा था, तो बीजेपी के लोगों ने क्यों नहीं करवाई? वही प्रसन्ना, जो क्या नाम है आपका बैंगलोर वाला, प्रज्वल रवन्ना, 3000 महिलाओं के साथ शोषण किया, तो प्रधानमंत्री जी उसके प्रचार में जाते हैं। तो माँ सबकी होती है। और आपने जो बिहार बंद कराया, जिसका डिलीवरी हो रहा था, वीडियो हम लोगों ने देखा, उसके एम्बुलेंस को भाजपा के लोगों ने रोका। एक टीचर जो थी बेचारी, उसको पकड़ पकड़ के इन लोगों ने पीटा, कई दुकानों में गुंडागर्दी हुई। तो माँ माँ नहीं होती। लेकिन बात देखिए, ठीक है, इसका कोई पक्षधर नहीं ले सकते यार, हम लोग क्यों बोलेंगे गाली? हम लोगों में वो संस्कार नहीं है कि भाई किसी को गाली दो। गाली देने से तो नुकसान ही है ना। हम लोग बेवकूफ तो है नहीं जो गाली देंगे, और ना हमारी कोई भाषा है वो। लेकिन आप देखिए ना, प्रधानमंत्री जी, ठीक है, गलवान घाटी में जवान हमारे शहीद होते हैं, आप चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलकर के ही कर रहे थे, हंस रहे थे, ठीक है, प्रोटोकॉल है, कर जाऊंगे। गाली जो भी चला वो 5 दिन पहले चला, और फिर आप देश आकर के आप रोते हो। 5 दिन बाद आप रोते कि मेरी माँ को ये बोल दिया, मेरी माँ को वो बोल दिया। तो आपने जब बोला तो आपने क्या किया? मणिपुर में जब हमारी बहनों को नंगे दौड़ाया जा रहा था, तो आपने क्यों नहीं देश बंद किया? क्यों नहीं आप वहां गए, उनको संरक्षण देने का काम किया? महिला पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ओलंपिक की मेडलिस्ट थी, जब उनकी शोषण की बात आ रही थी, तो आप उन्हीं लोग को प्रमोट कर रहे थे और बचा रहे थे जो उनका शोषण करता था। तो और लोगों की माँ बहनें नहीं है, इज्जत नहीं है। और कोई रोया? तेजस्वी तो नहीं रोया जब विधानसभा में गालियां पड़ रही थी, तो राहुल जी तो नहीं रोए जब उनको हाइब्रिड बछड़ा बोला जा रहा था। जर्सी काऊ जब सोनिया जी को बोला जाता था, वो तो नहीं रोई। नीतीश कुमार जी तो नहीं रोए जब उनको डीएनए का गाली पड़ा। तो हाँ, नीतीश जी ने बाल नाखून जरूर भिजवा दिया था। लेकिन ये ऐसे प्रधानमंत्री, इतने कमजोर प्रधानमंत्री, आप बल्कि ऑनलाइन करा करके, टीवी में टेलीकास्ट करा करके आप रो रहे हो, मेरी माँ को गाली दिया, मेरी माँ को गाली दिया। ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा।
और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने कभी नहीं देखा जो नोटबंदी में 90 साल की उम्र की मां को लाइन में खड़ा करा दे। आई विल नेवर डू इट। ना आई विल प्रमोट कि आप अपनी माँ जो 90 साल की उनको भेजो, और भी कोई घर में जवान है, भाई बहन है, भतीजा भाई है, उसको आप लगवाते। तब कहाँ गई माँ? राजनीति में आप लाइएगा, माँ के नाम से आपको वोट चाहिए, माँ के नाम से वोट चाहिए। हम लोगों के माँ बाप को भी गालियां पड़ती हैं, दिन भर भाजपा के लोग यही गाली देते हैं। अब जरा भाषण सुनिए उन लोगों का, बिहार में जो लोग नेता हैं या दिल्ली में बैठे लोग हैं, क्या क्या नहीं बोलते। तो हम भी ऑनलाइन करके रोने लगे क्या? मेरी माँ को गाली दे दिया कर। अरे देश के बारे में सोचिए, देश की स्थिति क्या हो गई है। तेजस्वी जी, आज जो है कांग्रेस के एक हैंडल से जो पोस्ट किया गया है एआई को लेकर, उसको लेकर भी मामला आगे बढ़ गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमने पहली बार पोस्ट देखा नहीं, हम दिन भर सिवान में थे, वहां से आए हैं, इसलिए आने में देरी हुई। अगर आपको लगता है कि उस पोस्ट में कोई आपत्तिजनक चीज है, अगर कुछ गलत है तो हमको दिखाया जाए, हम तो देखे नहीं है, ये बताया जाए। अच्छा, आप 16 तारीख से अधिकार यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं जहानाबाद से, उसका मकसद क्या है? क्या उसकी? देखिए, इस बार लगभग हम लोगों ने 20 से 25 जिला जो है हम राहुल गांधी जी ने कवर किया, लेकिन जो बाकी के जो जिले छूटे हुए हैं, जहां हम नहीं जा पाए हैं, वहां हम लोग प्रोग्राम बना रहे कि हम जाएं, क्योंकि बाकी के जिलाओं में भी जो लोगों की इच्छा है कि हम लोगों को वहाँ भी कार्यक्रम जो है करना चाहिए, तो इस हिसाब से जो बचे हुए हैं वो हम लोग करेंगे। मगर अभी जो जिक्र हुआ हमारे सहयोगी द्वारा कि आपकी पार्टी जो कैंपेन चला रही है कि बदलाव का चेहरा तेजस्वी, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी कह रही है कि मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव है। आज हमारे मंच पे वीआईपी के अध्यक्ष आए, उनको कोई परहेज नहीं था, उन्होंने कहा भाई हमारे मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव हैं। मगर कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों हिचकिचा जाते हैं ये कहने से? नहीं, कांग्रेस पार्टी का ये है कि भाई एक बार सब तय हो जाए, सीट शेयरिंग हो जाए, तब किया जाए। तो हमको लगता है कि ज़्यादा दिन तो अब बचे हैं नहीं। सून वी गोना अनाउंस इट कि कौन क्या होगा, कौन किस सीट पे लड़ेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, क्या हमारी रणनीति होगी। लेकिन आप बिहार में लोगों से जा जाके पूछिए, जनता से जाके पूछिए कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, वो जवाब मिल जाएगा। और मुख्यमंत्री के जहां तक सवाल होता है, तो देखिए जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है उसी का लगभग जो है वो होता है। मगर बीजेपी तो कह रही है देखो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस बार थे, मगर फिर भी हमने नीतीश जी को ही बनाया। उनकी मजबूरी है ना, हम लोगों ने भी तो बनाया था नीतीश जी को दो बार, एक बार नहीं, दो बार हम लोगों ने बनाया। अब 2 बार हो गया, अब तो नहीं होने वाला है, आगे नहीं होगा। अच्छा तेजस्वी, अब अखिलेश जी देखिए आ गए यहाँ, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अब यही जवाब देंगे, यही आज ऐलान कर देंगे शायद इस मंच से। हम ही को बोल रहे हैं, हम बोले भाई जब तय हो जाएगा तब बोल दिया जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें। बाकी जब आपको पूछना होगा पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। कब तक आपका सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो जाएगा? देखिए लगभग बातचीत शुरू है, देखिए इसमें तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है कि भाई आप क्लेम कौन सा सीट कर रहे हैं, हम क्लेम कौन सा सीट कर रहे हैं। एंड देयर इज नॉट 1 or 2 पार्टी, देयर आर 6 पार्टीज। तो आपको सबसे बात करना पड़ता है, एक संतुलन बनाना है, सामाजिक समीकरण भी देखना है। लेकिन खास बात है कि विनेबिलिटी फैक्टर जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जो पिछले बार जो हम लोग केवल 12,000 का डिफरेंस रह गया था, या 6-7 सीटें दूर रह गए थे मेजॉरिटी के, तो वो वाला गलती ना हो, उसको भी मेकअप करते हुए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ और बेटर उम्मीदवारों के साथ हम मैदान में उतरे, ये कोशिश है। और फॉर्मूला रहेगा 1 CM + 2 डिप्टी सीएम्स या 1 डिप्टी सीएम? क्योंकि मुकेश सहनी तो कह रहे हैं आपने उनको प्रॉमिस आप कर चुके हैं। कई जगह तो 4-4 भी डिप्टी सीएम है। तो वी विल सी इट।
अच्छा तेजस्वी जी, मोदी बनाम विपक्ष, क्या 2025 मेरे ख्याल बिहार से होना भी चाहिए। डिप्टी सीएम होने में कोई हर्ष नहीं है, होना नहीं। चाहिए डिप्टी सीएम। आप खुद रहे हैं? चार, हम खुद रहे हैं, ठीक रहता है। तो आप अनाउंस कर रहे हैं 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं? नहीं, हम अनाउंस नहीं कर रहे हैं। इन्होंने पूछा कि 1 होगा कि 2 होगा, हम बोले होने के लिए तो अलग अलग राज्यों में, आंध्रा वगैरह में, तेलंगाना में तो 4-4 भी थे। अब कितना होगा, दैट वी विल once we will decide, then I can only tell you. कोई परहेज नहीं है जैसे आपने? नहीं, परहेज हमको उससे नहीं। अच्छा तेजस्वी जी, मोदी बनाम विपक्ष, क्या 2025 बिहार चुनाव में भी मोदी फैक्टर हावी रहेगा या लोग इस बार राज्य के स्थानीय मुद्दे पर वोट करेंगे? देखिए, बिहार का चुनाव स्थानीय मुद्दे पे ही चुनाव होना है। यहाँ कोई घटना होती है तो मोदी जी तो आने वाले हैं नहीं, ना आते हैं। हम ही लोगों को जाना पड़ता है और हम ही लोग आवाज़ उठाते हैं। तो जो लोकल इश्यूज हैं, अब बताइए, हास्यास्पद है, बिहार फ्लड से परेशान रहता है, स्पेशली नॉर्थ बिहार। अमित शाह जी आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने बयान दिया था कि अब हमारी सरकार, मतलब 11 साल केंद्र में और 20 साल यहाँ के बाद, अब हमारी सरकार बाढ़ नियंत्रण पे काम करेगी। तो इससे पहले के आमंत्रण पे काम कर रहे थे लोग। तो लोकल इश्यूज तो है ही। अभी भी आप देखिएगा कई दियर के इलाके, पटना वटना में, या भोजपुर का इलाका या राघोपुर का इलाका जो है बाढ़ से प्रभावित है, परेशान है। और इस बार इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, जहाँ बाढ़ आता था दरभंगा या मधुबनी जैसे इलाकों में, इस बार वहाँ पानी जो है 150 फीट नीचे चली गई, सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। तो प्रधानमंत्री जी ने कोई विशेष टीम भेजा दोनों जगहों के लिए, चाहे बाढ़ के लिए हो या सुखाड़ के लिए हो। कोई मदद नहीं, एक बार भी अगर देखने भी आए होंगे स्थिति तो बता दीजिए। उनको बस वोट से मतलब है। और चुनाव, हमको नहीं लगता कि मोदी जी अपना चेहरा आगे करके चुनाव लड़ेंगे। एनडीए इस बार किसी का चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ने वाली है, ये तय। बड़ी बात आप कर रहे हैं तेजस्वी जी। हारेंगे तो कौन अपना चेहरा आगे ले जाएगा? हारना इस बार एनडीए का निश्चित है। लोग बोलते हैं ना 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब तंग आ चुके हैं। चेहरों का जिक्र कर रहे हैं आप, तो इस बार एक नए चेहरे की एंट्री हो गई है, एक नई पार्टी की एंट्री हो गई है बिहार के चुनावी मैदान में। बीजेपी का कहना है ये आरजेडी की बी टीम है, आप कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है। इस नए पार्टी के नेता प्रशांत किशोर और नई पार्टी के बारे में आपकी क्या राय? सबको शुभकामनाएं हैं। बहुत देर कर दिए लोग, बहुत पहले से आना था। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इस बार चुनाव में। हमको तो आश्चर्य लगा कि बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो तो लायक प्रधानमंत्री के हैं। खैर, कई दल चुनाव के समय बनती हैं और चुनाव के बाद जो है दुकान बंद हो जाता है। तो कुछ इसी तरह का दल है जो चुनाव के बाद बंद होने वाला है। मगर आपने अभी कहा कि मार्जिन कभी कभार बहुत करीब रह जाता है, जैसे पिछली बार रहा। ये कभी कभार चिंता हो जाती है अगर नए दल आ जाते हैं कि वोट कहीं ना कहीं कट जाते हैं किसी पार्टी के, ये चिंता है? अब कटे ना कटे, बिहार की जनता किसी भी कीमत पे ठोक करके बीजेपी को बाहर आउट करेगी, ये एक बात तय है। तेजस्वी जी, अब बीजेपी की ए टीम आए, बी टीम आए, सी टीम आए, डी टीम आए, अमित शाह जी के कहने पे बहुत पार्टियां बनती हैं, बनाए। अमित शाह जी के खास मंत्री यहाँ करके डिस्ट्रीब्यूटिंग करें, बहुत अच्छी बात है। बिहार में कुछ चलने वाला नहीं। तेजस्वी जी, बिहार में जातीय समीकरण हमेशा हावी रहता है। आपके हिसाब से 2025 में युवा और महिलाएं जाति से ऊपर वोट करेंगी क्या? एकदम 2020 में किया गया था। हम लोगों ने जातीय समीकरण को तोड़ा था, ध्वस्त किया था बेरोजगारी के मुद्दे पर। तभी तो मात्र 12,000 का ही डिफरेंस रह गया। और वो 12,000 अगर हमसे ईमानदारी से पूछिए तो उसमें भी हमारे लोगों को जबरन जो है हराया गया था। पहली बार काउंटिंग को रोका गया था 4 बजे,
रात के अंधेरे में फिर चालू किया गया था। तो उस एंड 0.1% का ही डिफरेंस था एज अ परसेंटेज अगर देखा जाए तो, यानी हम लोगों ने जाति धर्म का बैरियर जो है वो तोड़ा था। अब एसआईआर को लेकर अभी भी चिंता है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन फाइनल लिस्ट जो है वो पब्लिश करेगा, तो इसका अभी भी चिंता है, ये मुद्दा क्या अभी भी हावी रहेगा आने वाले चुनाव में भी, या अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद को लेकर के तो हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। अब तो मैंडेटरी जो है 12 डॉक्यूमेंट जो होगा वो आधार होगा, और हम लोगों का पहला डिमांड भी था कि जो 65 लाख जो वोट काटे गए हैं विथ रीजनिंग आप हमको बताइए। पहले ये इलेक्शन कमीशन छुपा रही थी, कम से कम आप जिन लोगों के पास जो 11 डॉक्यूमेंट नहीं थे अब तो वो वोटर बन सकते हैं। और जो लोगों का नाम है अगर जिंदा वाले का मार दिया गया है तो वो तो कम से कम अपने बूथ पे जाके देख सकता है और अपना नाम जुड़वा सकता है। और ये इतनी बड़ी जीत है हम लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने लड़ी सुप्रीम कोर्ट में, कि अब देश भर में किसी भी राज्य में अगर एसआईआर होता है तो आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया है। यानी आप जो गरीबों का अगर सोच सके कोई कि नाम कटवा दे तो अब नाम कटने वाला नहीं। हाँ, हालांकि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का ही काम कर रहा है, ये बात से कोई दो राय नहीं है। हमारी पैनी नज़र है, आखिर वोटर लिस्ट भी जो आएगा उसमें भी हम लोग देखेंगे। हमारे पास फरवरी में जो लिस्ट जो जारी किया गया था वो भी लिस्ट है, जो इन लोगों ने जो 65 लाख काट करके जो किया था 7 करोड़ कुछ का, वो भी है। आप सोचिए ना, फरवरी और इतने 5-6 महीने में 65 लाख वोटर्स कट गई, वो भी आंकड़े इन्हीं के थे, ये भी इन्हीं के हैं। यानी इलेक्शन कमीशन ने पहले काम ठीक नहीं किया होगा या बाद में नहीं किया होगा, यही हो सकता है। ये तो 65 लाख लोग, कितने लोगों को तो इन लोगों ने मार दिया लाखों में, लेकिन शिफ्टेड बता दिया, अनट्रेसेबल बता दिया। तेजस्वी जी, लेकिन उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन ने समय दिया था कि अगर भूल चूक करना है तो उसमें आपको समय, पर्याप्त समय है। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है तो है ही ना, और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में तो आदमी खड़ा ही कर दिया था जो मरे हुए थे, जिनका नाम मरे हुए में था, उनको जिंदा लोगों को खड़े कर दिए थे हम लोगों ने। योगेंद्र यादव जी ने किया था, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के थे वो, और हमको पता है कि कैसे लोगों को हम लोगों ने ट्रेस किया, क्योंकि उस समय तक कोई डेटा नहीं था, छुपाया गया था। आखिर में 2 रैपिड सवाल हो जाएं तेजस्वी जी। हम बिहार आए हैं दिल्ली से, तो बिहार का कौन सा डिश चख के जाएं? फेवरेट बिहारी डिश आपका क्या है? देखिए, हर एक डिश बिहार में बढ़िया है। दल पिट्ठी भी आपको अच्छा लगेगा, और दल पूड़ी, दाल पूड़ी जो होता है वो भी अच्छा होता है। लिट्टी चोखा तो है ही, वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये सब जो डिश है ये सब छुप जाता लिट्टी चोखा के आगे। तो हम जानबूझ के वही नाम बताए जो छुपे ना, कम से कम देश को पता चले। आजकल तो फुर्सत के पल बिल्कुल नहीं मिल रहे आपको, और ना मिलेंगे अब नवंबर तक, मगर जब फुर्सत के पल मिल जाते हैं। मेरे को पूरा फुर्सत है, जनता ही मालिक के बीच में रहना फुर्सत है। मैं वही कहने वाला था, फुर्सत के पल जब मिलते हैं क्या करना पसंद करते हैं आप? बेटी के साथ खेलते हैं। अब वो अलग ही, आपकी शादी हुई है यार, क्यों? हम चिराग जी को बोलते कर लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा, यू विल फील गिल्टी। हाँ, अब बिहार अगली बार आइए तो बायोडाटा तो हमको मिल ही जाएगा आपका, यहाँ लड़की वगैरह देख लेते हैं। मेरे रास्ते रहिएगा ना, हम कास्ट और रिलीजन पे नहीं गए, मेरा इंटर रिलीजन है, तो मेरे कैटेगरी चलेगा, ठीक है। आएंगे इसके बाद आपके पास। चलिए, फिलहाल के लिए शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल भी फुर्सत के पल ना मिले आपको, आपका कैंपेन बहुत अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस आपको। एक बार जोरदार तालियां। तेजस्वी जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर बने रहिए। हिमांशु जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगी, हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट, छोटा सा मोमेंटो। लगातार हमारा कवरेज सुबह से ही जारी है, और तमाम दिग्गज हमारे साथ इस मंच पर जुड़े। तेजस्वी यादव जी को आपने सुना, और अब बिहार की राजनीति के तेज तर्रार
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। नानी क्या हुआ बेटा? नानी भूख लगी है, मगर ऐसा कुछ है ही नहीं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। बस 1 मिनट। टेस्टो, the only one with non-frozen, no preservatives, premium soya chap. लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना। यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। चेहरा और एलजेपी से उभरती हुई नेता शांभवी चौधरी जी को मैं भव्य स्वागत करूंगी आपका मंच पर। तालियों के साथ एक बार जोरदार स्वागत। और शांभवी जी से खास बातचीत करने के लिए आएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी उदय जी, और वो जानने की कोशिश करेंगे, सियासी नफ्स को टटोलने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से इन मुद्दों से पार पाया जाएगा, किस तरीके से कास्ट इक्वेशन से उभर कर बाहर आया जाएगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब ओवर टू यू उदय। शुक्रिया हर्षा आपका, और मैं स्वागत करता हूं हमारे दर्शकों को जो जुड़ रहे हैं हमारे संग इस खास अगले सत्र में। हमारा दिन भर इंडिया न्यूज़ मंच का आयोजन जारी है यहाँ पटना बिहार में, और हम माइक अब दे चुके हैं हमारे अगले मेहमान को कोई भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, युवा ज़रूर हैं मगर प्रखर वक्ता हैं। सदन में आप इनको देखते ही हैं, काफ़ी सक्रिय हैं। मैं बात कर रहा हूँ एलजेपी रामविलास पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना खूबसूरत परिचय दिया। और यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आपके इंडिया न्यूज़ के तमाम दर्शक जो अभी इसको लाइव देख रहे होंगे उन सबको मेरा प्रणाम है। आपको लगता है अब तो खैर साल से ज़्यादा हो गया है कि आप सांसद बने, ये जो कहा जाता था कि अरे युवा हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट MPs हैं, यही आपका परिचय होता था हर जगह। क्या आपको लगता है अब वो थोड़ा सा टूट गया है? अब आपको लोग देख रहे हैं एज अ सीरियस नेता, दे आर जजिंग यू आपकी सक्रियता के लिए, जो सदन में देखा गया है, जो संसद के भीतर और बाहर जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उस पे अब लोग सवाल कर रहे हैं, नॉट कि आप यंग हैं और आप पहली बार आई हैं संसद में। नहीं, आई थिंक ये एक बहुत छोटा बट बहुत इम्पैक्टफुल जर्नी एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरा रहा है, जहाँ पे डेफिनेटली शुरू में लोग ये सोचते थे कि हम एक पॉलिटिकल लीनियज से आते हैं इसीलिए मेरी पॉलिटिकल एंट्री हो गई। और कहीं ना कहीं क्योंकि इसके पहले हम पब्लिक लाइफ में उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे, विच डज़ नॉट मीन कि मेरा सोशल लाइफ उतना एक्टिव नहीं था या हम जनता की सेवा में नहीं लगे थे, बट हाँ वो बहुत ज़्यादा पब्लिक में नहीं था।
एंड जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आई कि जब हम चुनाव लड़े थे तो हम सिर्फ 25 के थे, तो यंगेस्ट थे हम। फिर बिहार में सेकंड लार्जेस्ट मार्जिन से समस्तीपुर की जनता ने हमें जिता के सदन में भेजा, और फिर वहाँ से मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मतलब आई जस्ट वांटेड टू डू माय बेस्ट। हमको कुछ उसका फाइट नहीं था कि हमको अपना इमेज चेंज करना है, पर हाँ, जब आप एक ऐसे चीज़ से आइडेंटिफाई हो जाते हो कि आपको जो मिला है वो आपकी पॉलिटिकल लीनियज के वजह से मिला है, तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है ये करने की कि नहीं, हम लोग में भी वो क्षमता है, और वो क्षमता को दिखाना आई थिंक वो सबसे ज़्यादा बड़ा चीज़ था। उस जिम्मेदारी को हम और गंभीरता से आने वाले समय में निभाना चाहेंगे। अभी बहुत छोटा सफ़र तय किया, अभी बहुत लंबा सफ़र मेरा बाकी है, पर जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार मिला है, आई होप कि ये जर्नी और इम्पैक्टफुल रहे और बिहार के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। ये बस मेरा एक कह सकते हैं जो एंड गोल होता है लाइफ में, वो यही है कि बिहार बदले, बिहार अच्छा हो, यही मेरा गोल है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं हमारे सेशन के शीर्षक पर, जो अभी स्क्रीन पर चल रहा था और दोबारा चलाया जाए, कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग से किसको कष्ट। तो आपको क्या लगता है, चिराग पासवान से सबसे ज्यादा कष्ट किसको हो रहा है, किस पार्टी को, किस नेता को? आई थिंक अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की बात करें तो अभी के जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, उसमें ये ज़रूर कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव जी को कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि दोनों युवा चेहरे हैं। और अब ये चीज़ निखर कर सामने आ रहा है कि जहाँ तेजस्वी यादव जी युवाओं की बात करते हैं, वहीं पे वो युवाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं, वो नहीं आगे युवाओं को लेके आते हैं, वो उनको कार्यकर्ता के रूप में, समर्थक के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, पर जनप्रतिनिधि के रूप में उभरने नहीं देते हैं। वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, उनके दिल में ऐसी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है। जहां वो युवाओं की बात करते हैं, वो युवाओं को प्रतिनिधित्व का मौका भी देते हैं। जब वो अपनी MY समीकरण की बात करते हैं, उसमें वो महिला और युवा की बात करते हैं। और आप देख सकते हैं कि लोकसभा ही नहीं, बाकी जब संगठनात्मक काम भी हुए हैं पार्टी के, संगठन, हम सब जानते हैं कि लोकसभा में उन्होंने युवाओं को और महिलाओं को टिकट दी। अपने पार्टी में 5 जब उनको सांसद उतारने थे, उसमें से 4 उन्होंने युवा को दिए, 5 में से 2 महिला, विच इज इक्विवेलेंट टू 40%। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पालन अगर किसी ने किया तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने किया। पर जब हम लोग युवा शक्ति बोलते हैं, पर युवा नेतृत्व के लिए कोई पार्टी नहीं बात करती है, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही है जो युवा नेतृत्व की भी बात करती है। युवाओं को लुभाने के लिए आजकल रील्स भी बना रहे हैं तेजस्वी यादव, आजकल डांस भी कर रहे हैं, काफी युवाओं को अपने साथ भी लेकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं युवा इम्पैक्ट नहीं होगा इस सबसे? नहीं, देखिए, जब वो युवाओं को लेके चलते हैं, युवाओं के साथ डांस करते हैं, युवाओं के साथ मंच साझा करते हैं, तो युवा को ये आत्मसम्मान की लड़ाई में जिताया किसने? वो NDA की सरकार ने ना उनको जिताया। आज अगर युवा को बिहार में सुरक्षित महसूस हो रहा है, आज अगर युवा बिहार में आगे बढ़ रहे हैं, आज अगर युवा को लग रहा है कि हाँ, हम रात के 12 बजे मरीन ड्राइव पे डांस कर सकते हैं, तो ये आत्मसम्मान, ये शक्ति, ये सुरक्षा का भाव युवाओं को दिया किसने? ये NDA की सरकार ने दिया। और हम यही सोचते हैं कि जब तेजस्वी यादव जी युवा के साथ समय बिताते होंगे तो शायद उनको बदलते बिहार का चेहरा दिख रहा होगा। जहां पे इतने सारे युवा RJD और कांग्रेस की कार्यकाल में बिहार को छोड़ करके चले गए, आज वो सारे युवा बिहार में गर्व के साथ रहते हैं। ये बदलते बिहार की चेहरा है, और हमको लगता है कि जब वो युवाओं के साथ डांस करते तब शायद उनको ये बदलता हुआ चेहरा दिखता हो। 40% टिकट जो हैं, जैसे आप कह रहे थे कि तेजस्वी चिराग पासवान ने LJP के सांसदों के का जो कोटा उनको मिला था प्रत्याशियों का, वो महिलाओं को दे दिया, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ। आधी आबादी जो है महिलाओं की बिहार में, वो कहीं ना कहीं किस तरफ जा रही है? क्योंकि हम देखते हैं शांभवी, हमने देखा ये महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, ये 2 उदाहरण हैं मेरे अभी जहन में, और भी हो सकते हैं, जहां अचानक महिला वोटर जो है वो बिल्कुल ही एक तरफा मतदान उनने बीजेपी के लिए किया और फिर बाजी पलट गई, NDA सत्ता में आ गई, एंड कुछ विश्लेषक जो थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए। तो ये जो आधी आबादी है बिहार में,
ये कहीं ना कहीं किस तरफ जा रही है, आपको एक महिला नेत्री द्वारा क्या लग रहा है? देखिए, जब हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो एक ऐसे युवा नेता हैं जो अक्रॉस आई थिंक जेंडर बैरियर्स हो या कास्ट बैरियर्स हो या रिलीजन का बैरियर्स हो, उसको पार करके उनका जो समर्थन है वो हर जाति, हर धर्म और हर वर्ग के लोग के साथ आता है। पर जब हम आधी आबादी की बात करते हैं, और आधी आबादी किसके साथ है स्पेसिफिकली, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आधी आबादी मजबूती के साथ एनडीए के साथ ही है। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, मुझे 3 कारण दे दीजिए। हम लोग अगर शुरू से शुरू करें तो पहला क्रेडिट हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है जब हम लोग महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 2005 के बाद उन्होंने 2 बहुत एग्जेम्पलरी पॉलिसीज लॉन्च की थी। एक था साइकिल योजना और एक था पोशाक योजना। जो बच्चियां होती हैं स्कूल में, उनके एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए उसको यूज़ किया गया था। उसको कि जो बच्चियां हैं वो स्कूल जाएं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो स्कीम को लाया गया था। वो एक ऐसा स्कीम था जो बिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थानें हैं जो आज भी उस योजना के बारे में लिखती हैं। अगर हम लोग ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का बात करें, अगर ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसी ने काम किया तो वो एनडीए की सरकार ने की, जीविका दीदी के माध्यम से। आज हम सब जानते हैं कि जीविका दीदी का समूह जो है वो इतना बड़ा हो गया कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर आर्थिक स्वतंत्रता सिखाता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जहाँ पहले 2005 के पहले महिलाएं प्रताड़ित हो जाती थी अपने पति से 100 रुपए 200 रुपए मांगने के लिए, आज वही महिला इतनी सशक्त है कि उनके पति उनसे आगे कहते हैं कि 200-300 रुपए है तो हमको दे दो। तो ये बदलाव एनडीए की सरकार ने बिहार में सुनिश्चित किया। अगर हम लोग बात करें बेसिक स्किल डेवलपमेंट की, तो दीदी की रसोई एक ऐसा योजना है जिससे जो बेसिक स्किल्स होता है महिलाओं के पास, जैसे कुकिंग स्किल्स होते हैं या फिर किचन में काम करना है, वो एक इनबिल्ट स्किलिंग हो जाता है महिलाओं का। तो उसको एंटरप्राइज करना, उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाके दीदी की रसोई जैसी योजनाओं का स्थापना करना, जिससे 10,000 महिलाएं आज सशक्त हो रही हैं। अलग अलग कैंटीन्स में, गवर्नमेंट कैंटीन्स वगैरह में वो काम कर रही हैं। तो ये दिखाता है कि कितना विजनरी, एग्जेम्पलरी सोच था हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। और रिसेंट डेवलपमेंट्स, बिहार राज्य में सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया, स्वरोजगार के लिए जो महिलाएं, जो बेटियां, जो बहनें बिहार की सरकारी नौकरी नहीं कर सकती है, उनको स्वरोजगार का योजना, अभी 10,000 रुपए का स्कीम लॉन्च हुआ है, और अगर वो अच्छा कर दिए तो 2 लाख तक उनको मिल सकता है स्वरोजगार के लिए। तो डेफिनेटली सिर्फ सोशल स्किल्स ही नहीं, पर सोशल स्किल्स को कैसे हम लोग इकोनॉमिक बना सकते हैं, महिलाओं को कैसे हम लोग आर्थिक स्वतंत्रता दे सकते हैं। आज महिला निडर होके, तेजस्वी यादव जी का वीडियो आप देखे होंगे मरीन ड्राइव पे, 3-4 वहाँ पे लड़कियाँ, बच्ची, आई थिंक मेरे ही उम्र की होंगी या हमसे छोटी होंगी, वो लोग उनको बैठ के गाना सुना रही थी, गाना गा रही थी। तो ये क्या है? किसने महिलाओं को उतना सुरक्षित महसूस कराया? किसने महिलाओं को वो स्वतंत्रता दी कि रात के 12 बजे भी वो मरीन ड्राइव पे बिना हिचक के घूम सकती हैं? कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये अहम मुद्दा है महिलाओं के लिए, और इस वजह से आपको लगता है वो एनडीए के बिल्कुल, और आर्थिक स्वतंत्रता भी, जो सशक्तिकरण, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो महिलाओं का हुआ है, आपने पहले जिसका जिक्र किया। मगर विपक्ष का ये आरोप है कि आप कह रही हैं बेहतर कानून व्यवस्था है, मगर वो कहते हैं देखिए अपराध क्या हो रहा है बिहार में, पटना में भी जो वारदातें हुई हैं। नहीं, तो अगर बिहार में अपराध हो रहा है तो अपराधियों के खिलाफ वहां पे कार्रवाई भी हो रही है। एनडीए की सरकार में अपराधियों को मुख्यमंत्री आवास का संरक्षण नहीं है जो उनके कार्यकाल में था। आज अगर अपराध होते हैं तो अपराध के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी जाती है। अपराध अगर हो रहे हैं, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, कहीं पे सामाजिक अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ सब लोग खड़े होते हैं। अपराधी को कोई प्रोटेक्शन नहीं है एनडीए की सरकार में, और अपराधी को ये बात क्लियरली पता है। जब अपराध बढ़ते हैं तो उसके खिलाफ हम लोग जनशक्ति पार्टी भी अपनी आवाज उठाते हैं और उसको एड्रेस किया जाता है। अपराधी का एनकाउंटर भी होता है, अपराधी गिरफ्तार भी होता है, उस पर कार्रवाई भी होती है। तो ये डिफरेंस है। अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि इज ऑल वेल,